We have some good stuff for you. Buckle your seat belts. Can I give you one? Yeah, I'll give you two. You're working overtime. Hari-katha. Baladev, get your clothes, man. अपने कपड़े ले आके बदले। It's like Siberia in here. ऐसा लग रहा है कि वो सबसे ठंडी वाली जगह पे है। No? नहीं ऐसा? Hari-katha. Get the cartels, we want to have kirtan. You guys ready to start a revolution, man? आप लोग क्रांति करने वाले हैं क्या? Prabhu said, work hard now, samadhi later. प्रभुपाद ने कहा है अभी कड़ी मेहनत करिए, समाधि बाद में लीजिएगा। Why did the Russians get that point? रूसी लोग ये बात समझ में क्यों आ जाती है? Why do they smile every time they hear that from जब भी वो सुनते हैं ये बात वो हंसने लगते हैं। Why is that? ऐसा क्यों होता है इसके पास? Well, he's not Russian. रूसी कहीं नहीं। You're not going to understand it. कोई समझ में नहीं आएगा। You ready? तैयार हैं? Okay, I'm just checking. बस थोड़ा चेक कर रहा हूँ। Can you just get that shirt on my chair, that reddish one? To the left. Oh, Krishna. So everyone's supposed to be a guru, right? सभी लोग गुरु बनना चाहते हैं। Right? Sounds like that, like everybody be a guru. ऐसा सुनने में लगता है सभी कोई गुरु बनना They चाहते हैं। already received all the instructions. यानी कि सारे निर्देश आपने पा लिए हैं। What are you waiting for? तो फिर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? Sounds so easy. What am I, stupid? Am I thinking this is more complicated सुनने में than कितना it really is? आसान लगे। क्या मैं ही हूँ जो इतना बेवकूफ़ हूँ और समझ रहा हूँ इतना जटिल है? Where are you from, my friend? आप कहाँ से हैं? Maharaj, before I was staying in England before. England? Yeah. England, is it? Yeah, I was just explaining to Prabhuji. Half my family is in Australia, the other half Australia. in England. Yeah. So, ऑस्ट्रेलिया से बता रहे हैं। we get an Aussie in the house. All right. घर में बहुत सारे Hare Krishna. Okay, here we go. I hope I get a lot of mercy for this one. मुझे बहुत सारी कृपा मिलेगी इस बार। Gotta crack the coconuts. नारियल तोड़ना है। Shri Shri Bhuvanitai ki jai. Shri Shri Jagannath Baladev Devi Subhadra Devi ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srila Guru Govinda Swami Srila Gurudev ki jai. Samaveda Bhaktivinoda ki jai. Namo Vishnupadaya Krishna-katha Bhutale Srimate Govinda Swami Name Namo Vishnupadaya Krishna-katha
Prabhupada ki jai, Shishimad Govinda Swami Shri Gurudev ki Jai, Vishnupad Paramahamsa Parivraj ki jai. His Divine Grace Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai, Om Vishnupad Paramahamsa Parivraj ki jai, Shishimad. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Brinda ki Namacharya Srila Hari-katha Thakur ki Bamsiko Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Giradha Shri Vasudeva Shri Gaura Bhakta Brinda ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kund, Radha Kund, Giri Govardhana ki Shri Vrindavan Dham ki Shri Mayapur Navadvip Dham ki Shri Kshetra Jagannath Puri Dham ki Ganga Mai ki Jamuna Mai ki Bhakti Devi ki Tulasi Maharani ki Shri Shri Gaurnitai ki Shri Shri Krishna Balaram ki Shri Shri Jagannath Baladev Lady Subhadra Devis ki Shri Shri Radha Gopinath ki Shri Shri Radha Gopal Ju ki Shri Shri Radha Madhava ki Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki Harinam Sankirtan Yajna ki Samaveda Bhakta Vrinda ki Glory Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Shri Guru Guru. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So reading in Bhagavad Gita, 7th chapter, knowledge of the absolute. 7वां अध्याय परम सत्य का ज्ञान. Are you eager for knowledge of the absolute? क्या आप उत्सुक हैं परम सत्य का ज्ञान पाने के लिए? Do you absolutely have to know? कि आप जानना ही चाहते हैं? Or are you just curious? या फिर बस कोई जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं? And tonight we'll read text 1. और आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 1. Please repeat. कृपया दोहराइए. Shri Bhagavan Vacha. Shri Bhagavan Vacha. Mahi. Asaktamana. Parta. Yogam. Yunjan. Madashraya. Asamshayam. Samagram. Mam. Yatha. Yasyasi Tat Shrinu Shri Bhagavan Vacha Maya Sakta Manaparta Yogam Yunjan Madashraya Asamshayam Samagramam Shri Bhagavan Vacha. The Supreme Lord said. परम भगवान ने कहा. Mai. To me. मुझ में. Asaktamana. Mind attached. मन को आसक्त करके. Partha. O son of Prita. हे प्रथा पुत्र. Yogam. Self-realization. आत्म साक्षात्कार. Yunjan. Practicing. अभ्यास करके. Madashraya.
in consciousness of me, in consciousness of me, मेरी पूर्ण चेतना में, मेरे पूर्ण चेतना में, Krishna consciousness, कृष्ण consciousness, कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण भावना में, asamshayam, असंशयम, without doubt, without doubt, बिना संदेह के, बिना संदेह के, samagram, समग्रम, completely, completely, पूर्णता, पूर्णता, mam, माम, me, me, मुझ में, मुझ में, yata, यथा, how, how, कैसे, कैसे, yasyasi, यस्यसि, you can know, you can know, तुम जान सकते हो, तुम जान सकते हो, tat, तब, that, that, वो shrinu, श्रीनु, try to hear, try to hear, सुनने का प्रयास करो, सुनने का प्रयास करो, it's funny, it says shrinu, try to hear, और बहुत अच्छी बात है यहाँ बताया जा रहा है, श्रीनु का मतलब है सुनने का प्रयास but करो, in the translation, Krishna is saying, now hear from me. लेकिन अनुवाद में कृष्ण बता रहे हैं अब मुझसे सुनो। Anyway, there are many things in this we're going to discuss. तो बहुत सारी चीजें हम उन पर चर्चा Let's see करेंगे आज के रात। how awake and alert you are. चलिए देखते हैं आप कितने जगे हुए और कितने We're सतर्क going हैं। to test you afterward. और हम लोग आपको परीक्षा लेंगे So you इसमें, have to pay very close attention. बहुत ध्यान पूर्वक सबको सुनना होगा। Translation purport by Srila Prabhupada. अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का, And it's going to answer a lot of questions. और बहुत सारे प्रश्न को उत्तर Whatever दिए गए questions you have, doubts you have, are going to be answered right here. हैं। जो भी आपके प्रश्न संदेह हैं सारा का उत्तर यहाँ But you है। have to focus लेकिन आपको to ध्यान लगाना listen to होगा your answer. कि आपके उत्तर को सुनने के लिए, Otherwise, you might just miss it. वरना हो सकता है आप चूक जाएंगे। So concentrated attention, Prabhupada said. बहुत ही ध्यान पूर्वक सावधानी से सुनना होगा। Translation purport by Srila Prabhupada. अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का। The Supreme Personality of Godhead, Bhagavan, said, परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, now hear from me, अब मुझसे सुनो, O son of Pritha, हे प्रथा पुत्र, how by practicing yoga in full consciousness of me, कैसे पूर्ण चेतना में मेरे योगाभ्यास करके with your mind attached to me, और अपना मन मुझ में आसक्त करके you can know me in full, तुम मुझे पूर्णतया जान सकते हो, free from doubt. कि बिना किसी संदेह के। Purport by Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य। In the 7th chapter of Bhagavad Gita, the nature of Krishna consciousness is fully described. और इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत का पूर्णतया वर्णन किया गया है। Krishna is full in all opulences, कृष्ण अपने सारे ऐश्वर्यों में पूर्ण है, and how he manifests such opulences is described herein. और ये ऐश्वर्यों को किस तरह प्रकट करते हैं यहाँ बताया गया है। Also, 4 kinds of fortunate people who become attached to Krishna, और 4 तरह के भाग्यवान लोग जो कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करते and हैं, 4 kinds of unfortunate people और 4 तरह के दुर्भाग्य लोग who never take to Krishna consciousness are also described in this chapter. जो कभी भी कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं करते, उनका भी वर्णन इस अध्याय में किया गया In है। the first 6 chapters of Bhagavad Gita, the living entity has been described as non-material spirit soul, और भगवत गीता के पहले 6 अध्यायों में जीवात्मा को बिना कोई भौतिक पदार्थ न बताकर आध्यात्मिक पदार्थ बताया गया है, capable of elevating himself to self-realization जो योग्य है स्वयं को आत्मा साक्षात्कार प्राप्त कर पाने के लिए by different types of yogas. अलग तरह के योगाभ्यास करके। At the end of the 6th chapter, और 6ठे अध्याय के अंत में it has been clearly stated साफ साफ ये बताया गया है that the steady concentration of the mind upon Krishna, कि मन का एक निष्ठ ध्यान कृष्ण के ऊपर, or in other words, Krishna consciousness, या दूसरे शब्दों में कहें कृष्ण भावनामृत में होना, is the highest form of all yoga. ये सारे योगों में सर्वोत्तम योग है। By concentrating one's mind upon Krishna, और अपना मन कृष्ण में ध्यान केंद्रित करके one is able to know the absolute truth completely, कोई परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, but not otherwise. लेकिन अन्य किसी तरीके से नहीं। Impersonal Brahma Jyoti or localized Paramatma realization निराकार ब्रह्म ज्योति या परमात्मा का साक्षात्कार पाना is not perfect knowledge of the absolute truth because it is partial. परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये आंशिक ज्ञान है। Full and scientific knowledge, पूर्ण और वैज्ञानिक ज्ञान, Tattva Vijnanam, तत्व विज्ञान, is Krishna. वो है कृष्ण, And everything is revealed to the person in Krishna consciousness. और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है उसे सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। In complete Krishna consciousness, पूर्ण कृष्ण भावनामृत में
one knows that Krishna is ultimate knowledge beyond any doubts. वो जानता है कि कृष्ण सभी ज्ञानों में सर्वोत्तम है बिना किसी संदेह के। Different types of yoga are only stepping stones on the path of Krishna consciousness. और अलग-अलग तरह के योगाभ्यास कुछ पायदान हैं ताकि आप कृष्ण भावनामृत तक पहुंच सकें। One who takes directly to Krishna consciousness automatically knows about Brahmajyoti and Paramatma in full. और जो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वो निराकार ब्रह्म ज्योति और परमात्मा का भी पूर्ण ज्ञान पाता है। By practice of Krishna consciousness yoga, one can know everything in full. और कृष्ण भावनामृत योगाभ्यास करके कोई सभी चीजों को पूर्णता जान सकता है। Namely the absolute truth, जिसका नाम कह सके हम परम सत्य, the living entities, जीवात्मा, the material nature, ये जड़ प्रकृति and their manifestations और उसके अलग-अलग रूप with all paraphernalia. और अलग-अलग उसके प्रकट रूपों से। One should therefore begin yoga practice as directed in the last verse of the 6th chapter. और किसी को योगाभ्यास शुरू करना चाहिए जैसे छठे अध्याय के आखिरी श्लोक में बताया गया है। Concentration of the mind upon Krishna, अपना मन कृष्ण में ध्यान केंद्रित करना, the Supreme, परम भगवान, is made possible by prescribed devotional service in 9 different forms, ये तभी संभव है जब 9 भक्ति मार्ग से उसको अभ्यास किया जाए, of which Shravanam is the first and most important. जिसमें श्रवणम सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है। The Lord therefore says to Arjuna, "Touch Trinu or hear from me." इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं तत् श्रीनु, मुझसे श्रवण करो। No one can be a greater authority than Krishna, कृष्णा से बड़ा कोई अधिकारी नहीं है and therefore by hearing from him, और इसीलिए उनसे श्रवण करना one receives the greatest opportunity to become a perfectly Krishna conscious person. किसी को सबसे बड़ा मौका मिल सकता है कृष्ण भावनामृत होने का। One has therefore to learn from Krishna directly और इसीलिए किसी को सीधे सीधे कृष्ण से सीखना चाहिए or from a pure devotee of Krishna, या फिर कृष्ण के शुद्ध भक्त से, and not from a non-devotee upstart किसी नए अहंकारी भक्त से नहीं, who's just puffed up with academic education. जिसको कुछ शैक्षणिक योग्यता का अहंकार है। In the Srimad Bhagavatam, this process of understanding Krishna, the Supreme Personality of Godhead, और श्रीमद् भागवतम में कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान को समझने की विधि बताई गई, who is the absolute truth, जो परम सत्य है, is described in the 2nd chapter of the 1st canto as follows. दूसरे अध्याय के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में इस तरीके से उनका वर्णन है। Smritam Swakatha Krishna Punya Shravana Kirtana Ridanta Stohya Bhadrani Vidunoti Suritsatam Nashta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavata Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki Tada Rajastamo Bhava Kama Loba Dayaschaye Cheta Eta Anavidham Stitam Sattve Prasidati Evam Prasana Manaso Bhagavat Bhakti Yogata Bhagavat Tattva Vijnanam Mukta Sangasya Jayate Vidyante Hridhaya Grantish Chidyante Sarva Samshaya Shiyante Chasya Karmani Dishta Evat Manishvare. To hear about Krishna from the Vedic literatures, वैदिक शास्त्रों से कृष्ण के बारे में श्रवण करना, or to hear from him directly through the Bhagavad Gita, या फिर सीधे सीधे उनसे भगवत गीता श्रवण करना, is itself righteous activity. ये अपने आप में एक पुण्य कर्म है। And for one who hears about Krishna, और जो कृष्ण के बारे में श्रवण करता है, Lord Krishna, who's dwelling in everyone's heart, भगवान श्री कृष्ण जो सभी के हृदय में विराजमान है, acts as the best wishing friend, उनके शुभचिंतक मित्र के रूप में कार्य करना शुरू करते हैं and he purifies the devotee और उनके भक्त को शुद्ध करते हैं, who constantly engages in hearing of him. जो निरंतर उनके बारे में श्रवण करने में लगा रहता है। In this way, a devotee naturally develops his dormant transcendental knowledge. और इस तरीके से भक्त अपना सुप्त ज्ञान वापस सुप्त दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। As he hears more about Krishna from Srimad Bhagavatam और जैसे जैसे वो कृष्ण के बारे में और ज्यादा श्रवण करता है and from भागवतम the से pure devotees, और शुद्ध भक्त से, he becomes fixed in devotional service of the Lord. तो वो भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर होने लगता है। By development of devotional service, और इस तरह भक्ति में भाव विकसित करके one becomes freed from the modes of
Tamagun and Rajagun. कोई प्रकृति के गुण तमोगुण रजोगुण से मुक्त हो जाता है And thus these material lusts and avarice are diminished. और इस तरह से भौतिक काम क्रोध ये नष्ट हो जाते हैं When these impurities are wiped away, और जब ये अशुद्धियां साफ हो जाती हैं the candidate remains steady in his position of pure goodness, Shuddha Sattva, तो भक्त शुद्ध सत्व में स्थिर हो जाता है becomes enlivened by pure devotional service, Shuddha Bhakti, और शुद्ध भक्ति करके वो जागृत होने लगता है and understands the science of God perfectly. और भगवान के विज्ञान को पूर्ण तरीके से समझ लेता है Thus, Bhakti Yoga severs the hard knot of material affection इसलिए भक्ति योग इस भौतिक ग्रंथि के कठोर ग्रंथि को काट डालती है and enables one to come at once to the stage of asamshayam samagram. और किसी को योग्य बनाती है कि वो एक ही बार में असंशयम समग्रम के पथ पे स्थिर हो जाता है Means practically understanding the supreme absolute truth, यानी कि उसको व्यवहारिक ज्ञान हो चुका है परम सत्य का the personality of Godhead, परम पुरुषोत्तम भगवान का free from any doubt. बिना किसी संदेह के Therefore, only by hearing from Krishna इसलिए केवल कृष्णा से श्रवण करके or from his pure devotee in Krishna consciousness या उनके शुद्ध भक्त से कृष्ण भावनामृत में can one understand the science of Krishna कोई ये कृष्ण का विज्ञान समझ सकता है in tattva. तत्व में Om Vijnana Tamarandasha Garanjana Salakaya Chakshamatanjana Tasmai Shri Guru. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Again translation. अनुवाद फिर से Sweet Personality of Godhead, Bhagavan said to Arjuna, now hear from me, परम पुरुषोत्तम भगवान ने अर्जुन से कहा अब तुम मुझसे सुनो O son of Pita, हे प्रथा पुत्र how by practicing yoga in full consciousness of me, कैसे मेरी पूर्ण चेतना में योगाभ्यास करके with your mind attached to me, अपने मन को मुझ में आसक्त करके you can know me in full, तुम मुझे पूर्णता जान पाओगे free from doubt. बिना कोई संदेह के So we talked about, night before last, we were talking about what is qualification of Guru, bona fide Guru. कल के पिछली रात में हमने बात की प्रमाणिक गुरु की क्या योग्यताएं होती हैं And we were talking that Prabhupada said one who perfectly hears perfect knowledge और हमने बात की प्रभुपाद ने बताया है जो पूर्ण ज्ञान पूर्णतया श्रवण करता है from perfect source, पूर्ण स्रोत से then his knowledge is also perfect. तो उनका ज्ञान भी पूर्ण हो जाएगा So if you can perfectly hear perfect knowledge from perfect source, अगर आप पूर्णतया पूर्ण ज्ञान पूर्ण स्रोत से श्रवण कर सकते हैं by their mercy realize it, और उनकी कृपा से उसको साक्षात्कार कर पाते हैं and then express it, explain it perfectly, और उसको आप व्यक्त कर पाते हैं पूर्ण with तरीके से realization, पूरे साक्षात्कार के साथ not theoretically, मौखिक ज्ञान नहीं not adding or subtracting anything to it. ना कुछ में जोड़ना ना कुछ घटाना Srila Prabhupada said, that is my perfection. श्रील प्रभुपाद ने कहा यही मेरी सिद्धि है So it says that when one hears properly, perfect knowledge from perfect source, ऐसा कहा जाता है जब कोई पूर्ण तरीके से श्रवण करता है पूर्ण ज्ञान पूर्ण स्रोत से Shrotyam Brahmanishtam, then he's situated on path of transcendental consciousness, on the platform of the soul. दिव्य स्तर की चेतना में आत्मा के स्तर की चेतना में स्थिर हो जाता है So this is the primary qualification for one to assume the role or position of spiritual master. तो ये सबसे पहली योग्यता है जो किसी के अंदर होनी चाहिए अगर वो आध्यात्मिक गुरु के पायदान पद पे आना चाहते हैं Otherwise we're got in so many long discussion about who's authorized, who's not authorized. पर हमने इतनी लंबी चर्चा की किसको अधिकार मिला है किसको अधिकार नहीं मिला है It took 2 days to agree that yes, you must be ordered and authorized. 2 दिन हमें लग गया कि बताने के लिए कि हाँ उसको अधिकार और आदेश पाना होता है And then one party is saying everyone already got ordered and authorized to be guru. और दूसरी पार्टी कह रही थी कि सभी को पहले ही आदेश मिल चुका है अधिकार मिल चुका है गुरु बनने के लिए Therefore, everybody is a guru. इसलिए सभी गुरु हैं But I asked them, well, where are all of these people? तो फिर मैंने उनको पूछा ये सब गुरु हैं कहाँ भी And where is all of this discussion about the nature of the absolute truth or understanding all of these tattvas, especially Krishna tattva, Jiva tattva, Maya tattva, Guru tattva?
और कहाँ ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा हो रही है, विशेष करके कृष्ण तत्व, जीव तत्व, गुरु तत्व, इनके ऊपर वो बातें क्यों नहीं कर रहे? So Prabhupada said he wants everyone to become perfect. बात कहते हैं वो चाह रहे थे सभी को Everybody पूर्ण should बनाना चाहते become थे, guru. Nobody can deny that. सभी गुरु बन सकते हैं, इसका कोई अस्वीकार नहीं करता। But Prabhupada said, but when the training must be complete. लेकिन प्रभुपाद ने वहाँ ये भी बताया था कि प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए, First become qualified. पहले योग्य बनिए। So anyway, that's what brought us to this verse tonight. तो इसी तरह से आज हम ये श्लोक पर पहुँच गए हैं उसके So वजह से। Krishna, Prabhupada is saying there can be no greater authority than Krishna himself. प्रभुपाद बता रहे हैं कृष्ण से बड़ा तो कोई अधिकारी नहीं। So Krishna himself says, I am the speaker of the Vedas. तो कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही वेदों का प्रवक्ता हूँ। Vedic knowledge is meant to understand me, to come to me. सारे वैदिक ज्ञान मुझे समझने के लिए, मुझ तक पहुँचने के लिए। So it said that spiritual knowledge, absolute spiritual knowledge, it comes from the Lord himself. तो कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान स्वयं भगवान देते हैं। So he said, now hear that from me directly. अब सीधे सीधे ये मुझसे श्रवण करो। If you practice this process of Krishna consciousness, अगर तुम इस कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया का अभ्यास it's करोगे, interesting. Right? I'm going to break it down how I was reading it and see if you can follow me. बहुत दिलचस्प है। मैं तोड़ तोड़ के आप लोगों को इसको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से इसको पढ़ा और प्रयास कीजिएगा कितना समझ पाएंगे। By practicing yoga योगा अभ्यास करके in full consciousness of me. मेरी पूर्ण चेतना में। So practicing means you didn't quite get there yet. अभ्यास का मतलब आप कह सकते हैं कि अभी तक वो पूर्ण चेतना में You're नहीं है, practicing, अभी वो अभ्यास ही कर रहे हैं। but yet it's in full consciousness of me. लेकिन तब भी यहाँ बताया जा रहा है पूर्ण चेतना। So in full consciousness of me means you already realized by the execution of your practice. तो पूर्ण चेतना इसका मतलब आपने पूर्ण साक्षात्कार पा लिया है, लेकिन अपने अपना अभ्यास पूर्ण तरीके से कर लिया है इसलिए। So it's an encouragement to just keep practicing the process. तो एक तरह से उत्साहन दिया जा रहा है कि इस प्रक्रिया को अभ्यास करते रहिए। But actually it's by executing pure devotional service in full consciousness of me. लेकिन असल में बताया जा रहा है कि शुद्ध भक्ति करना उनकी पूर्ण चेतना में। Otherwise, from an aparvicha point of view, it's just practice the process. वरना अपार दृष्टिकोण से देखेंगे लग रहा है यहाँ योगाभ्यास And करना try है to hear me. और कुछ सुनने का प्रयास करो मुझे And try to come to this full consciousness of me. और धीरे धीरे इस मेरी पूर्ण चेतना में आने का प्रयास करो। But how can you be in full consciousness of Krishna with your mind completely attached to Krishna? तो कैसे आप कृष्ण की पूर्ण चेतना में कृष्ण के ऊपर पूर्ण मन आसक्त कर सकते हैं And knowing Krishna, where Krishna reveals himself in tattva, और कृष्ण को आप जान पा रहे हैं जहाँ कृष्ण आपको तत्व ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं। that means prema bhakti. इसका मतलब प्रेम भक्ति की बात हो रही है। Krishna says, only by pure devotional service, only by that prema bhakti will I reveal myself to you. कृष्ण बताते हैं केवल शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति से मैं स्वयं को आपके सामने प्रकाशित करूंगा, Which is beyond three modes of material nature, all material, gross and subtle contamination. तो जो कि प्रकृति के तीन गुणों के से परे है और भौतिक सारे कल्मशों से मुक्त है। So if one is still in the bodily concept of life, contaminated by the modes of material nature, different levels of material contamination or lust, तो अभी कोई अगर शारीरिक चेतना में है और प्रकृति के गुणों के अधीन से कल्मशों से प्रभावित है, काम से प्रभावित है, that means we're still influenced by gross and subtle material desire. इसका मतलब अभी भी उसके अंदर स्थूल या सूक्ष्म भौतिक इच्छाएं प्रभावित हो रही हैं। Therefore, Krishna says, if you come with any other desire, karma, jnana or yoga, I'll hide myself from you. इसलिए कृष्ण बताते हैं अगर आप किसी भी अन्य इच्छा कर्म ज्ञान योगा से आएंगे तो मैं अपने आप को छुपा कर रखूंगा। So only the execution of bhakti yoga means in tattva bhakti yoga, not the process of bhakti yoga. तो यहाँ पर बताया जा रहा है केवल भक्ति योग यानी कि तत्व में भक्ति योग। So really bhakti yoga means shuddha bhakti. असल में भक्ति योग का मतलब होता है शुद्ध Just like भक्ति। yoga, just like bhakta means shuddha bhakti. जैसे भक्त का मतलब होता है शुद्ध भक्त। So we have a desire to how do you become real devotee, pure devotee. हमारे अंदर इच्छा हो सकती है कैसे हम असल भक्त शुद्ध भक्त बने Practicing the process of purification और हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया का अभ्यास to करते get हैं rid of these contaminations of lust, the gross and subtle contamination. ताकि ये सारे कल्मशों से काम से और स्थूल या सूक्ष्म कल्मशों से मुक्त हो सकें। Otherwise, Krishna says your intelligence is split out. वरना कृष्ण बताएंगे तुम्हारी बुद्धि बटी रहेगी सभी So how do you do man manab bhava mad bhakto? तो
मन मना भव मत भक्तो कैसे करोगे? How do you only think of me in full Krishna consciousness unless you have pure devotion, unless you have Shuddha Bhakti? It's not possible. कैसे आप पूर्ण चेतना में मुझ में मन स्थिर कर पाओगे अगर तुम्हारे पास शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति नहीं है? And then without divine eyes and divine ears, how are you going to hear from Krishna? और बिना दिव्य नेत्र के, दिव्य कानों के कैसे आप कृष्ण को सुन पाएंगे? Doesn't Prabhupada said, without divine senses, how will you? Krishna says, I give you divine eyes, Arjuna, so you can see me. तो प्रभुपाद ने बताया कि उन्होंने कहा था कि मुझे दिव्य अर्जुन को दिव्य नेत्र मिले जिसके माध्यम से वो कृष्ण को देख पाए। So without receiving divine ears, तो बिना दिव्य कान को प्राप्त किए how are you going to hear Krishna? कैसे आप कृष्ण को सुन पाएंगे? So without divine senses, how can you see and hear Krishna? तो बिना दिव्य इंद्रियों के कैसे आप कृष्ण को देख पाएंगे और सुन पाएंगे? How can you fix your intelligence, mind and senses on Krishna in full consciousness of Krishna? कैसे मन, बुद्धि, इंद्रिय, चेतना कृष्ण के पूर्ण चेतना में रखकर With your mind attached to me, और मन को आसक्त कर पाएंगे? and you can know me in tattva, means like really, actually, factually know Krishna. और तत्व में जान पाएंगे, इसका मतलब असल में, तत्व में, सत्य में कृष्ण को जान पाएंगे। And why is that emphasized? Because it's free from doubt. और यहाँ क्यों इसको जोर दिया जा रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है बिना संदेह के आप जान जाएंगे। Means there's no mental speculation. इसका मतलब कोई मनोधर्म नहीं। That doubt comes from mental speculation, mental concoction on the modes of material nature. संदेह आते हैं मनोधर्म से, मनगढ़ंत चीजों से जो प्रकृति के गुणों के अधीन होता है। So what does it mean to know Krishna in full, free from doubt? तो यहाँ क्या अर्थ है कि कृष्ण को जानना पूर्णता बिना संदेह के? That level of consciousness, then you can hear Krishna. इस तरह की चेतना में आप कृष्ण को सुन पाएंगे। But from a parent point of view, लेकिन अपार विचार we're दृष्टिकोण से devotees, हम भक्त we're हैं, reading the Bhagavad Gita, हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, we're hearing Krishna instructing to Arjuna, हम सुन रहे हैं कृष्ण अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं, therefore we're practicing yoga. और इसलिए हम योगाभ्यास कर रहे हैं। But are we in full consciousness of Krishna? लेकिन क्या हम कृष्ण की पूर्ण चेतना में Is हैं? our mind completely attracted and attached to Krishna? क्या हमारा मन पूरी तरह से आकर्षित और आसक्त है कृष्ण Is में? Krishna revealing himself in full? क्या कृष्ण अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं पूर्ण तरीके What से? does Krishna say? Who does he reveal in full himself to in full? कृष्ण ने क्या बताया? किस व्यक्ति को वो पूर्णता प्रकाशित करते हैं? Pramanjana Charita Bhakti Vilochanena. They can see Krishna and realize Krishna always. प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन है, वो केवल कृष्ण को देख सकते हैं और सदैव देख पाते हैं कृष्ण को। Krishna never hides himself from pure devotee. कृष्ण कभी भी उनके शुद्ध भक्त से छुपते नहीं। So you can say, okay, everyone's a guru, everyone's ordered, and everyone is authorized to become guru. आप कह सकते हैं सभी गुरु हैं, सभी को आदेश अधिकार मिला है गुरु बनने का। But this is talking about tattva vijnana. लेकिन यहाँ तत्व विज्ञान की बात होती Means है, realized knowledge of the absolute truth. यानी कि परम सत्य का वैज्ञानिक ज्ञान हमको होना चाहिए। We're giving you the absolute perspective here. हम आपको यहाँ तत्व विचार दृष्टिकोण दे रहे हैं, Because you can look at it apparently and you can look at it absolutely. क्योंकि आप इसको अपार विचार दृष्टिकोण से या तत्व विचार दृष्टिकोण से देख सकते हैं। So, are we hearing from Krishna? तो क्या हम कृष्ण से सुन रहे हैं? Interesting question. बहुत दिलचस्प सवाल है। Can we hear Krishna? क्या हम कृष्ण को सुन सकते हैं? Without divine consciousness and divine senses, how can we hear Krishna? बिना दिव्य चेतना के, दिव्य इंद्रियों के कैसे हम कृष्ण को सुन सकते हैं? So what does it mean now? Hear from me. तो इसका मतलब क्या है कि अब तुम मुझसे But सुनो? Prabhupada, it's evidently they're saying try to hear. लेकिन प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि सुनने का So प्रयास is Krishna saying, with all of pure consciousness, fully attached to me, free from doubt, knowing me in full, just try to hear me? तो कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि मेरी पूर्ण चेतना में मन को मुझ में आसक्त करके बिना किसी संदेह के Or are मुझसे they सुनने का always प्रयास seeing करो, him? या फिर ऐसी Are चेतना they में कोई always है seeing him? तो सदैव कृष्ण को सुनेगा, सदैव कृष्ण को देख पाएगा। So this is tattva vichar, apar vichar consideration. तो यहाँ तत्व विचार और अपार विचार है। You can see I got a little fired up studying this. I don't know if you can pick up on that. तो मैं इसको पढ़ के बहुत उत्साहित हो गया, पता नहीं आप लोग मेरे साथ This चल is पा रहे हैं? so packed full of golden nuggets. इतने सोने मौजूद हैं इसके अंदर। So let's continue. तो इसके बारे में थोड़ा चलिए विचार करते हैं। Now it's talking about Prabhupada says end of 6th chapter. It's clearly stated प्रभुपाद बता रहे हैं छठे अध्याय के अंत में बहुत साफ तरीके से बताया गया है
that the steady concentration of your mind upon Krishna, कि अपना मन एकनिष्ठ करके कृष्ण में ध्यान लगाना, that's nishta. वो है निष्ठा। Steady, concentrated mind attracted and attached to Krishna. एकनिष्ठ मन जो कृष्ण के प्रति And in other words, आसक्त है। Krishna consciousness, दूसरे शब्दों में कहें तो कृष्ण that's भावना Krishna ये है consciousness. कृष्ण भावनामृत। What are we calling Krishna consciousness? कृष्ण भावनामृत हम किसे कह रहे हैं? We're part of the society. हम संस्था के भाग हैं, International सदस्य हैं। Society for Krishna Consciousness. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के। Manmana Baba Mat Bhakto, only think about me. केवल मेरा विचार करो। Steady concentration of your mind exclusively upon Krishna. और अपना मन एक निष्ठता से कृष्ण में स्थिर करो। In other words, Krishna दूसरे consciousness, शब्दों में कहें तो कृष्ण भावनामृत। not the process, कोई प्रक्रिया नहीं, the conclusion. निष्कर्ष। That is the highest form of all yoga. ये सारे योगों में सर्वोत्तम योग है। So bhakti yoga means prem bhakti. भक्ति योग का असल मतलब होता है प्रेम भक्ति। Connect, yoga means to connect, so you're connecting yourself in your eternal loving service and relationship with Krishna. That's Sanatan Dharma, that's a bhakti, that's Shuddha bhakti, prem bhakti. योग का अर्थ होता है कि जीवात्मा अपना संबंध कैसे कृष्ण के नित्य दास सेवा में बनाते हैं और इसको कहते हैं सनातन धर्म। Yes, we're the best yogis हम सबसे श्रेष्ठ योगी हैं because we're bhakti yogis. क्योंकि हम भक्ति योगी हैं। We're in the process to possibly become the best devotees. हम उस प्रक्रिया में हैं कि हो सकता है संभावित तरीके से हम If we शुद्ध would भक्त बन पाएंगे। cooperate, अगर हम if we would सहयोग take it करेंगे, seriously, अगर हम इसको गंभीरता से लेंगे, if we would surrender, और अगर हम शरणागत करेंगे, if we would deserve mercy and और blessing, अगर हम कृपा के लायक बनेंगे आशीर्वाद के, then impossible can become possible. तो असंभव संभव हो सकता है। So it's one thing to say, well, everyone's already ordered and instructed to become guru. तो ये एक तरीका है कहने का कि सभी को आदेश और अधिकार मिला है गुरु बनने का। But it said that tattvadarshi. लेकिन कहा गया है तत्वदर्शी। You must approach one who knows Krishna in tattva. आपको अवश्य उनके पास जाना चाहिए जो कृष्ण को तत्व में जानता हो। That means here, Krishna said, what does it in tattva mean? तो यहाँ बता रहे हैं कृष्ण तत्व का असल मतलब क्या You होता है? can know me in full, तुम पूर्णतः मुझे जान जाओगे free from any doubt. बिना किसी संदेह के। So if you have a theoretical understanding तो अगर आपके ज्ञान मौखिक on the है bodily concept of life, और शारीरिक स्तर के under क्षेत्र में three modes of material nature, प्रकृति के तीन गुणों के से प्रभावित है, not yet executed this type of yoga, bhakti yoga on Nishta platform, minimum. भक्ति योग का स्तर तक नहीं आया है जो कम से कम निष्ठा का स्तर तक। How you can know Krishna in full, free from all doubt. तो कैसे आप कृष्ण को बिना किसी संदेह के पूर्णता जान पाएंगे? So it's not just about, thinking that you're ordered and authorized. तो ये कोई बड़ा सोच लेकर नहीं आना है कि हाँ आज You हमको आदेश must मिला है, अधिकार be, मिला है। Prabhupada said, you must be qualified. पर ये भी कह रहे हैं आपको अवश्य योग्य बनना होगा। But without divine eyes and ears, by the mercy of Guru and Krishna, how can we see and hear Krishna and understand Krishna in full, free from any doubt? लेकिन बिना दिव्य नेत्र के दिव्य कानों के जो गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें मिल सकती है, हम कैसे कृष्ण को पूर्णता जान And पाएंगे? without that type of purified consciousness, how can we actually hear Krishna? और बिना उस शुद्ध चेतना में आए कैसे हम असल में कृष्ण को सुन पाएंगे? So what type of hearing are we doing? तो हम किस तरह का श्रवण कर रहे हैं? Are we hearing on the platform of the soul? क्या हम आत्मा के स्तर में श्रवण कर रहे हैं? Or are we hearing on the material platform, depending on material intelligence, mind, and senses? या फिर हम भौतिक स्तर में श्रवण कर रहे हैं अपने भौतिक मन बुद्धि इंद्रियों के ऊपर निर्भर And one is transcendental, Shuddha Sattva platform, एक दिव्य शुद्ध सत्व स्तर है and others under the modes of material nature. और दूसरा प्रकृति के गुणों के अधीन है। So Prabhupada said, first I'm trying to create perfect brahmanas. बात बता रहे थे पहले मैं पूर्ण ब्राह्मण बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। So have any of us reached like perfect brahminical platform? क्या हम में से कोई जो है पूर्ण ब्राह्मण के स्तर Even तक पहुँच the गया है? mode of goodness? यहाँ तक कि सतोगुण तक भी हम क्या पहुँच पाए? So what is the quality of our hearing if it's left with the other two, Tamma and Rajagun? तो हम किस तरह का श्रवण कर रहे हैं अगर हम केवल तमोगुण रजोगुण में ही बने हुए हैं? How much of those coverings of lust and material contamination, gross and subtle, are still there covering the senses? वो कितना कलमस है काम और क्रोध का स्थूल या सूक्ष्म रूप से जो अभी भी आत्मा को ढका So हुआ है। without purified
mind and senses, बिना शुद्ध मन और इंद्रिय के, without divine eyes, divine ears, दिव्य नेत्र, दिव्य कान के, free from all doubt, all material contamination, बिना किसी संदेह के, सारे भौतिक कल्मशों से मुक्त होकर, free from karma, jnana and yoga. कर्म ज्ञान योग से मुक्त होकर, That means pure Shuddha Bhakti. यानी कि शुद्ध भक्ति में How will Krishna reveal himself to us? कैसे कृष्ण हमें हमारे सामने स्वयं को प्रकाशित करेंगे? So how much are we surrendered? How much faith? How much bhakti do we have that we think that we can hear and see and understand Krishna? That's another question. तो हमारे अंदर कितनी शरणागति, कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति है कि कृष्ण को हम श्रवण कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं? Please excuse me, I'm just talking Bhagavad Gita. Maybe some of you are more elevated than that. मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैं केवल भगवद गीता से बात कर Maybe रहा you हूँ। आप want में to से get कुछ some लोग leelas or some ज़्यादा other उन्नत होंगे, thing. कुछ लोग कुछ लीला हो सकता सुनना चाहते हैं, कुछ अलग But चीज़ this सुनना is चाहते how हैं। to qualify ourselves. लेकिन ये तरीका है कैसे हम स्वयं To को come योग्य to बना that सकते हैं platform. कि हम उस स्तर Not तक to पहुंच artificially, sentimentally think, oh yes, I'm with Krishna, I'm in the mood of separation of Krishna. You're just artificially assuming a platform that you're not on by bypassing the actual process to qualify yourself to be able to do that. This is the difficult part. This is what they don't like, this part. तो बनावटी तरीके से स्वयं को उस स्तर में मानने का प्रयास कर रहे हैं जिस स्तर में आप नहीं हैं, और उस प्रक्रिया को त्याग करके जो असल में आपको योग्य बनाएगा, शुद्ध बनाएगा कि आप उस स्तर तक पहुंच सकें, और ये लोगों को ये बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। So without being able to completely concentrate your mind upon Krishna, तो बिना अपने मन को पूर्ण कृष्ण में स्थिर किए, Prabhupada says, by concentrating one's mind upon Krishna, one is then able to know the absolute truth completely. प्रभुपाद बता रहे हैं अगर कोई अपना मन कृष्ण में पूर्ण रूप से एक निष्ठ करता है तो वो कृष्ण को पूर्णतः जान सकता है। So without Krishna and without Krishna's pure devotees' mercy, how are we going to get this mind to be able to fully concentrate on Krishna? तो बिना कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त की कृपा के कैसे हम अपने इस मन को कृष्ण में एक निष्ठता से स्थिर कर पाएंगे? And even if you try to do that without bhakti, without prem bhakti, then how will it be possible to attract Krishna that he will reveal himself to us? और अगर हम इसको स्वयं से करने का प्रयास करें बिना प्रेम और भक्ति के, शुद्ध भक्ति के, तो कैसे हम कृष्ण को हमारी तरफ आकर्षित कर पाएंगे? So the process of hearing and chanting about Krishna is how to purify and Krishna-ize, make your mind, intelligence and senses divine or spiritual. तो ये कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया श्रवण कीर्तन के माध्यम से कैसे अपने मन इंद्रिय को शुद्ध करके कृष्ण भावना भावित बनाया जा सके, आध्यात्मिक बनाया जा So सके। we're just making a lot of assumptions here. तो हम कुछ ज्यादा ही आकलन कर रहे हैं। We're devotees, we're doing bhakti, हम भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, right? We're in Krishna conscious society, हम कृष्ण भावनामृत समाज में हैं, and we're listening to Krishna, और हम कृष्ण को सुनते हैं, right? And it's all, and we know Krishna's God. और हमको पता है कृष्ण भगवान He's है, Bhagavan, He's Supreme Personality of Godhead. Why are you making this complicated? ये परम पुरुषोत्तम भगवान है कृष्ण, आप क्यों सब चीजों को इतना जटिल So बना on रहे a हैं? parent platform, it may not seem so complicated. तो अपार विचार दृष्टिकोण से इतना जटिल देखने में नहीं लग रहा, But to practically be able to do it and realize it is a completely different level, isn't it? व्यवहारिक रूप से इसको करना या इसका साक्षात्कार करना ये अलग ही स्तर है। So no, I know the absolute truth. Krishna is Supreme Personality of Godhead, Bhagavan. मुझे पता है परम सत्य कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। But how, is it theoretical or is it practically realized? तो ये केवल मौखिक है या व्यवहारिक अनुभव किया है आपने इसका? Without Krishna, Krishna's devotees' mercy, how can it be practically realized? बिना कृष्ण कृष्ण के भक्त की कृपा के कैसे आप इसको व्यवहारिक अनुभव पाएंगे? Can we claim we have tattva vijnana, we have scientific, absolute, realization of Krishna without bhakti? क्या हम दावा कर सकते हैं कि हमारे पास तत्व विज्ञान है, परम सत्य का ज्ञान है बिना भक्ति के? That what is our understanding of Krishna? तो हम कृष्ण को किस तरीके से समझेंगे? It's theoretical, it's academic, मौखिक ज्ञान, it's कुछ शैक्षणिक sentimental, ज्ञान है, कुछ भावुकता वाला ज्ञान है, because it's still tamagun, rajagun, क्योंकि अभी भी तमोगुण maybe रजोगुण से some संबंधित है। sattvagun. हो सकता है कुछ सत्वगुण, This is Shuddha Sattva topic. क्योंकि ये शुद्ध सत्व विषय है। So we're going to take all, under the modes of material nature senses, and we're going to understand Shuddha Sattva topics. तो सारे भौतिक प्रकृति गुणों से प्रभावित इंद्रियों को हम शुद्ध सत्व की चीजों को समझने का I प्रयास saw a करें। picture of Krishna.
मैंने जानता हूँ मैं कृष्ण को, मैंने कृष्ण की Deities are तस्वीरें there, देखी, that's Krishna. भगवान के विग्रह है, मैंने वो कृष्ण है। Krishna speaking Bhagavad Gita, I'm hearing Krishna. कृष्ण भगवत गीता बोल रहे हैं और मैं कृष्ण को How do you सुन say रहा I'm हूँ। not seeing and hearing Krishna? कैसे आप कह रहे हैं कि मैं कृष्ण को देख और सुन नहीं रहा? With what senses? लेकिन किन इंद्रियों से देख रहे हैं? So is it theoretical or is it absolutely or scientifically realized? तो ये केवल मौखिक है या पूर्ण तरीके से वैज्ञानिक रूप से आपने उसका दर्शन पाया? Is it jnana or is it vijnana? ये ज्ञान है या विज्ञान है? Is it theoretical or is it practically realized? Is it scientific? ये मौखिक है या आपका जिसका व्यवहारिक ज्ञान पाया है So विज्ञान? someone has an apparent theoretical understanding, they can be guru. तो कोई अगर किसी का मौखिक समझ है, अपार विचार समझ है, तो वो गुरु बन सकता है। Shouldn't they first come to Tattva Vijnanam platform? तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए पहले उनको तत्व विज्ञान स्तर Shouldn't they में? realize Krishna in truth, in Tattva? उनको कृष्ण को तत्व में, सत्य में जानना होगा। Otherwise, what is Tattvadashi guru that you're supposed to fully surrender to? वरना वो तत्वदर्शी गुरु कौन है जिसको आपको पूर्ण शरणागत करना है? What does Tattvadashi mean? तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? One who has Tattva Vijnanam, who knows Krishna and truth. जिसके पास तत्व विज्ञान है, जो कृष्ण को तत्व में जानता है। Prabhupada says here. रूपा जी हम बता रहे हैं। Impersonal Brahma Jyoti, निराकार ब्रह्म ज्योति, localized Paramatma realization. परमात्मा का साक्षात्कार, It's not knowledge of the absolute truth. ये परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है। Did they even understand what is Brahman? तो वो ब्रह्मांड तो इसको समझ चुके Do you हैं। know the difference between the material body and the spiritual energy? Do you even know that? क्या आप अपने भौतिक शरीर और आध्यात्मिक आध्यात्मिक Or we just शक्ति walking के बीच around का thinking we are भेद these जानते हैं? bodies? या फिर हम इस तरह से घूम रहे हैं अपने आप को शरीर समझ के घूम रहे हैं? Or localized Paramatma realization? We're realizing Paramatma? या फिर हमें परमात्मा का अनुभव हो चुका है? The so-called gurus are saying, why are we not interested in the Paramatma? ये नाम मात्र गुरु ये करें हमें परमात्मा में कोई रुचि भी नहीं है। So that's obviously not knowledge of the absolute truth, तो अवश्य ये परम सत्य का ज्ञान नहीं है, because it's partial or theoretical. क्योंकि ये आंशिक और मौखिक है। Full and scientific knowledge, पूर्ण और वैज्ञानिक ज्ञान, Tattva Vijnana, तत्व विज्ञान, that is Krishna. ये है कृष्ण। And everything is revealed to that person who is in this Krishna consciousness. और उस व्यक्ति को सब कुछ प्रकाशित हो जाता है जो इस तरह कृष्ण भावनामृत में होता है। So you could say Tattva Vijnana means bhakti, prem bhakti. तो आप कह सकते हैं तत्व विज्ञान का मतलब है भक्ति, प्रेम भक्ति। Because otherwise something is not revealed. यानी इसका मतलब अगर कुछ चीजें प्रकाशित नहीं हुई अभी तक, Some partial understanding of the absolute truth is there. यानी कि कुछ आंशिक समझ है परम सत्य का आपको। In complete Krishna consciousness, one knows that Krishna is ultimate knowledge. कोई अगर तत्व विज्ञान में आता है तो वो जान पाता है कृष्ण सर्वोत्तम ज्ञान है, Beyond any doubts. बिना किसी संदेह के। So if you're a material bodily concept of life, तो अगर आप भौतिक शारीरिक under क्षेत्र में modes of material nature, प्रकृति के गुणों के अधीन है, with gross and subtle material desires, स्थूल सूक्ष्म भौतिक इच्छाओं के साथ prone, addicted to mental speculation, मनोधर्म करने की आदत लगी है influenced by mental concoction, और मनगढ़ंत चीजों से प्रभावित होते हैं, adding and subtracting, कुछ जोड़ते हैं और कुछ घटाते हैं, manufacturing and introducing, निर्माण कर रहे हैं और नई नई चीजें ला रहे हैं based on that speculation, अपने मनोधर्म के आधार पे। then how can you be beyond any doubts? तो कैसे आप संदेहों से ऊपर उठ पाएंगे? One who takes directly to Krishna consciousness automatically knows Brahmajyoti and Paramatma in full. जो सीधे सीधे कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है वो अपने आप ही ब्रह्म ज्योति और परमात्मा का साक्षात्कार पा लेता है। So does that mean one who takes to the process of purification in Krishna consciousness automatically knows Brahmajyoti and Paramatma in full? इसका मतलब जिसने कृष्ण भावनामृत में शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है उसने ब्रह्म ज्योति और परमात्मा का पूर्ण साक्षात्कार कर लिया है। We're not interested in Gyan, we're not interested in yoga. हमें ज्ञान में, हमें योग में कोई We're going right दिलचस्पी to नहीं। bhakti. हम सीधे सीधे भक्ति में जा रहे हैं। So we're taking directly to Krishna consciousness. हम सीधे सीधे कृष्ण भावनामृत अपना रहे हैं। So automatically we know and realize Brahmajyoti and Paramatma in full. तो अपने आप ही हम ब्रह्म ज्योति और परमात्मा को पूर्णतः हमने जान लिया है।
So what kind of direct path of Krishna consciousness are we practicing? तो किस तरह का कृष्ण भावनामृत का रास्ता, सीधे सीधा रास्ता हम जो अपना रहे Which is not revealing automatically full knowledge of Brahma Jyoti and Paramatma. हैं, जो अपने आप हमारे सामने प्रकाशित नहीं कर रहा है ब्रह्मांड और परमात्मा का पूर्ण ज्ञान। That's another question. ये एक और प्रश्न है। I'm leaving you with a lot of questions. आप लोगों के सामने मैं बहुत सारे प्रश्न छोड़ रहा हूँ। It's just the Bhagavad Gita. ये तो केवल भगवत गीता है। We want to hear the sandarbhas, man. हम तो संदर्भ सुनना चाहते हैं। We want some leelas. हम कुछ लीला सुनना This चाहते is the leela. हैं। ये है लीला। This is the leela how to understand the absolute truth. ये वो लीला है कैसे आप परम सत्य को What समझ is the सकते हैं। process? What is the qualification? क्या प्रक्रिया है और क्या योग्यता पानी है। Here's another interesting one. और एक और रुचिकर बात। By practice of Krishna consciousness yoga, कृष्ण भावनामृत योग अभ्यास करके one can know everything in full, कोई सभी चीजों को पूर्णता जान namely सकता the है। absolute truth. परम सत्य को In practice of Krishna consciousness yoga, कृष्ण भावनामृत योग अभ्यास करके one can know कोई जान सकता है everything in full, सभी चीजों को पूर्ण namely तरीके the से, absolute truth. जो कि परम सत्य है। So you read the Pavachara means we're practicing Krishna consciousness, so therefore we know everything in full. तो अगर आप अपार विचार दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हम कृष्ण भावनामृत अभ्यास कर रहे हैं और हम सभी चीजों को पूर्ण तरीके से जानते हैं। Krishna is God, we're devotees, right? कृष्ण भगवान है, हम भक्त हैं। It says by practice. यहाँ बताया जा रहा है So अभ्यास you're से, practicing. तो आप अभ्यास कर रहे हैं। By practicing it, one can know. अभ्यास करके कोई जान सकता है। So if you sincerely and seriously are practicing it and you get mercy from Krishna and Krishna's pure devotee, then you can know the absolute truth. अगर आप एक निष्ठता से गंभीरता से अभ्यास करें और आपको गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है तो हो सकता है आप जान पाएंगे परम It's सत्य। not, it's, I'm practicing Krishna consciousness, I'm doing bhakti yoga, so I know everything in full. ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं भक्ति योग कर रहा हूँ तो मैं सब कुछ Namely the absolute truth. Yes, Krishna is God. He's जैसे परम Bhagavan. सत्य है, कृष्ण भगवान है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान। The living entities. और जीवात्माएं, We're all eternal servants of Krishna. और हम सब कृष्ण के नित्य दास We're हैं। devotees. Everybody हम भक्त हैं। knows that. सभी जानते हैं बात को। But Prabhupada said it's not enough to say you're not the body. प्रभुपाद जी बताते हैं ये कहना पर्याप्त नहीं है कि हम शरीर हैं। You're a Atma, right? You're a soul. आप आत्मा है, Jiva, Jivatma, जीवात्मा। right? It's not enough to know that theoretically. ये मौखिक ज्ञान होना पर्याप्त नहीं। Krishna is God, we are eternal servants of God. कृष्ण भगवान है और हम सभी भगवान के नित्य दास हैं। Prabhupada says you must be in the consciousness and acting on the platform of the soul. प्रभुपाद कहते हैं आपको उस चेतना में आके और उस आत्मा के स्तर में आके कार्य करना होगा। That means Tattva Vijnana, इसका मतलब तत्व विज्ञान, Tattva Vichar, Apar Vichar. तत्व विचार, अपार विचार। So you practice, you can come to know everything if you practice properly. अगर आप सही तरीके से अभ्यास करेंगे तो हो And you सकता है get आप mercy सभी of Krishna, चीज़ों को mercy जान पाएं। of the Vaishnavas, mercy of Sadhguru Vaishnava. You can, by their mercy, get purified mind, intelligence, and senses and know the absolute truth, Tattva Vijnana. तो अगर आप कृष्ण की कृपा पाते हैं और अभ्यास करते हैं गुरु कृष्ण की कृपा, साधु गुरु वैष्णव की कृपा से, तो आप अपने मन बुद्धि इंद्रिय को शुद्ध करके सभी चीजों को तत्व में जान सकते हैं। Namely, you can understand absolute truth in Tattva और परम सत्य को तत्व में जान and the सकते living हैं entity, Jivatma. और जीवात्मा को, And you can understand the Maya Tattva, और माया तत्व को जान how सकते Maya is working, हैं। माया किस तरह से कार्य करती है, how to get out of Maya. कैसे माया से बाहर निकला जा सकता है। We're breaking it down. हम इसको तोड़कर प्रस्तुत कर रहे हैं। This is unlimitedly deep. असीमित रूप से गहरा है ये। So if everyone's guru and everyone's qualified, everyone received order and instruction, why they're not explaining all of that? अगर सभी लोग गुरु हैं, सभी को आदेश मिला है, निर्देश मिला है, अधिकार मिला है, तो ये सब बातें वो क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? When's the last time you heard class on Bhagavad Gita like that? कब आपने भगवत गीता के बारे में ऐसी कक्षा सुनी थी पहले? And we're just getting started. और हमने तभी केवल शुरुआत की है। Yeah, we're just getting started. हमने तभी केवल शुरुआत की है। Being able to concentrate your mind upon Krishna, the supreme absolute truth, is made possible
by the prescribed methods of devotional service in 9 forms. तो नवदा भक्ति के मार्ग का अभ्यास करके हो सकता है आप अपने मन को कृष्णा में पूर्णता एकनिष्ठता से स्थिर कर पाएंगे, Of which Shravanam is the first and most important. और जिसमें श्रवणम सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण। Why are you always emphasizing Shravanam? क्यों ये हमेशा श्रवणम पे जोर Why are you always देते हैं? talking about hearing? क्यों ये हमेशा श्रवण के बारे में बात करते रहते हैं? Because it's the first and most important aspect of devotional service. क्योंकि ये सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण भाग है भक्ति में सेवा। Krishna says to Arjuna, touch Trinu, hear from me. कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तज श्रीनु मुझसे सुनो। So how do we hear from Krishna? कैसे हम कृष्ण से With सुनेंगे? what senses can we hear Krishna? कौन से इंद्रियों से हम कृष्ण को सुन And what सकते हैं? what is the process to purify the material senses to get divine senses by which we can see and hear Krishna? और वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे हम अपने भौतिक इंद्रियों को शुद्ध करके आध्यात्मिक बना के कृष्ण को देख और सुन सकते हैं? That is perfect hearing. वो है पूर्ण श्रवण। If this is distraction, then you guys take turn. अगर ये भटका रहा है तो आप दोनों आपस में Alright. बांट लीजिए। This is too detailed information. ये बहुत ही गहरी You जानकारी cannot दी have जा रही है, such distraction. तो इस तरह से ध्यान So you guys take turn. तो आप दोनों बारी-बारी से ये जिम्मेदारी लीजिए। Otherwise, we're hearing baby and we're not hearing Krishna. वरना हम बच्चे को सुनेंगे, कृष्णा को नहीं सुनेंगे। No offense. बुरा नहीं मानना है। No offense to the material energy. भौतिक प्रकृति के प्रति मैं कोई अपराध नहीं करना चाहता। So perfect hearing means to hear from Krishna. तो पूर्ण श्रवण का मतलब है कृष्ण से श्रवण करना। We're already hearing Krishna. We just read the verse. We heard what Krishna said to Arjuna. हम पहले ही कृष्ण को सुन रहे हैं, हमने तो श्लोक पढ़ा है, कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं। The perfect hearing, right? हमने पूर्ण श्रवण कर लिया है। Krishna says, I'm the speaker of the Bhagavatam. कृष्ण बताते हैं मैं भागवतम का प्रवक्ता हूँ। So that vibration is non-different from Krishna. तो ये शब्द ध्वनि कृष्ण से So we आती है। hear Bhagavatam, are we directly hearing Krishna's instruction? तो क्या हम सीधे-सीधे कृष्ण के निर्देश को सुन पा रहे हैं? Is he answering all of your questions? क्या उनके सारे Is he प्रश्नों को उत्तर दे destroying रहे all हैं? of your doubts? सारे संदेहों को नष्ट कर रहे हैं? Is he purifying your mind, intelligence, and senses? क्या आपके मन बुद्धि इंद्रियों को शुद्ध कर रहे हैं? It says by hearing from Krishna, one receives the greatest opportunity to become a perfectly Krishna conscious person. कहते हैं अगर कोई कृष्ण से सुनने का सौभाग्य प्राप्त करता है तो वो सीधे-सीधे कृष्ण भावनामृत में प्रवेश कर सकता है। So it's an opportunity to become a perfectly Krishna conscious person. तो आपको एक मौका मिला है कि आप पूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं कृष्ण भावनामृत में। Without the right of hearing by receiving divine ears, divine eyes, how can we hear from Krishna? तो श्रवण का अधिकार ना पाए बिना, दिव्य कान, दिव्य नेत्र पाए बिना कैसे हम ये कृष्णा को सुन सकते हैं? Sanjay admitted in Bhagavad Gita, 18th chapter, that because I received mercy from my spiritual master, Srila Vyasadeva, he purified my mind and senses. संजय ने बताया 18वां अध्याय भगवद गीता में मेरे गुरुदेव ने अपनी कृपा से व्यासदेव ने मेरे मन और मेरे इंद्रियों को शुद्ध कर दिया। Then I could see and hear Krishna directly on battlefield of Kurukshetra. और तब मैं कृष्ण को देख पाया, सुन पाया, सीधे-सीधे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल। So if one receives Krishna's mercy and the pure devotee's mercy, you can get divine ears and eyes by which we can see and hear Krishna. तो अगर हमें कृष्णा और उनके शुद्ध भक्त की कृपा मिलती है जिसके माध्यम से हमें दिव्य कान, दिव्य नेत्र मिलेंगे जिसके माध्यम से हम कृष्ण को देख और सुन सकते हैं। Then you have the greatest opportunity now to become a perfectly Krishna conscious person तो by आपके पास their mercy. आपके पास सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आप कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो के माया से बाहर निकल सकते हैं। One has two provinces. One has therefore to learn from Krishna directly, इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं किसी को सीधे-सीधे कृष्ण से सीखना चाहिए। like Arjuna, ऐसे अर्जुन ने सीखा। or from pure devotee of Krishna, या कृष्ण के शुद्ध भक्त से, not from non-devotee upstarts, किसी अभक्त और अहंकारी व्यक्ति से, puffed up with academic education. जिसने शिक्षा के दम पे अहंकार पाया। So we read the other day, Prabhupada was saying that if you have this contamination of karma, jnana, and yoga, तो हम पिछले दिन पढ़ रहे थे, श्री प्रभुपाद बता रहे थे, अगर आपको कर्म, ज्ञान, योग के कलमश से प्रभावित है, and you're still under modes of material nature, और आप भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन हैं, then you're not really devotee. तो आप असल में भक्त नहीं हैं।
Didn't it say like that? ऐसा नहीं But कहा they're है। not really devoted. वो असल में भक्त So नहीं। really Bhakta means Shuddha Bhakta, only he's really devoted. असल में भक्त का मतलब शुद्ध भक्त, वही केवल असल में भक्त So है। unless we can be fortunate enough to hear from such तो devotees जब तक हमें ऐसा भाग्य नहीं मिलता कि हम ऐसे भक्त ने who श्रवण praise करें, to Krishna on our behalf, जो कृष्ण से प्रार्थना करें हमारे लिए, like Sanjay says, how you get special mercy to have your mind and senses purified enough to see and to hear Krishna in tattva. जैसे संजय ने बताया कैसे उनको वो शुद्ध मन और इंद्रिय मिले कि वो कृष्ण का साक्षात्कार कर पाए तत्व में। We're breaking it down, right? तोड़कर प्रस्तुत कर रहे हैं। If one sincerely and seriously wants to hear from Krishna, अगर कोई एक निष्ठता से गंभीरता से कृष्ण से श्रवण करना चाहता है, Prabhupada said, not out of curiosity, बात कहते हैं किसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, but Prabhupada calls it perfect anxiousness to hear from Krishna. पूर्ण व्याकुलता कृष्ण से श्रवण करने की। So, okay, you're sitting, you might even be inquisitive, right? So you get some benefit just by hearing about Krishna. तो आप बैठे हैं, आप कृष्ण के प्रति को जानने की जिज्ञासा है, तो आपको कुछ लाभ मिलेगा वहाँ पर। So there's no loss, तो कोई नुकसान नहीं है, right? There's no loss. Everyone gets some mercy. कुछ कृपा मिलेगी। But Prabhupada said, but if you hear very intensely, attentively, लेकिन प्रभु बताते हैं अगर आप बहुत तीव्रता से, बहुत सावधानी and you're से perfectly anxious to know and to hear from और Krishna, आप पूर्ण रूप से व्याकुल हैं कृष्ण से श्रवण करने के लिए, उनसे सीखने के लिए, then your advancement is much faster. तो आपकी प्रगति बहुत तेजी से होगी। If one is hearing like that, perfect anxiety or anxiousness to hear from Krishna, to get Krishna, अगर कोई इस तरह श्रवण करता है पूर्ण व्याकुलता के साथ कि कृष्ण को पाना चाहता है, then Krishna, who's dwelling in everyone's heart, he'll know it. और कृष्ण जो सभी के हृदय में मौजूद है, वो इस Then बात he को acts जानता as है, the best wishing friend of that person, तब वो उस व्यक्ति के सबसे शुभचिंतक and he मित्र के shows रूप में कार्य special करते हैं। mercy on them and purifies that devotee और उस भक्त को विशेष कृपा देकर उस भक्त को शुद्ध करते हैं, who is constantly and seriously engaging in hearing and chanting about him. जो निरंतर नित्य श्रवण कीर्तन करने में लगा है गंभीरता So से। Prabhupada said it must be proper and it must be sufficient. बात कहते हैं अवश्य पूर्ण होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए और सही होना So चाहिए। are we properly and sufficiently doing Shravanam? तो क्या हम पर्याप्त और सही तरीके से And श्रवण कर Prabhupada पाएं? says unless you properly and sufficiently do Shravanam, you can't do any of the other ninefold processes of bhakti. प्रभुपाद बताते हैं अगर आप पर्याप्त और सही श्रवण नहीं करेंगे तो भक्ति के किसी भी अन्य कार्य को आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, Because our consciousness will not be pure. कि हमारी चेतना शुद्ध नहीं हो Our पाएगी, faith will not be strong enough. हमारी श्रद्धा इतनी मजबूत नहीं Our होगी, knowledge and understanding of how to execute that devotional service will remain hidden. हमारा ज्ञान कि कैसे हम उस भक्ति में सेवा को सही तरीके से कर पाते हैं हमसे छुपा रहेगा। So by going on, hearing, chanting, trying to get mercy of Krishna, Krishna's representative, bona fide guru, pure devotee, तो इस तरह से श्रवण कीर्तन में लगे रहने की वजह से कृष्णा और उनके शुद्ध भक्ति कृपा पाकर as he hears more and more about Krishna from the Bhagavatam, from the pure devotees, और जैसे जैसे कृष्ण के बारे में और ज्यादा श्रवण करता है भागवतम और उनके भक्तों से, he becomes free, gradually purified and free from the modes of passion and ignorance, tamagun, rajagun, वो धीरे धीरे प्रकृति के गुणों से, तमोगुण रजोगुण से मुक्त होने लगता है, and all his material lusts, gross and subtle material desires become destroyed, और ये सारा स्थूल या सूक्ष्म भौतिक काम की इच्छाएं गायब होने लगती है, this anatta nivritti. अनर्थ निवृत्ति होने लगती है। Then one becomes fixed in devotional service of the Lord. That's a nishta. और तब कोई भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है, यानी कि निष्ठा होना चाहता है। We must understand it scientifically. हमें बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इसको समझने की जरूरत है। One becomes fixed in devotional service of the Lord. कोई भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाता है। So what are we calling devotional service if we're not fixed? तो हम भक्ति किसे कह रहे हैं अगर हम स्थिर नहीं है उसमें? Is that really devotional service? क्या असल में भक्ति है? So Brahmabhuta prasanatma nasochati nakanshati, right? It says when you're freed from all gross and subtle material desires, you're fixed in devotional service. That's where pure devotional service, Shuddha
bhakti starts. जब आप स्थूल या सूक्ष्म भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि निष्ठा के स्तर में आ जाते हैं, तब वहाँ से शुद्ध भक्ति का बीज दिया और शुद्ध भक्ति शुरू होती है। So if we say, no, I'm very much a sincere, serious devotee, I'm fully surrendered, and I'm fixed in my determination to practice Krishna consciousness, so therefore I'm already doing pure devotional service. कहते हैं कि हम स्थिर हो चुके हैं भगवान की भक्ति में, सेवा में हम बहुत गंभीर है, एक निष्ठ भक्त हैं और हम पहले से ही निष्ठा के स्तर में आ चुके हैं। Apparently, बाहर से। but can we see and understand all the gross and subtle attractions, attachments, and contamination that is there if we have pride and arrogance and sentimentality? Can we see and understand all of this type of contamination? तो क्या हम उस सारे कलमशों को देख पा रहे हैं जो स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से कई बार हमें आकर्षित करती रहती है और हम प्रकृति के गुणों के अधीन प्रभावित हो रहे हैं? Yeah, when I look inside, when I'm a devotee, I'm sincere, I'm fully surrendered. जो मैं अपने आप को Otherwise, देखता what हूँ, am I doing here? मैं अपने आप को भक्त देख पाता हूँ, मैं एक निष्ठ हूँ, मैं एक गंभीर हूँ, मैं शरणागत करने का I'm प्रयास कर fixed रहा in हूँ, मैं कर क्या devotional रहा हूँ? service. मैं भक्ति में सेवा में स्थिर हो चुका I हूँ। do something every day for Krishna. मैं हर दिन कुछ न कुछ कृष्णा के लिए करता हूँ। Is that our definition of fixed in devotional service? क्या वो हमारी परिभाषा है भक्ति में स्थिर होने का? Okay, something is better than nothing. That's not what we're talking about here. ठीक है, कुछ कर रहे हैं वो कुछ नहीं से बेहतर है, लेकिन यहाँ उसके बारे में बात नहीं हो रही। Krishna is talking about absolute platform, कृष्णा यहाँ fixed. पे तत्व विचार में बात कर रहे हैं। स्थिर Only होना। thinking about me in Mama na baba mad bhakto. That means a Shuddha bhakti. That means a prem bhakti. केवल मेरे बारे में विचार करना, मन मना भाव, यानी कि शुद्ध भक्ति। Otherwise, who can do it? वरना कौन इसको कर सकता है? Free from all doubts. बिना किसी संदेह Are के। all of your doubts gone and destroyed? क्या आपके सारे संदेह नष्ट हो चुके No हैं? doubts. जा चुके हैं? कोई संदेह बाकी Do we नहीं have है? unflinching faith in Guru Sadhu and Shastra? क्या आपकी अटूट श्रद्धा है गुरु साधु शास्त्र में? How's this for qualification to be Guru? ये कैसे रहा गुरु की योग्यता के लिए? Right? So without coming off of gross, subtle material contamination bodily platform, you cannot have unflinching faith in Krishna, Guru, Sadhu or Shastra. तो बिना स्थूल या सूक्ष्म कलमशों से शुद्ध हुए बिना, मुक्त हुए बिना आप अटूट श्रद्धा नहीं ला सकते हैं गुरु साधु शास्त्र और कृष्ण। Because Maya is still whispering. क्योंकि माया अभी भी फुसफुसा रही We're है। still depending on the mind. अभी भी हम मन के ऊपर निर्भर होते हैं, भौतिक मन के We're बातों पे निर्भर listening. होते हैं, We're उसको addicted सुनते to रहते mental हैं। speculation. मनोधर्म करने की बुरी आदत लगी रहती है। And because we're tuned in, Maya knows, oh, they're waiting for something. और क्योंकि हम सुनने में लगे रहते हैं तो माया जानती है कि कुछ And सुनने then का she इंतजार just कर रहा है। concocts, she's just throwing bombs there. You और see? फिर वो कुछ मनगढ़ंत चीजें बनाती है, वहाँ बम फाड़। You're listening for her. क्योंकि आप उनको सुन रहे हैं। Okay, so then that's where the mental concoctions come तो from. वहाँ से मनगढ़ंत चीजें आनी शुरू होती हैं। So if we are still addicted on bodily platform, on mental platform, sentimental platform, influenced by the bombs of mental concoction, अगर अभी भी हम शरीर के स्तर पे हैं, मानसिक स्तर पे, भावुकता के स्तर पे हैं, और अभी भी भावुकता के स्तर पे माया जो है हमें हमारे अंदर बम फेंक रही है, which creates all of the doubts. और जो हमारे अंदर सारे संदेह Why does बनाए Swami हैं। say that one who has a bona fide spiritual master, he's supposed to know everything? प्रभुपाद ने ऐसा क्यों कहा है? जिसके पास प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु होते हैं उन्हें सारा ज्ञान होना चाहिए। So if these gurus are real disciple of bona fide spiritual master, they're supposed to know everything. तो अगर ये सारे गुरु जो प्रमाणिक शिष्य हैं, प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के, तो उनको सारा ज्ञान होना चाहिए। Now it's very interesting. They say that we are the supreme authority, right? और ये बहुत दिलचस्प बात है, सभी कहते हैं हम परम अधिकारी हैं, The ultimate authority. हम सारे परम अधिकारी हैं। So one devotee was telling that, and it's written also, you can read it in the different remembrance books of Srila Prabhupada. और आप भी पढ़ सकते हैं, श्री प्रभुपाद की बहुत सारी स्मृतियों में लिखा गया है। So they were explaining that they would have GBC meetings here. और उनके जो है GBC मीटिंग होते थे। And then every day they would come to Srila Prabhupada and then they would say, you know, what they agreed on. और हर दिन वो श्री प्रभुपाद से आके मुलाकात करते थे, उनको बताने के लिए कि हमने क्या चीजों पे सहमति जताई है। And then Prabhupada said that, you know, what you're spending 5 days on discussing, if you had any competence at all, you could figure that out in 30 minutes. प्रभुपाद बताते थे जिन विषयों पे आप 5 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, अगर आपके पास थोड़ा भी आत्मविश्वास होता तो आप लोग 30 मिनट में सारी चीजों को सुलझा लेते। And then Prabhupada said, okay, let me see, you meet for 5 days, then come to me. Let's see what are your resolutions. और फिर प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, अब आइए 5 दिनों के बाद, उसके बाद मुझे दिखाइए आप किस चीजों पे सहमत हुए। So the ultimate managing authority comes with the resolutions to Prabhupada. And Prabhupada, here's the first one. He said,
completely reject that. और सबसे सर्वोत्तम व्यवस्थापक अधिकारी जो हैं वो कुछ 5 दिनों के बाद कुछ सहमति जता के आते हैं प्रभुपाद Then के what's पास। the next one? Then they read that and said, that's not at all what you should do. और प्रभुपाद को पहली चीज सुना कर कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं ये बिल्कुल अस्वीकार किया जाता है। And literally every single resolution that they passed, Prabhupada rejected it. और निश्चय सारे उन्होंने जो सहमति जताई जिन भी बातों पे सभी को प्रभुपाद ने अस्वीकार कर दिया। So even on the material absolute authority platform, Prabhupada rejected it as being more than imperfect. तो यहाँ तक कि भौतिक स्तर में भी जिन चीजों पे चर्चा की थी ये व्यवस्थापक समिति ने, उसको प्रभुपाद ने सारे को अस्वीकार कर दिया। And now you ask the gurus, okay, can you explain this philosophical point? They say, well, it's in the Shastric Advisory Committee. They're trying to figure out what that means. और आप जब गुरुओं से पूछा जाएगा कि आप ये सैद्धांतिक तत्व बता सकते हैं, तो कहेंगे वो हमारे शास्त्रिक सलाहकार समिति में इस पे चर्चा की जा रही है। There's big debate is going on. इसके ऊपर अभी बहुत बड़ी बहसबाजी हो रही है। So they're scouring the books, and then eventually they'll come with their papers, and then they'll have a vote. तो वो ग्रंथों को निकाल के टटोलने का प्रयास कर रहा है और अंत में वो मतदान करके उसको सही And that will determine what is the absolute truth. और वो निर्धारित करेगा कि परम सत्य क्या है। So the guru can't even answer the question. तो गुरु सवाल का जवाब तक नहीं दे पा रहे। Right? The person who's supposed to know everything, जिन व्यक्ति को सारा ज्ञान होना चाहिए, Prabhupada said, one who has a bona fide spiritual master, who has unflinching faith in Krishna and bona fide guru, he's supposed to know everything. प्रभुपाद बताते हैं जिनको अटूट श्रद्धा है अपने गुरु में, कृष्ण में, उनको सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। Because if you're in touch with the source of all knowledge and intelligence and is bona fide via medium, what can't you understand? क्योंकि अगर आप प्रमाणिक अगर आप सबसे सर्वोत्तम बुद्धि के स्रोत के संपर्क में हैं और ये अगर ये प्रमाणिक है, तो आपको और क्या चीजें समझने की जरूरत पड़ेगी। Prabhupada said you should hear from Krishna because he's the supreme authority. There's no greater authority than Krishna. प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कृष्ण सर्वोत्तम अधिकारी है, कृष्ण से ऊंचा कोई अधिकारी नहीं है। So if you can hear from Krishna, perfect hearing from perfect source, directly and through pure via medium of Krishna's bona fide representative in Parampara, then you're supposed to know everything. And all the purports of all the revealed scriptures, Yasha Devi Parabhakti, everything should be revealed to you. तो अगर आप कृष्ण से श्रवण कर पा रहे हैं, कृष्ण के माध्यम से प्रमाणिक उनके परंपरा के माध्यम से, तो उनकी कृपा से सारा ज्ञान आपके ऊपर आपके सामने प्रकाशित हो जाएगा। Everybody's guru. Everyone's authorized to be guru. सभी गुरु हैं, सभी को अधिकार मिला है गुरु बनने के लिए। Some people say like that, कुछ right? लोग ऐसा कहते भी हैं। This should not be controversial. ये विवाद वाली बात नहीं है। This is directly from, everyone's saying they're followers of Prabhupada, right? They're members of ISKCON, follower of Srila Prabhupada. Then we're explaining what Prabhupada's saying, and they're saying this is deviation. ये सभी लोग You कह रहे shouldn't हैं listen कि there. हम प्रभुपाद के अनुयायी हैं, हम इस्कॉन के सदस्य हैं, और जब ये प्रभुपाद के सिद्धांत बताए जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये तो कुछ अलग ही विमुख So you सिद्धांत tell बताए जा one रहे हैं। thing we're saying that's not coming from Prabhupada's books and teachings. तो आप एक चीज हमें दिखाइए जो हम कह सकते हैं कि हम प्रभुपाद की किताबों और शिक्षाओं से नहीं बता रहे It may not be convenient for you, हो सकता है आपको सुविधाजनक but ना that's a लगे, totally different point, isn't लेकिन it? वो बिल्कुल अलग बात है। Prabhupada said, only by hearing from Krishna. प्रभुपाद कहते हैं केवल कृष्ण से श्रवण करके। What kind of hearing? किस तरह का श्रवण? Apparently hearing? अपार विचार से Or श्रवण with करना divine senses hearing? या दिव्य इंद्रियों से श्रवण करना। So what is Prabhupada saying? Therefore, only by hearing from Krishna, तो श्री प्रभुपाद बता रहे हैं केवल कृष्ण से श्रवण करके or from Krishna through pure via medium, bona fide guru, या फिर कृष्ण के शुद्ध माध्यम गुरु से श्रवण करना, can one understand the science of Krishna. तो ये कृष्ण के विज्ञान को समझ सकता है। So what is the quality of our hearing? तो हमारे श्रवण की क्या गुणवत्ता है? Internally भीतर से and और externally बाहर से will influence what we can understand and what we don't understand. वो प्रभावित करेगा हम क्या समझ पाएंगे और क्या नहीं समझ पाएंगे। Whether we can get freed from mental speculation and a theoretical understanding, कि हम मनोधर्म से मौखिक समझ से मुक्त हो पाएंगे या नहीं।
and develop tattva vijnanam or practically realized knowledge, that is considered scientific. या तत्व विज्ञान हम पा पाएंगे जो कि असल विज्ञान माना So जाता है। jnana means theoretical, तो ज्ञान होता है मौखिक vijnana means scientific. और विज्ञान का मतलब व्यवहारिक अनुभव। So can you be a guru without having vijnanam? तो क्या आप एक गुरु बन सकते हैं बिना विज्ञान पाए? Without Krishna practically revealing himself to you? कृष्ण ने व्यवहारिक रूप से आपको प्रकाशित नहीं किया आपके सामने। And then if you can't even get yourself to get Krishna to do that for you, how are you going to get Krishna to do that for anybody else? तो अगर आप स्वयं के लिए नहीं कर पा रहे हैं कि कृष्ण आपके सामने स्वयं को प्रकाशित करे, तो किसी और के सामने कैसे आप प्रकाशित करवाएं? I'm going to help you to realize how Krishna will reveal himself to you. He's not revealing himself to me, but I'm going to get him to reveal himself to you. तो कह रहे मैं आपकी मदद करूंगा कि कैसे आप कृष्ण का साक्षात्कार पाएंगे, कृष्ण आप स्वयं को आपके सामने प्रकाशित कर देंगे। मैं खुद के लिए नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन I haven't figured out how to get over my theoretical understanding, but I'm going to help you to get over your theoretical understanding. मुझे खुद ही अभी समझ में नहीं आया कैसे मैं अपने मौखिक ज्ञान से बाहर निकल सकता हूँ, उसे कैसे ज्यादा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं Well, आपको मदद wouldn't you करूंगा। just do it for yourself? अगर आप कर सकते हैं तो खुद के लिए क्यों And नहीं wouldn't कर you get पाएंगे? a practical realization and faith from that experience? और क्या आप स्वयं व्यवहारिक अनुभव और साक्षात्कार नहीं पाएंगे उसको करके? And isn't that what you're supposed to express? और क्या आप यही व्यक्त करेंगे With realization, पूरे साक्षात्कार के साथ, not theoretically? मौखिक तरीके से नहीं? There's not a theoretical presentation. ये कोई मौखिक प्रस्तुति Now, नहीं how are you going to know है। लेकिन आप कैसे समझ पाएंगे whether someone's speaking theoretically or practically realized? कोई अगर मौखिक तरीके से बोल रहा है या किसी ने साक्षात्कार Does he किया have है? jnana or is it tattva उसके vigyan? पास ज्ञान है या उसके पास तत्व विज्ञान? So if you're a conditioned soul, अगर आप बद्ध under जीव हैं, modes of material nature, प्रकृति के गुणों के अधीन prone to mental मनोरंजन speculation, करने की आदत लगी है, over dependence on imperfect mind and और senses, जरूरत से ज्यादा निर्भर हो रहे हैं अपने cheating मन इंद्रियों के propensity, ऊपर, और ठगने की बुरी आदत है with not good sumedhasaha, और अच्छी सुमेधसा नहीं है, then how are you going to understand it? तो कैसे आप इस सबको समझ पाएंगे? So let's read further. तो चलिए और आगे पढ़ते हैं। I didn't see you this morning, so I could practice, get ready for this conversation tonight. आज सुबह मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया, तो मैंने I आज hope रात you के have लिए सारा patience with चर्चा me. तैयार की। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे We're साथ धैर्य बना quoting the पाएंगे। law books. हम कानून की किताबों से बातें कर रहे हैं, Quoting the law books. हम कानून की किताबों से बात कर रहे हैं। Prabhupada is speaking in Bombay, December 20, 1975. प्रभुपाद बॉम्बे बता रहे हैं 20 दिसंबर 1975 में, And he's speaking on this particular verse और that वो we're इस talking श्लोक about. पर ही बात कर रहे हैं। And when I was reading this description from Srila Prabhupada, that's what made me go back to this verse 7.1. तो जब मैं श्रील प्रभुपाद का विवरण पढ़ रहा था इस श्लोक के बारे में, तो वो फिर मैं वापस इस श्लोक पर आया। Even Prabhupada saying, everyone is trying. प्रभुपाद कह रहे हैं सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, I'm trying. मैं प्रयास कर रहा हूँ। Prabhupada says, not everyone. प्रभुपाद कह रहे हैं सभी नहीं कर रहे हैं। At the present moment, practically nobody wants to understand what is God. वर्तमान में कोई भी ये नहीं समझना चाहता कि क्या है भगवान। Everyone is busy to fulfill the desires and necessities of the material body. सभी कोई व्यस्त हैं अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने में, Selfish and extended selfish material desires स्वार्थ या विस्तृत स्वार्थ की भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में, related to the body, bodily जो relationships. शरीर और शरीर के संबंधों पे आधारित है। Prabhupada says, as long as we are attached to this body and bodily relations, it is not possible to understand what is spiritual life. जब तक हम अपने शरीर से और शरीर के संबंधों के प्रति आसक्त रहेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन के बारे में समझ नहीं सकते हैं। Oh, just one thing in this. In this verse that we had just read, जो श्लोक हमने अभी जब पढ़ा, in those verses from Srimad Bhagavatam, और इन श्रीमद् भागवतम के श्लोकों में it says Bhagavat Bhakti Yogata Bhagavat
Tattva Vijnana. So that it's talking about that level of Bhagavad Tattva Vijnana, तो उस स्तर के भगवत तत्व विज्ञान की बात हो रही है, not theoretical. मौखिक नहीं। I just remembered that point. Sorry about that. मुझे ये बस बात अभी याद आई, इसके लिए क्षमा कीजिए। So as long as we're attached to the body, bodily relations, तो जब तक हम शरीर के and the संबंधों modes of में material nature, भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन, it is not possible to understand what is spiritual life. आध्यात्मिक जीवन के बारे में समझ पाना आसान नहीं होगा। If one continues to be attached to this material body, और अगर कोई अपनी आसक्ति बनाना जारी रखता Bodily है relations, शरीर के संबंधों के प्रति, he is no better than Gokara, cows and asses, animals. तो वो गाय और गधे के समान है। So if पशु we के जैसा। continue on a modes of material nature to be attached to this body, bodily conception, bodily relations, then we are no better than cows and asses, animals. तो अगर हम शारीरिक स्तर के जीवन में शरीर से आसक्त हैं, शरीर के संबंधों के प्रति आसक्त हैं, तो हम गाय या गधे के जैसे या पशु के जैसे हैं। Therefore, we have no ability to understand or come to the platform of real spiritual life. इसलिए हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम असल आध्यात्मिक जीवन के बारे में समझ So पाएं। Vedic culture means human culture, not animal culture. तो वैदिक संस्कृति का मतलब है मनुष्य की संस्कृति, पशु की संस्कृति नहीं। Animal culture means to just satisfy the needs and the demands of your body and the needs and demands of your bodily relations. पशु संस्कृति का अर्थ है केवल शरीर के जरूरत और उनकी इच्छाओं को संतुष्ट करना और अपने भौतिक शरीर से संबंधित इच्छाओं और उनके मांगों को संतुष्ट करना। I was in the beginning of Bhagavad Gita. One is reading Bhagavad Gita. In India, practically everyone reads Bhagavad Gita. प्रभु बता रहे हैं भारत में प्रायः सभी लोग भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। Of course, this is 1960s, 70s. और अवश्य 1960 और 70 के दशक की बात है। In India, practically everyone reads. भारत में व्यावहारिक रूप से सभी लोग पढ़ते हैं। But because one does not take the instructions of the Bhagavad Gita as instructed by Krishna, लेकिन कोई कृष्ण के निर्देश जैसे भगवत गीता में बताए गए हैं उनको उस तरीके से स्वीकार नहीं करता है, then one cannot take the benefit of the Bhagavad Gita's instructions. तो वो भगवत गीता के निर्देशों का लाभ नहीं उठा सकता। So if we're only sentimentally or superficially hearing, we're not really hearing Bhagavad Gita. अगर कोई भावुकता रूप से बनावटी तरीके से भगवत गीता श्रवण कर रहा है तो असल में भगवत गीता श्रवण नहीं कर रहा Therefore, है। we cannot expect and take the benefits or the effects of the instruction of the Bhagavad Gita. इसलिए हम भगवत गीता के प्रभाव को या भगवत गीता के निर्देशों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। The way to understand Bhagavad Gita, that's said in Bhagavad Gita itself. भगवत गीता को समझने की विधि भगवत गीता में ही बताई गई है। Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya upidekshantite jnanam jnaninastatadashina. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. सत्य को जानने का प्रयास करो प्रमाणिक गुरु के पास जाकर। Inquire from him submissively, render service unto him. उनसे विनम्र भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। It's not exactly properly translated. इसको सही तरीके से अनुवाद नहीं किया गया। Because it's saying if you want to understand Krishna in tattva, in truth, कहा जा रहा है अगर आप कृष्ण को तत्व में समझना चाहते हैं then you must surrender to Krishna and surrender to Krishna's representative bona fide guru. तो आपको अवश्य कृष्ण और उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु को शरणागत करना होगा And a humble state of mind, render service unto him. और विनम्र भाव से मनोभाव से उनकी सेवा करनी And होगी। the first and most important service is to hear from him. और सबसे पहली और महत्वपूर्ण सेवा उनसे श्रवण करना है। Then you have a right to make a submissive inquiry. तब आपके पास अधिकार है कि आप विनीत भाव से कोई जिज्ञासा कर सकते हैं उनसे। Tattvadashina means one who understands and realizes the absolute truth. तत्वदर्शी का अर्थ होता है जो तत्व को समझता है और उसने उसका साक्षात्कार भी किया है। If we don't have intelligence and faith from Krishna, how can we fully surrender and render this type of humble service if we do not have faith or intelligence that this person is a self-realized soul, Tattvadashina? अगर हमें कृष्ण से ये बुद्धि ये श्रद्धा नहीं मिलेगी कि ये जीवात्मा तत्वदर्शी है तो कैसे हम उनको शरणागत करके विनम्र भाव से उनकी सेवा कर पाएंगे। I don't know if he's self-realized soul. मुझे पता नहीं इन्होंने आत्म I साक्षात्कार don't know किया if है, he's seen the truth. मुझे पता नहीं इन्होंने तत्व का दर्शन किया How है। do I know if he's seen the truth? मुझे He's कैसे- saying he's seen the truth. मुझे कैसे पता चला उन्होंने तत्व का दर्शन I किया? hope कहते he's हैं seen उन्होंने the truth. तत्व का दर्शन That'd be किया है। nice. उम्मीद है कि उन्होंने तत्व दर्शन But किया can है। I बहुत say अच्छा with होगा। no doubt
लेकिन क्या वे बिना That सत्य he के has यह seen and पाऊंगा? understands the absolute truth? क्या इन्होंने परम सत्य को देखा है और समझा है That he's self-realized soul? कि आत्मा साक्षात्कार How are you प्राप्त going to करती है? measure that? कैसे आप इसको How are you माप going to पाएंगे? understand that? कैसे उसको समझ पाएंगे आप? My Gurudev used to explain it that the three most important things you need to understand about the Guru, you have no ability to understand on your own. मेरे गुरुदेव बताया करते थे कि गुरु के बारे में जो तीन सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको जानने की जरूरत है वो स्वयं की क्षमता से आप नहीं जान पाएंगे। So how surrendered is this person to Krishna? इस व्यक्ति ने कितना शरणागति What is किया his है कृष्ण level of पे? surrender? उनकी शरणागति का स्तर क्या है? What is he surrendered? What is he prepared to surrender? वो क्या करने के लिए तैयार है शरणागति करके? Can you measure that? क्या आप उसको आप माप सकते हैं? How much faith does this person have in Krishna? एक व्यक्ति की कितनी श्रद्धा है कृष्ण में? So can you measure that person's faith? तो क्या आप उस व्यक्ति की श्रद्धा को माप सकते हैं? We're thinking we're faithful, we're sincere. हम सोच रहे हैं हम श्रद्धावान हैं। So we're हम even एकनिष्ठ हैं। blind to our own level of faith, तो हम खुद ही अंधे हैं खुद की श्रद्धा के प्रति। right? And then with that kind of contamination and influence of Maya, imperfect senses, now we're gonna extrapolate, or we're gonna use those same, pure transcendental divine intelligence and senses to analyze the faith of the spiritual master. तो अगर इस तरह की हमारे कलमस हैं और इस तरह के अपूर्ण इंद्रियां हैं, इन सभी का इस्तेमाल करेंगे हम शुद्ध जो प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु हैं उनको समझने के लिए, उनको मापने के लिए। And we need to know लेकिन हमें how जानने की surrendered जरूरत is है this person, कि ये व्यक्ति कितना how faithful शरणागत is this है, person, कितना श्रद्धावान है ये व्यक्ति। right? And then the third point was, what is this person's real motivation for doing what is he doing? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है इस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है वो करने के लिए जो ये कर रहे Can हैं। you measure the person's motivation? तो क्या आप किसी व्यक्ति के उद्देश्य को माप सकते What's हैं? his ultimate motivation for doing what he's doing? इनका अंतिम उद्देश्य क्या है वो करने के लिए So जो the कर things रहे हैं। that you need to see, तो जो that चीज़ you आप- have to see, जो चीज आपको देखने की जरूरत है या आपको देखना ही we होगा, have no ability to see. हमारे पास वो देखने की कोई योग्यता नहीं है। Because that intelligence and that faith comes from Krishna. क्योंकि ये बुद्धि और ये श्रद्धा कृष्ण से आती But है। we don't know Krishna, लेकिन हम कृष्ण we're को not जानते नहीं, depending on Krishna, कृष्ण के ऊपर we निर्भर नहीं हो cannot रहे, hear कृष्ण Krishna. को सुन नहीं सकते। So where's the intelligence and faith going to come from? तो ये बुद्धि और श्रद्धा कहाँ से आएगी हमारे पास? And without that intelligence and faith, how are you going to fully surrender? और बिना इस बुद्धि और श्रद्धा के कैसे आप पूर्ण शरणागत कर Oh, I'm पाएंगे? fully surrendering. और मैं पूर्ण शरणागत कर रहा हूँ, I am a soul surrendered unto you. मैं एक आत्मा समर्पित व्यक्ति हूँ। Right? So without unflinching faith in Krishna and the Guru, you cannot fully surrender. And neither you should fully तो surrender. बिना अटूट श्रद्धा के कृष्ण में और गुरु में आप पूर्ण शरणागत नहीं कर पाएंगे और ना तो आपको पूर्ण शरणागति करनी चाहिए। But that's required first. लेकिन ये पहली आवश्यकता है। Then in a humble state of mind, hear from them. और विनम्र भाव से उनसे श्रवण कीजिए, Render service unto them. कुछ सेवा कीजिए The उनकी। first most important service is to hear from them. सबसे पहली महत्वपूर्ण सेवा In a है उनसे humble श्रवण state of करना। mind, submissive state of mind, विनम्र मनोभाव से, मानसिकता submissive से, of reception. विनीत भाव से But श्रवण if you करना। have no intelligence and faith that you think that you can not think that you can be confident that you're hearing Krishna directly and through pure medium of the Guru, then how you can surrender to the hearing process? तो अगर आपको ये पूर्ण बुद्धि श्रद्धा नहीं मिल पा रही है कि यहाँ आप कृष्ण को सुन पा रहे हैं सीधे सीधे भीतर से या अपने गुरु के माध्यम से प्रकट होकर, तो कैसे वहाँ पे आप पूर्ण शरणागत कर पाएंगे? So I'll apparently surrender to him, तो हम बाहरी तरीके and से then I'll शरणागत कर रहे apparently hear from हैं him. और बाहरी तरीके से उनसे श्रवण कर रहे हैं। And then when I ask my question, I'll see if that answer makes sense to me. और जब मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा और उनका उत्तर हम देख पाएंगे कि वो मेरे लिए कोई अर्थ बनता है। That's all apparent. It's not absolute. ये सब अपार है, ये So सब the तत्व whole है। thing is rooted in an illusion. तो सारी चीज का जड़ मोह से बनाया गया It's है। not rooted in the truth. It's not rooted in reality. तो इसका आधार सत्य नहीं है। So Prabhupada said, you should hear from Krishna and Krishna Parampara, प्रभुपाद बताते हैं आपको कृष्ण और कृष्ण परंपरा से श्रवण करना चाहिए right? And the Shastra. और शास्त्र से। That's the only thing that is to be heard. यही एकमात्र चीज सुनने की जरूरत है And everything else but that और इसके अलावा जो भी चीज है is Maya. सभी माया है।
So we're listening to everything else but that and have no ability to hear Krishna, Krishna, Parampara or the Shastra. हम उसके अलावा सारी चीजों को सुन रहे हैं और हमारे पास कोई योग्यता नहीं है कृष्णा कृष्ण परंपरा और शास्त्र को श्रवण करने की। But I'm fully surrendered. लेकिन हमने पूर्ण I'm शरणागति doing किया है submissive all और मैं reception. विनीत भाव से श्रवण कर I'm रहा हूँ, asking questions. मैं प्रश्न I'm पूछ रहा getting हूँ, answers. मुझे उत्तर भी मिल रहे हैं Apparently. केवल बाहरी तरीके से। You think I wasn't ready for you tonight? आपको लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए तैयार था आज की रात? I knew I had to study today. मुझे पता था आज मुझे बहुत पढ़ाई I करनी knew है। something was coming tonight. मुझे पता था आज की रात कुछ होने वाली है। So now Prabhupada continues. तो प्रभुपाद आगे बताते हैं, Right? This is qualification to be a guru. तो ये योग्यताएं हैं गुरु होने की। Unless you approach a person who is a representative of Krishna and a tattvadarshi. तो जब तक आप ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाते जो कृष्णा का प्रतिनिधि है और तत्वदर्शी है, Is it someone with a theoretical understanding of tattva? Is that tattvadarshi? तो अगर कोई मौखिक रूप से कृष्णा का ज्ञान दे रहा है तो क्या वो तत्वदर्शी है? Tattvadarshi means tattva vijnana. तत्वदर्शी का मतलब होता है तत्व विज्ञान। Without the mercy of Krishna, Krishna Parampara, Shastra, how are you going to get tattva vijnana? Where are you going to get tattva vijnana? तो कृष्णा कृष्ण परंपरा और शास्त्र की कृपा के बिना आपको तत्व विज्ञान कहाँ से मिलने वाला है? So Prabhupada, Krishna himself is saying who is the guru, कृष्णा स्वयं बताएंगे गुरु कौन है, who you should surrender to, किसको आपको शरणागत who you करना should चाहिए, hear from, who you किससे should आपको serve, श्रवण करना चाहिए, किसको and who आपको you सेवा should करनी चाहिए, inquire from. Krishna himself is saying what is the qualification. और किनसे आपको जिज्ञासा करनी चाहिए। कृष्णा स्वयं बता रहे हैं क्या योग्यता It must be tattvadarshi, अवश्य उनको तत्वदर्शी होना होगा, who has seen the truth जिसने तत्वों को दर्शन किया है and is full of knowledge. और पूर्ण ज्ञान है उनको। How are you going to know who has seen the truth and full of knowledge? आपको कैसे पता चलेगा जिसने तत्वों को दर्शन किया है और पूर्ण ज्ञान है? Right? That was one of my first questions to Srila Govinda Swami. I'm a conditioned soul. I'm just beginning in spiritual life. और ये मेरा पहला प्रश्न भी था श्रील गौर गोविंद महाराज से कि मैं हम बद्ध जीवन Everyone's में quoting आध्यात्मिक शुरुआत Shastra, कर रहे हैं। Krishna, Krishna, Krishna. Right? How do you know? Is this he's telling leelas and pastimes? Right? How do you know if this person is practically part of that leela? That was my question. तो सभी लोग शास्त्र की बातें कह रहे हैं, कृष्णा कृष्णा कह रहे हैं, कृष्णा की लीलाएं बता रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा ये व्यक्ति कृष्णा की लीलाओं का भाग है या केवल मौखिक तरीके How से can बता a रहा है? conditioned soul know? Is this person practically part of that leela, or is it just theoretical? कैसे कोई बद्ध जीव ये समझ पाएगा कि ये व्यक्ति असल में उस लीला Is के it भाग है real or या is केवल it मुंह से unreal? बता रहे हैं, ये असली है या नकली है? Because it all sounds absolute, तो right? सुनने में सब एक जैसा लगता है। So how does a conditioned soul know the difference तो बद्ध जीव को अंतर कैसे between पता what's चलेगा? real and unreal? क्या असली है क्या नकली है? What's truth and what's untrue? क्या सत्य है क्या असत्य है? What's realized and what's theoretical? क्या साक्षात्कार प्राप्त ज्ञान है और क्या So मौखिक Gurudev है? said it cannot be मेरे theoretical. गुरुदेव ने बताया मौखिक It ज्ञान will नहीं not होगा, work. वो काम ही नहीं कर पाएगा। So there'll be no effect of hearing from तो them. उनसे श्रवण करके कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। So you judge by the results or the effect of proper hearing from proper source. आप प्रभाव से और फलों से देख सकते हैं अगर आप सही स्रोत से सही तरीके से अपने श्रवण किया And है। unless one is empowered by Mahaprabhu, Mahaprabhu's parampara, तो अगर किसी को महाप्रभु की परंपरा से सशक्तिकरण ना it'll मिले be like blank fire. तो ये खाली बंदूक की तरह होगी, No bullet. कोई गोली नहीं होगी उसमें। Big entourage, big lights, big sound system, big everything, right? And then it's like, okay, like smoke, fire, movement, right? No bullet. बड़ा अंतराज, बहुत सारी बड़ी-बड़ी चीजें, बड़ी आवाज होगी, बहुत सारी रोशनियां होगी, लेकिन खाली बंदूक होगी, बस उसमें गोली नहीं होगी, बस आवाज आएगी। So it's just a theoretical, ये sentimental, भावुकतावाद artificial. और बनावटी तरीके का। It's cheating actually. ये ठगना एक तरह का। Because those jnanis, my Gurudev used to say, they're the greatest cheaters. मेरे गुरुदेव बताते हैं वो ज्ञानी सबसे बड़े ठग हैं। Because they're running after name and fame, adoration, distinction. क्योंकि वो यश, मान, प्रशंसा और प्रतिष्ठा के पीछे हैं। They want pranam, pranami, प्रणाम और प्रणामी चाहते हैं। pratishta, प्रतिष्ठा, jnanis. ये ज्ञानी। That's why they're cheaters. और इसीलिए वो ठग हैं। So if you're cheating, if you're coming in that way, Krishna's going to reveal, you're going to become a tattvadarshi. तो आप ठग रहे हैं और इस भाव से आ रहे हैं, तो क्या आप तत्वदर्शी बन पाएंगे? कृष्णा You're going to get divine eyes and ears by which to hear and see Krishna. आपको दिव्य नेत्र या दिव्य इंद्रिय मिलेंगे जिससे आप कृष्ण को देख और सुन पाएंगे। Unless you approach a person who is a true representative of Krishna and a tattvadarshi, who has seen the truth.
तो जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलेंगे जो असल कृष्ण का प्रतिनिधि है और तत्वदर्शी है, जिसने and who is दर्शन full किया of है, knowledge, और जो पूर्ण है ज्ञान में, from him you can understand what is Bhagavad Gita, केवल उनसे ही आप समझ सकते हैं कि भगवत गीता क्या है, what is Bhagavan. भगवान क्या है। Otherwise, इसके अलावा you cannot understand. आप समझ नहीं पाएंगे। Naham prakasha savasha yogamaya samanvita samavrita, Krishna says. I have never manifested to such foolish, unintelligent people. कृष्ण कहते हैं ऐसे मूर्ख और कम बुद्धिमान लोगों के सामने मैं कभी स्वयं को प्रकाशित नहीं करता। So Prabhupada says, if you remain covered by the material energy, प्रभुपाद बताते हैं अगर आप इस भौतिक प्रकृति के द्वारा ढके रहेंगे, means Rajagun, मतलब रजोगुण, Tamagun, तमोगुण, even Tattvagun, यहाँ तक कि if you remain covered by material energy, then you cannot understand the Bhagavad Gita. अगर आप इस भौतिक प्रकृति से ढके रहेंगे तो आप भगवत गीता नहीं समझ सकते हैं। Wow. So are we still influenced by Tamagun, Rajagun, and so are you influenced by Sattvagun? Are you overwhelmed by the influence of Sattvagun? क्या आप अभी भी आप तमोगुण रजोगुण से मुक्त या फिर आप सत्वगुण में भी हैं कम से कम? I can't understand the absolute truth. The Sattvagun's getting in the way. मैं परम सत्य को समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सत्वगुण मेरे रास्ते में आ रहा है। I think we got bigger problems than that. मुझे लगता है उससे ज़्यादा बड़ी समस्याएं हैं हमारे I'm going to पास। say you got Himalayan mountains full of problems. हमारे पास हिमालय पर्वत जैसी बड़ी समस्याएं हैं। So unless we get this purification by the mercy of Krishna and his true representative, the mercy of Shastra, तो जब तक हमें ये शुद्धिकरण ना मिले कृष्ण की कृपा से, you cannot get purified and free from these coverings of the material energy under bodily concept of life. आप शुद्ध नहीं हो पाएंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त नहीं हो पाएंगे जो आपके जीवन को ढका हुआ है, जिसने चेतना को। So that was a good one, wasn't it? तो ये अच्छा था। You want to hear more? आप और सुनना चाहते हैं? Let's see what else we can find. चलिए देखते हैं हम और क्या ढूंढ पाते We're हैं। like gold diggers. हम जो है जैसे सोना खोद रहे हैं, Yeah, we're prospecting. हम अभी जांच कर We're रहे हैं, looking for some gold, हम सोना ढूंढ रहे हैं, some nectar. कुछ अमृत। And it's always very interesting. और ये हमेशा बहुत Because you दिलचस्प होता never है, know when you're gonna get something or hear something. क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपको कब कुछ मिलेगा या कुछ And सुन it पाएंगे। could be like the last pieces of a puzzle that you need to hear. और ये हो सकता है रहस्य का कोई सबसे आखिरी भाग Sometimes जो आप we're जानना trying to चाहते put this whole puzzle together. हैं। जैसे कई बार आप किसी And all of a sudden you just find these pieces, right? And then those pieces are the pieces which now it becomes more and more clear. कि आप किसी पहेली को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और पहेली का कोई एक भाग जो है जो आने के बाद सारी चीजें साफ हो जाती हैं उसमें। So Prabhupada, let's see what we're going to find. चलिए देखते हैं It's हमें क्या very मिलता interesting. है। ये बहुत दिलचस्प है। Prabhupada's on a morning walk in Delhi, March 25, 1976. तो प्रभुपाद दिल्ली में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और मार्च में 1976 में। So devotee disciples saying that, talking about how to see God, तो भक्त बात कर रहे हैं कि कैसे हम भगवान को देख सकते हैं। and Prabhupada said, real devotee means tattvadarshi. प्रभुपाद बता रहे हैं असल भक्त का मतलब होता है तत्वदर्शी, He has seen the real truth. जिसने असल सत्य को देखा है। Right? So if we say we're devotees, अगर हम कह रहे हैं हम भक्त हैं, then that means we're tattvadarshi. इसका मतलब हम तत्वदर्शी हैं। Right? ऐसा है। That means we've automatically seen the truth इसका because मतलब हमने we're अपने आप devotees. सत्य को दर्शन कर लिया क्योंकि हम भक्त हैं। Devotee means tattvadarshi. भक्त का मतलब होता है तत्वदर्शी। So if I'm devotee, that means I'm tattvadarshi. अगर मैं भक्त हूँ इसका मतलब मैं But तत्वदर्शी what हूँ। kind of तो devotee? किस तरह के भक्त की बात हो रही है? He has seen the real truth. जिसने असल सत्य का दर्शन किया। Have we seen and understood the real truth? क्या हमने देखा है और समझ लिया है असल सत्य को? Krishna is giving the real truth, the actual truth. कृष्णा असल सत्य बता रहे हैं। If you understand it and take it, अगर आप उसको समझ लेंगे और उसको ग्रहण कर पाएंगे, then you are a devotee. तब आप एक भक्त हैं।
If you don't understand it and you don't take it, अगर आप उसको समझ नहीं रहे, उसको लेंगे नहीं, you are a non-devotee. आप एक अभक्त हैं. So we don't understand it, neither we're taking it, means we're acting like non-devotees. ना तो हम उसको समझ रहे हैं, ना हम उसको स्वीकार कर So रहे हैं. just to say, no, we're devotees, तो बस केवल the कहना Prabhupada said, because you're a devotee, that you're tattva-darshi, so that means we're knowers of the truth. क्योंकि हम भक्त हैं तो हम तत्वदर्शी हैं, हमने तत्व का ज्ञान So पा whatever लिया. I think I know, that's the truth. तो जो भी मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ, वो सत्य है. Because I thought it out. क्योंकि मैंने I'm इसको a सोचा है, devotee. मैं एक भक्त हूँ. I'm tattva-darshi, so it must be coming from तो Krishna. अवश्य ये कृष्णा से आ रहा होगा, Must be spiritual, right? अवश्य आध्यात्मिक होगा. And sometimes what happens is like when the room is dirty, you don't realize it's so dirty. कई बार कैसा कमरा गंदा होता है तो आपको उतना अनुभव नहीं होता ये कितना And then गंदा when है. you start to clean it, और जब आप उसको साफ करना then शुरू you करते start हैं, to see all these filters there. तब आपको कचरा दिखने शुरू हो जाता है. But because we're just moving busy about, we don't realize how dirty it क्योंकि is. हम इतने व्यस्त रहते थे, क्योंकि हमने देखा नहीं था यहाँ कितनी So गंदगी all है. of this misconception, this is like a dirt. तो ये सारी गलतफहमियां एक They're like different types of गंदगी की filth. तरह It's ignorance, actually, a sinful reaction. कचरा, अज्ञान, पाप कर्म है. But we're taking it as real, we're taking it as spiritual. लेकिन हम उसको सत्य मान के, आध्यात्मिक मान के But चलते if हैं. it's a misconception, लेकिन अगर ये एक तरह की गलतफहमी है, it's not actually spiritual. असल आध्यात्मिक नहीं It's है, coming from Maya. ये माया से अगर आ रहा है, It's a filth. तो ये कचरा है. So then it starts stirring up all of these things. तो ये सब घूमना और And जमा होना like, शुरू हो wow, जाती this है. is why there's so much misconception, so much dirt, so much, right? It can become bewildering because before that we were not trying to clean कि anything. इतनी सारी गलतफहमियां, इतनी सारी गंदगी है, क्योंकि हमने पहले कभी साफ करना शुरू नहीं किया था. अब हमारे सामने चीजें आ रही हैं. Every page, every class, everything is some truth that we're meant to hear that. हर एक पन्ना, हर एक क्लास कुछ ऐसा सत्य होता है जिसे को हमें सुनने की जरूरत है. So, Srila Prabhupada is talking April 13, 76 in Bombay. तो श्रील प्रभुपाद 13 अप्रैल 1976 बॉम्बे में बता रहे हैं. Prabhupada's talking about tattva. प्रभुपाद तत्व की बातें कर रहे हैं. This looks like a good one. सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है. Yeah. This is a very good one. बहुत ही अच्छा है. It's like I'm going up and it's like more nectar, more nectar, more nectar, and it's all connected, you know? जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसमें और अमृत मिलता जा रहा है. सभी एक That's दूसरे what से जुड़े happens. हुए हैं. Sometimes it's just a paragraph, couple right? But sometimes it's like a whole train of thought, exactly on what we're trying to understand, isn't it? कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई एक भाग है, लेकिन जब देखते हैं कि पूरा सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और हम जब आगे बढ़ते जाते हैं तो Oh, hippies. Also. हिप्पी के बारे में बात की जा रही है. The hippies, the famous hippies. प्रसिद्ध हिप्पियों के बारे में. Yes, women should be gurus. स्त्रियों को गुरु बनना चाहिए. This is very controversial. ये बहुत ही विवादास्पद बातें हैं. The women's liberation movement might go after you. महिला मुक्तिकरण आंदोलन आपके पीछे लग सकता है. Right? The hippies and the women's liberation movement. ये हिप्पी और महिला This is the sangha. ये They're दोनों का संग, connected. दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. They all came out same time. तो दोनों एक ही समय में आए They're all थे. from the same seed. दोनों का बीज एक ही है. Very deep rooted. बहुत ही गहरा है. Prabhupada says here,
What should be the aim of our life? प्रभुपाद बता रहे हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए. We should go to the highest planetary system back home, back to Godhead. हमें सर्वोत्तम लोक भगवत धाम वापस जाना चाहिए. Our real home is, as part and parcel of God, is in Vaikuntha. हमारा असल घर, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, वैकुंठ है. But somehow we've all come here to this prison house. लेकिन किसी तरह से हम इस कारागार में आ चुके हैं. Bhaktivinoda Thakur has sung और भक्तिविनोद ठाकुर ने ये गाया है that somehow or other we have fallen here. किसी तरह से हम यहाँ गिर चुके हैं. Therefore, the real aim of our life was how to get out of this darkness, out of this nescience. तो हमारा असल जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कैसे हम इस अंधकार से, अज्ञान से बाहर निकल सकें. If we remain again like monkeys and cats and dogs, अगर हम बंदर, कुत्ते या बिल्ली की तरह बने रहेंगे, eating, sleeping, mating and dancing, खाना, सोना, संग करना और नाचना, that is not a very responsible life. ये कोई जिम्मेदारी वाला जीवन नहीं है. Every person, every man should be responsible. हर एक व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए. And that is Vedic culture. और ये वैदिक संस्कृति है. To create responsible man, कि जिम्मेदार मनुष्य को बनाना, Varnasamkar. वर्ण संकर नहीं. So now you see, they have this depopulation agenda. अभी देखिए आबादी को कम करने के लिए अलग-अलग प्रस्ताव लाए जा रहे हैं. They think there's too many people on the वो planet. सोचते हैं कि धरती में बहुत सारे लोग हैं. And they're all sucking the oxygen, they're eating the grains, they're drinking the water. Right? They realize this Varnasamkar is a problem. तो वो जो है सोच रहे हैं कि ये सारे हवा खींच रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, पानी ले रहे हैं, तो और ये वर्ण संकर है जो They ये create all disturbance, they suck all the oxygen, right? आबादी बढ़ रही है, परेशानी खड़ी हो रही है, सारा Limited ऑक्सीजन खींच रहे हैं. resources, right? They're a bunch of useless people, संपदाएं प्रकृति की बहुत सीमित हैं और बहुत सारे बेकार लोग ज्यादा हैं. uneducated, unsophisticated. अपराधी लोग और Why are we जटिल लोग. facilitating and feeding these people? क्यों हम ऐसे व्यक्तियों को सुविधाएं दे रहे हैं, उनको खिलाया जा रहा है. So this is a very warped way of realizing Varnasamkar, तो ये एक unwanted population. तो ये एक अलग तरीका है समझने का वर्ण संकर, यानी कि अनुवांछित आबादी को. So from Vedic standpoint, it's how to regulate your life and bring right consciousness, bring the right souls into the world. Not like cats and dogs and monkeys, but like responsible persons who can be benefited and benefited others by their presence. तो वैदिक संस्कृति कार्य करती है कैसे जिम्मेदार मनुष्य को बनाया जाए जो स्वयं के लिए और समाज के लिए भी लाभ कर सके. So that's a Vedic culture. तो ये है वैदिक संस्कृति. To create responsible persons who know how to behave. जिम्मेदार व्यक्तियों को बनाना जिनको पता है किस तरह का व्यवहार करना Otherwise, it's a चाहिए. Varnasamkar. वरना ये केवल वर्ण संकर हो. So these people idea is you can't stop it by presenting a higher process. So you have to just kill everybody. तो इन लोगों की प्रक्रिया है कि इनको सुधारा नहीं जा सकता किसी ऊंची पद्धति या प्रक्रिया को देखिए, तो हमें इन सारे लोगों को मार डालना होगा. They literally believe that. और वो उसका पूरा विश्वास करते हैं इस बात में. They don't even hide that fact. और ये सत्य को छुपाने का There's so प्रयास many millions of people that it's overpopulated. और ये इतने सारे करोड़ों लोग हैं, ये अरबों लोग, ये ज्यादा आबादी बहुत बढ़ चुकी It's है. very controversial. ये बहुत विवादास्पद बात है. That's why do you think they bring all of these so-called medicines and vaccines and all of these things? Why did they go to Africa and India and all of these countries with such a big population, which they consider to be uncivilized people, right? तो वो क्यों ऐसे तरह की दवाइयाँ, वैक्सीन निकालते हैं और अफ्रीका और भारत जैसे घनी आबादी वाले देशों में जाते हैं? Right? Why is Bill Gates and all of his people? Why are they banned from Africa and banned from India? Right? Why are they banned? और ऐसे बड़े व्यक्ति बिल गेट्स अफ्रीका और भारत में आने से उनको क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? Because they see what's happening after everybody takes all of this medicine, right? क्योंकि लोगों ने देखा है कि जब सभी लोग उनकी ये दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं तो उनके अंदर क्या होने लगता है. This may not end up on YouTube, I think, this class. हो सकता है ये क्लास रह नहीं पाएगा. But it's a very interesting point because they realize on some level that this unwanted population of irresponsible persons, Varnasamkar, how we're just maintaining them
And all they're doing is they're disturbed and disturbing, and they're just sucking up all of the natural resources which are limited on this planet. लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये लोग भी इस बात को समझ पा रहे हैं कि कैसे ये गैर जिम्मेदार लोग जो अनवांछित आबादी है और ये सारी चीज़ों को संपदाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं और स्वयं परेशान हैं और दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं. So Prabhupada said, therefore Arjuna, he was very much afraid that after the war, then the women will become widows. तो अर्जुन को ये भय था कि युद्ध के बाद स्त्रियां विधवा हो जाएंगी. And then they will be polluted. और फिर वो दूषित हो जाएंगी. And then the Varnasanka population will then come out. और फिर वर्ण संकर आबादी बढ़ जाएगी. And that is a fact. और ये एक सत्य है. So after the war, तो युद्ध के बाद, after the last war, World War II, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, what is the end result? What came out? The hippies came out. इसका फल क्या हुआ? हिप्पी बाहर आए. Right, so the hippies want, like, they're so cool, right? Prabhupada said, you're Varnasanka, you came out due to pollution. तो प्रभुपाद बताते हैं, वो हिप्पी समझते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन प्रभुपाद बताते हैं वर्ण संकर है, आप जो है गंदगी से बाहर हैं. They will be polluted. और वो दूषित करेंगे. And Varnasanka population will come out. और वर्ण संकर आबादी बढ़ेगी. And actually this is a fact. और ये एक सच्चाई है. Because after the last war, क्योंकि पिछले विश्व युद्ध के बाद all the hippies have come out all over the world. पूरे विश्व में हिप्पी आ चुके हैं. And this is a fact. और ये एक सत्य बात है. So we have a world of Varnasanka. तो हमारा पूरा विश्व भी अब वर्ण संकर हो चुका है. Population, uncivilized, आबादी और irresponsible, आबादी, गैर जिम्मेदार. and they're taking charge of the government और वो सरकार में पद और स्थान because ले of रहे हैं. vox populi. क्योंकि ज्यादातर लोग उनको चुन रहे हैं. And now you have a headless society, अब समाज का कोई सर बाकी नहीं रहा. and it's putting everybody in complete chaos, isn't it? सभी लोग पूरी तरह से अफरा तफरी में हैं. So maybe these wars are required after all, isn't it? हो सकता है शायद युद्धों की जरूरत है असल में. Right? It's said like that the wars, right? This is Krishna's way of getting rid of all the sinful reactions. तो कहते हैं ये कृष्ण का ही एक तरीका है सारे पाप कर्मों से मुक्त करना है. So who's carrying most of the sinful reactions? तो सबसे ज्यादा पाप कर्म कौन लेकर चलता है? Varnasanka. वर्ण संकर लोग. Therefore they're slaughtered, right? Hundreds, thousands of people, millions of people in these wars. इसलिए हजारों लोग, सैकड़ों, लाखों लोग, करोड़ों लोग युद्ध में मारे जाते हैं. Because there's too much Varnasanka, too much sinful reactions. बहुत सारा वर्ण संकर, बहुत सारे पाप कर्म. So it just completely pollutes the atmosphere of the world, where it becomes intolerable. ये पूरे विश्व के परिवेश को गंदा कर देता है, जो कि असहनीय हो जाता है. I don't know where I'm going with this conversation. पता नहीं इस वार्तालाप से I could get in big trouble. मैं बड़ी मुसीबतों में फंस सकता हूँ. So if there is this type of Varnasanka, तो अगर इस तरह के वर्ण संकर होंगे, that all of these, after the war, all of these hippies came out all over the world, कि इस युद्ध के बाद सभी जगह हिप्पी पैदा हो गए. that means human civilization is lost. इसका मतलब मनुष्य सभ्यता नष्ट हो गई. So the real human civilization, this is Srimad Bhagavatam. असल मनुष्य समाज है श्रीमद् भागवतम. And Narada Muni is describing how the civilization should be advanced. और नारद मुनि बताते हैं कैसे सभ्यता का विकास होना And चाहिए. the first proposal is brahmacharya. और सबसे पहला How प्रस्ताव है to create ब्रह्मचार्य. brahmacharyas. कैसे ब्रह्मचारियों का निर्माण करना. And that first training should be how to properly worship the Supreme Lord. और सबसे पहला प्रशिक्षण कैसे सही तरीके से परम भगवान की पूजा की जाए. So all these rules and regulations in Prabhupada is given in this Vidhi Bhakti. This is all meant for purification. प्रभुपाद ने बहुत सारे नियम और कानून रीति रिवाज दिए हैं विधि भक्ति में, और ये सभी पालन करने की जरूरत है शुद्धिकरण. This will gradually elevate our consciousness. तो ये धीरे धीरे हमारी चेतना को उन्नत बनाएगा, so that ultimately we can go back to God. ताकि अंततः हम भगवत धाम वापस आ सकें. But because it's not, for want of real civilization, they are going again back to being monkeys, cats, and dogs. तो असल सभ्यता को पाने की बजाय वो वापस बंदर, कुत्ते और सुअर की तरफ जा रहे हैं. So this is Prabhupada 1976 in Bombay.
प्रभुपाद 1976 बॉम्बे में बता रहे हैं because of not really practicing this civilization, then they're going back to being monkeys, cats and dogs, and this is a fact. तो असल सभ्यता का पालन नहीं करने की वजह से वो बंदर, कुत्ते और सुअर इन सब के पीछे जा रहे हैं और So Krishna consciousness movement तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन is trying to save them from going back to becoming cats and dogs. उनको बचाने का प्रयास कर रहा है कि वापस ये कुत्ते बिल्ली न बन जाए. Instead of going back there, we're trying to send them back to God instead of back to New York. तो वापस वहाँ उनको भेजने के बजाय न्यूयॉर्क वापस भेजने के बजाय हम उनको भगवत धाम भेजने का प्रयास कर रहे हैं या सैन फ्रांसिस्को. So first Prabhupada said we have to purify and build our character. प्रभुपाद बताते हैं पहले हमें शुद्ध करना होगा और अपने चरित्र को बनाना होगा. Otherwise, what is the use if you are taking so many degrees if you have no good character and no good behavior? वरना इतनी सारी डिग्रियां लेने का क्या अर्थ है अगर आपको कोई सही व्यवहार या चरित्र नहीं है. Yes, I have BS and MA and MBA and this and that, right? मैं BS हूँ, BA, MBA और ये और वो. But we pick up all bad habits. और हमने सारी गलत आदतें जमा कर ली. I saw in Bhubaneswar there's so many people that came to Bhubaneswar, but they were from outside villages. तो मैंने They देखा came for education. मैंने देखा भुवनेश्वर शहर में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए लेकिन वो गांवों से अलग-अलग जगहों से आए थे. And when they came, they were very simple. और जब वो आए थे तो वो बहुत सरल थे. Because they came from simple village somewhere. क्योंकि वो कोई सरल गांव से छोटे गांव से तो वो शहरों में आए. And then they're mixing with these older classmates. और फिर अपने ऊंचे And they're already engaged in all sinful activities. और वो सब पाप कर्म करने में लगे रहते हैं. Then they want to fit in with them. और वो उनके साथ भी Then लगे they're रहना चाहते forced by asatsanga. तो असत संग में उनको मजबूर होना Next पड़ता thing है. they're doing same thing. और अगली चीज सामने आती है वो भी वही चीज कर रहे हैं. सारी बुरी आदतें जमा कर रहे हैं. There's many people they make mistake, they end up in the prison. और कई लोग ऐसी गलती कर देते हैं अंत में उनको जेल जाना And when पड़ता they're in है. the prison, you have some of the best criminals in the world are in the prison. और जब आप जेल में होते हैं तो वहाँ पे सबसे दुनिया के सबसे बड़े-बड़े अपराधी होते So हैं. they made like 1-2 mistake, they got thrown in jail for 1 year or something, right? तो उन्होंने कोई छोटी-मोटी गलती की तो उन्हें 1 साल या 2 साल के लिए Then जेल they're जाना meeting पड़ा. all these like criminal masterminds in there. और फिर वहाँ पे सबसे बड़े-बड़े अपराधी मास्टरमाइंड से We मिलते get हैं. out, we got a good plan, you know. होते हैं जब हम बाहर निकलेंगे हमारे पास बहुत And अच्छी then they योजना just है. develop all of these schemes and ideas how to do, really bigger levels of criminal activity. और फिर उनके अंदर और भी विचार या स्कीम आ जाते हैं कि और कैसे बड़े-बड़े स्तर के अपराध कर सकते हैं उन लोगों के साथ मिलकर वो. So Prabhupada is talking about all rules, regulations, waking up early, taking bath, chanting, hearing Hari-katha Krishna-katha. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे सुबह उठ के स्नान करना और जप करना, हरि कथा कृष्ण कथा श्रवण करना और नियमों का पालन करना. Then also this picture of Guru and Didi room. और फिर विग्रहों के कमरे में जो है Then गुरु you की see पूजा, your Guru, then his Guru, फिर उनके गुरु और उनके गुरु की, and then your Guru's Guru. फिर उनके गुरु के गुरु At की. least 4 or 5 generations of कम से कम acharyas in the parampara. 4-5 पीढ़ियां आचार्यों की जो परंपरा में That है. spiritual knowledge is received through that parampara. क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान उस परंपरा के माध्यम से I have प्राप्त किया जाता है. received that from my Guru, मैंने वो प्राप्त किया है मेरे गुरु से and you are receiving from your Guru. और आप प्राप्त कर रहे हैं आपके गुरु से. And my Guru, he received it from his Guru, और मेरे गुरु ने अपने गुरु से प्राप्त and किया he received from his और Guru. उन गुरु ने उनके गुरु से This प्राप्त किया. evam parampara praptam. तो एवं परंपरा प्राप्त. This is chain of disciplic succession. ये परंपरा का रास्ता है. Prabhupada says, Adao Guru Ashray, Guru Ashrayam. प्रभुपाद बताते हैं अदाव गुरु आश्रय. You cannot learn to become a perfect human being without accepting a Guru. आप एक सही मनुष्य नहीं बन सकते हैं गुरु ग्रहण किए बिना. By mercy of Krishna, one gets a Guru. और कृष्ण की कृपा से किसी Mercy गुरु of बनते हैं. Guru, they train you, qualify you, how you can get Krishna. और कृष्ण और गुरु अपनी कृपा से Otherwise, you'll कैसे just कृष्ण प्राप्त remain करना है. a rascal. वरना आप केवल एक बदमाश बने रहेंगे. Tad Vigyanatam Sagurum Eva Vigachet from Upanishad. उपनिषद से बताया गया है.
So to understand things properly, one must humbly approach तो किसी चीज को सही तरीके से समझने के लिए विनम्र भाव से जाना होगा, with firewood in your hand, हाथों में यज्ञ की अग्नि लिए, a spiritual master who is learned in the Vedas उस आध्यात्मिक गुरु के पास जिसको वैदिक ज्ञान है and firmly devoted to the absolute truth. और वो पूरी तरह से परम सत्य के प्रति अर्पित है, समर्पित है। So Shota Parampara means you have to hear, तो श्रोता परंपरा का मतलब है and आपको by श्रवण hearing करना, then you'll see, और श्रवण करके आप and देख then you'll पाएंगे understand absolute और आप truth. परम सत्य को समझ Prabhupada पाएंगे। said this is the Vedic injunction. प्रभुपाद कहते हैं यह वैदिक मार्ग है। If you want to learn that transcendental science, you must approach a guru. अगर आप ये दिव्य विज्ञान समझना चाहते हैं, आपको अवश्य किसी गुरु के पास आना होगा। Guru principle is the same, not that your guru and my guru will be different. गुरु तत्व हमेशा एक होता है, ऐसा नहीं कि आपके गुरु और मेरे गुरु अलग हैं। If he is actually a guru, अगर वो असल में आपके गुरु हैं, there's no difference between my guru and your guru. तो मेरे गुरु और आपके गुरु के बीच में कोई अंतर नहीं होगा। Just like a medical man, you consult one medical man, I consult another medical man. जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर मैं किसी और डॉक्टर के पास जाता हूँ। So that does not mean the medical man is different necessarily because they're depending on the same medical science. लेकिन दोनों ने एक ही इस विज्ञान का पालन किया है, तो दोनों ही डॉक्टर हैं। So if you have a broken leg and you go to the doctor, takes an x-ray and says, oh, you have a broken leg. जैसे आपका अगर पैर टूट गया हो, आप उसका एक्सरे करवाएंगे तो वो बताएंगे डॉक्टर आपका Another पैर टूट गया है। doctor, qualified doctor, takes an x-ray and says, oh, you have a broken leg. और अगर आप दूसरे योग्यमान डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका एक्सरे निकाल कर कहेंगे आपका पैर टूटा है। So it says that bona fide Shiksha Guru, Diksha Guru, they are equal, identical manifestations of Super Soul. कहते हैं दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु परमात्मा के एक समान और बराबर प्रकट रूप होते It हैं। says one Diksha Guru, unlimited Shiksha Gurus. कहते हैं एक दीक्षा गुरु और असीमित शिक्षा गुरु। If they're really bona fide, there should be no difference. अगर वो असल में प्रामाणिक हैं, तो दोनों के बीच कोई अंतर नहीं होगा। So if someone is bona fide Diksha Guru and Krishna is speaking to a bona fide Diksha Guru, he'll tell you exactly what you should do. अगर कोई प्रामाणिक दीक्षा गुरु है, तो कृष्णा उसके माध्यम से आपको वही बताएंगे जो आपसे कृष्णा चाहते हैं। And let's say you go to a bona fide Shiksha Guru, और चलिए कहते हैं कि आप किसी and प्रामाणिक he's शिक्षा गुरु के पास identical जाएंगे, manifestation of Super Soul. That means Krishna will speak exactly the same thing to you that the Diksha Guru spoke to you. और अगर वो भी परमात्मा के एक समान बाह्य प्रकट रूप हैं, तो वो आपको वही निर्देश देंगे जो प्रामाणिक दीक्षा गुरु ने आपको दिए। So bona fide Guru is like a pipe. तो प्रामाणिक गुरु So एक पाइप coming की in तरह, one pipe, going out other pipe. एक पाइप से आके दूसरे पाइप से बाहर So if आता it's है। really coming from Krishna, that instruction will be exactly the same. तो अगर असल में ये कृष्णा से आ रहा है, तो दोनों एक ही निर्देश If देंगे। they're identical, bona fide manifestations of Super Soul. अगर दोनों एक समान प्रामाणिक परमात्मा के बाह्य प्रकट रूप हैं। So in that sense, Guru means both on same platform. इसका मतलब गुरु दोनों ही एक स्तर पे होंगे, Therefore, that instruction will be the same. इसीलिए वो निर्देश एक होंगे। The first Guru is Krishna. He's the supreme Guru, Hari Guru. पहले गुरु कृष्ण है, वो परम गुरु आदि गुरु है, So he's the original Guru, तो वो आदि गुरु है। and then he spoke to the sun god. और उन्होंने सूर्य देव को कहा। If you want to have a perfect Guru, अगर then you आप have to see whether he is speaking on behalf of Krishna. तो अगर आपको कोई पूर्ण गुरु चाहिए, तो आपको ये देखना होगा कि वो कृष्णा की तरफ से बातें कर रहे हैं या नहीं, Or on his own behalf. या स्वयं की तरफ से बातें कर रहे हैं। One who speaks on his own behalf will manufacture. जो स्वयं की कुछ बातें बता रहे हैं, वो कुछ निर्माण करेंगे। So if you're manufacturing, you're concocting, तो आप कुछ बना रहे हैं, आप कुछ मनगढ़ंत कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, he's not Guru. वो गुरु नहीं, He's a rascal. वो एक बदमाश है। One who speaks on behalf of Krishna, he is Guru. जो कृष्णा की बातें बताते हैं, So वो such a है। Guru should be worshipped. तो ऐसे गुरु की पूजा की जानी चाहिए। Prabhupada says, what is tattva? प्रभुपाद बताते हैं तत्व का मतलब क्या होता है। Tattva is described in 3 phases: Vadanti tat, tattva vidas, tattvam yaj jnanam advayam. Tattva jnana is one. तत्व ज्ञान हमेशा एक होता है। So that's Krishna in 3 different
features. कृष्णा 3 अलग-अलग रूपों में। So Guru, according to the capacity of the student, teaches about Brahman, Paramatma, Bhagavan, Shri Krishna. तो गुरु शिष्य की पात्रता के आधार पे उनको ब्रह्मांड, परमात्मा और भगवान की शिक्षा देते हैं। And one who teaches this knowledge of the absolute truth, Tattva Jnana, और जो ये तत्व ज्ञान की शिक्षा देते हैं, he is Guru. वो है गुरु। Otherwise, he's rascal. वरना वो एक बदमाश है। So you must approach a real Guru. तो अवश्य आपको असल गुरु के पास जाना चाहिए। And be hear from them, be trained by them. उनसे श्रवण करके उनसे प्रशिक्षण लेना चाहिए। So does anyone have a point of question so far? क्या किसी का कोई प्रश्न या कुछ बात कहना चाहते हैं? Yeah. So I have a question from yesterday. I'm thinking. Is that done? Jiv Jago. So you are explaining always that without hearing from a Nam Tattva with Guru, one cannot chant Sudhanam. Without hearing, from a Nam Tattva with Guru, you cannot understand Tattva. And if you don't understand Tattva, then you cannot have faith. If you don't understand Tattva and you don't have faith and knowledge, realization, then how you can chant properly? गुरुदेव बता रहे हैं, अगर आप श्रवण नहीं करेंगे तत्वविद गुरु से, तो आपको वो श्रद्धा नहीं मिल पाएगी, दिव्य ज्ञान नहीं मिल पाएगा, तो कैसे आप सही तरीके से जान पाएंगे? So the first point is that, where can we really surrender? तो सबसे पहली बात ये है, Where should we surrender? कहाँ शरणागत कर सकते हैं, कहाँ हमें Who's शरणागत the करनी Tattvadarshi? चाहिए? कौन है तत्वदर्शी? Right? Krishna only knows who's Tattvadarshi. केवल कृष्ण को पता है कौन है तत्वदर्शी। Right? If you reveal yourself to some close friend, तो अगर आप अपने आप को प्रकाशित करेंगे अपने किसी right, करीबी you मित्र के know सामने, who knows everything about you. तो आपको पता है कि कौन आपके बारे में सब कुछ जानता है। No one knows better than you who you revealed yourself to. तो आपसे बेहतर कोई ये नहीं जान पाएगा कि आपने किसके सामने You स्वयं know को who's प्रकाशित किया है। closest to you, आपको isn't पता it? है आपके सबसे करीबी कौन है। So I remember when Gurudev used to say, Krishna knows who is his own man. मुझे याद है मेरे गुरुदेव कहा करते थे, कृष्ण को पता है उनके निजजन कौन है। We don't know who is Krishna's own man. हमें ये नहीं पता कि कृष्ण के खुद के व्यक्ति Because कौन है, everybody's saying they're Krishna's own man. क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि वो कृष्ण के ही व्यक्ति हैं। So how as conditioned soul with polluted mind, intelligence and senses are we going to know who is Krishna's own man? तो कैसे कोई बद्ध जीव तो दूषित मन, बुद्धि, इंद्रिय से समझ पाएगा कि कृष्ण के खुद के व्यक्ति कौन है? So Prabhupada said if you don't depend on Krishna and get that intelligence and faith from Krishna, Chetu Guru Paramatma, then how and why would you fully surrender there? तो प्रभुपाद बताते हैं, अगर आपको ये बुद्धि श्रद्धा नहीं मिल पा रही है चैत्य गुरु परमात्मा से, तो आप कैसे किसी को शरणागत करेंगे और क्यों आप उनको शरणागत करेंगे? I remember when I accepted different gurus. मुझे याद है जब मैंने अलग-अलग गुरुओं No को one स्वीकार explained किया, this to us. किसी ने भी मुझे इन सारी बातों को सिखाया नहीं। So how can you understand even what are you doing? Why are you making the choices that you're making? तो कैसे कोई ये समझ पाएगा कि वो क्या फैसले ले रहा है, क्यों वो सारे फैसले ले रहा है? Then I'm thinking back, I didn't know any of that. I didn't do any of that. That's not how I accepted this person as my guru. और जब मैंने पीछे सोचना शुरू किया, तो मैंने देखा कि इस तरह से मैंने गुरु का चुनाव नहीं किया, इस तरह से मैंने I was not सोचा। depending on Krishna's Paramatma super soul to give me intelligence and faith. तो मैं कृष्ण के ऊपर निर्भर नहीं हो रहा था बुद्धि और श्रद्धा पाने के He लिए। did not order and direct me who I should make as my guru, who I should accept as my guru. आदेश नहीं दिया, दिशा नहीं दिया कि किस व्यक्ति को मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। So then why did I accept someone as my guru? If Krishna did not order and dictate to me that you should accept that person as your guru. तो कैसे मैं किसी को गुरु के रूप में स्वीकार करूंगा अगर कृष्ण ने मुझे आदेश नहीं दिया या मुझे दिशा नहीं दिखाई कि मुझे उस व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करना So चाहिए? then who told you to accept that person as your guru? तो किसने आपको बताया उस व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए?
If it didn't come from Krishna, where do you think it came from? कृष्णा से नहीं आया तो आपको क्या लगता है वो कहाँ और से आया होगा? You get two choices: दो ही विकल्प हैं आपके पास, Krishna कृष्णा or Maya. या माया। So my Gurudev would say, what kind of guru do you want? मेरे गुरुदेव कहा करते थे आप किस तरह Do के you want a चाहते guru हैं? sent by Krishna, आप कृष्णा के द्वारा or do भेजा you हुआ want a गुरु guru चाहते sent by Maya? हैं या माया के द्वारा भेजा हुआ गुरु चाहते हैं? So all we have to do is convince Krishna, Krishna, I don't want a guru sent by Maya. हमें एक ही मात्र कार्य करना है, कृष्णा को ये आश्वस्त करने का प्रयास करना है कि Everybody is saying they're your own man. सभी कह रहे हैं कि वो I don't कृष्णा know के खुद who's के your व्यक्ति own हैं। man. मुझे You नहीं know पता who's आपके your खुद के own व्यक्ति man. कौन है। आपको पता है। But I understand that there's going to be people saying that they are your own man who are actually coming from Maya. लेकिन मुझे ये पता है बहुत सारे लोग हैं जो आएंगे और कहेंगे वो कृष्णा के खुद के व्यक्ति हैं, लेकिन असल में वो माया से आ रहे होंगे। Okay? He's from the village, you know what I mean? गाँव से। I think she's an engineer, technologist, doctor of technology, तकनीक के डॉक्टर हैं वो। the subtle science, the doctor of technology, सूक्ष्म विज्ञान, तकनीक के डॉक्टर। microchips, माइक्रोचिप के, three-dimensional microchips. 3 आयामों वाले माइक्रोचिप्स के। Reading codes. कोड्स को पढ़ सकते हैं वो। What codes are you reading? कौन से कोड्स पढ़ते हैं आप? Maya's codes. माया के कोड्स। So if you know this is what we're up against, isn't it? तो ये चीजें हमारे Everybody's साथ- saying they're Krishna's own man. सभी कह रहे हैं वो कृष्णा के व्यक्ति हैं। Okay, we're just beginning. We have imperfect mind, intelligence, and senses. हमारे अपूर्ण मन बुद्धि Some we understand from Prabhupada, some will be sent by Krishna, some will be sent by Maya. हमें कैसे पता चलेगा कौन कृष्णा से आ रहा है कौन माया से आ रहा है? So wouldn't we be more dependent on Krishna? Krishna, please send me like really nice guru. तो क्या हमें कृष्णा के ऊपर I निर्भर don't रहना know चाहिए who's कि guru. कृष्णा सही गुरु भेजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता असल गुरु कौन है। Everybody's saying they're guru. सभी कह रहे हैं वो गुरु है। Everyone wants to be a guru. सभी गुरु बनना भी चाहते हैं। This person said the other night, Prabhupada already ordered and instructed everybody to be ये guru. व्यक्ति उस रात कह रहा था प्रभुपाद ने सबको आदेश दे दिया है गुरु और बनने के लिए, अधिकार आदेश दे दिया। Right? Wasn't it recording like this? ऐसा वो बातें नहीं कह रहा था। Of course, Prabhupada was saying someday in the future, और बस प्रभुपाद कह रहे थे किसी दिन after the training is complete, जब आपका प्रशिक्षण पूरा हो once you जाएगा, become qualified, जब आप योग्यवान हो but they're जाएंगे, leaving all of that part out. उन सारी बातों को छोड़ And then what दें। is the actual qualification? और असल अधिकार के योग्यता क्या होती है? Right? And then how do we have intelligence and faith to understand whether someone's met that qualification? और हमें ये बुद्धि और श्रद्धा कैसे मिल पाएगी किसी ने उन योग्यताओं And को without पूरा किया है? understanding all of that, why would you surrender them? इन सारी चीजों को समझे बिना कैसे क्यों आप वहाँ And शरणागत how करेंगे? could you fully surrender और them? कैसे आप उनको पूर्ण शरणागत कर पाएंगे? Unless Krishna gives you unflinching faith and intelligence, that's the only way you'll take such a risk. अगर कृष्ण आपको अटूट बुद्धि या श्रद्धा नहीं देंगे तभी आप ऐसा खतरा उठा सकते हैं। Otherwise, okay, I'm fully surrendered, sort of. तो अगर ऐसे कर आप सोचेंगे कि मैं पूर्ण शरणागत करने जा रहा हूँ लेकिन आप कर And नहीं I'm पाएंगे। hearing, sort of submissively hoping that it works. और मैं श्रवण कर रहा हूँ कि हो सकता है विनीत भाव से आशा करता हूँ ये काम कर पाएगा। And I might do it और हो सकता है मैं if it's consistent with my plans and desires. अगर मेरी योजनाएं मेरी इच्छाओं से वो मेल खाएंगी तो। And then I'm going to know the absolute truth. और फिर मैं परम सत्य ऐसे कैसे करके जानता हूँ? How's it possible? ये कैसे संभव है? We're trying to make up by concoction, we're trying to make up our own process. The process is already given. तो हम मनगढ़ंत तरीके से कुछ प्रक्रिया बनाने का प्रयास करें, प्रक्रिया पहले से ही बनाई जा चुकी है। If you want to know me in tattva, means really, actually, then Krishna says, surrender to my representative, Tattvadashi, कृष्ण कहते हैं अगर तुम मुझे तत्व में जानना चाहते हो, सत्य में who जानना has चाहते seen हो, and understands absolute truth. तो मेरे प्रतिनिधि को शरणागत करो जिसने देखा है और समझा है परम सत्य If को। one has bona fide guru, by the mercy of Guru and Krishna, is supposed to know everything. अगर किसी के पास प्रमाणिक गुरु है, गुरु कृष्ण की कृपा से वो सारी चीजें समझ So if सकते you हैं। don't have unflinching faith in Krishna, Guru, Sadhu, and Shastra, why would a bona fide guru tell you to go be a preacher and go make your own man of disciples? तो अगर आपको अटूट श्रद्धा Why नहीं would he send है you there? कृष्ण गुरु साधु शास्त्र में, तो गुरु आपको किसी को क्यों निर्देश देंगे कि आप जाइए और गुरु बन के शिष्य बनाइए? Right? So Prabhupada, he's saying about other night about we're talking about Gaudiya Math. तो प्रभुपाद दूसरे दिन गौड़िया मठ के बारे में बातें बता रहे हैं। And Srila Prabhupada was saying that
his guru was saying that out of all of my disciples, none of you are qualified. और श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि उनके गुरु ने सारे शिष्यों से कहा आप में से कोई भी मेरे शिष्य बनने के लिए योग्य And नहीं। Srila Prabhupada explained, before Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur left, he spoke so many details about so many topics. तो श्रील प्रभुपाद ने बताया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शरीर त्याग करने से पहले बहुत सारे विषयों के ऊपर But he never गंभीरता से बात की। appointed or instructed anyone to be a guru. लेकिन उन्होंने कभी किसी को निर्धारित नहीं किया, निश्चित नहीं किया गुरु बनने के लिए। And Srila Prabhupada, he was saying that actually, factually, none of my godbrothers are qualified to become a guru or a acharya. और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरे गुरु भाइयों में से असल में सत्य में कोई भी गुरु या आचार्य I can show you the योग्य quotes. नहीं। और मैं प्रभुपाद की ये बातें आपको दिखा सकता हूँ। Right? So this idea that Prabhupada knows that they're a branch and that they're also bona fide, qualified representatives of the parampara, that's not true. That's a misconception. कि प्रभुपाद ऐसा मानते थे कि परंपरा के और भी शाखाएं हैं और वो भी प्रमाणिक हैं, लेकिन ऐसे प्रभुपाद ने कोई बातें नहीं की है और ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मैं यहाँ Because Prabhupada, who's representing Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in his Guru Parampara, he's saying, out of all my godbrothers, none of them are qualified to become guru or acharya. प्रभुपाद जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद इस महाप्रभु के परंपरा में प्रमाणिक आचार्य हैं, उन्होंने कहा मेरे गुरु भाइयों में से So कोई भी he's गुरु या आचार्य नहीं है। he's most qualified person to say. तो वो सबसे योग्यवान व्यक्ति हमें ये बताने के लिए। And Prabhupada said, that's why I don't want you to associate with them, और इसलिए प्रभुपाद ने कहा मैं नहीं चाहता कि आप लोग उनका संग करें, because they cannot really help you. क्योंकि वो आपकी असल में मदद नहीं करेंगे। So the bona fide guru in parampara, only he can say, केवल प्रमाणिक गुरु जो परंपरा में है वही ये बातें कह because सकते he's हैं, the most qualified to say. क्योंकि वही सबसे योग्यवान व्यक्ति है इस बात को कहने के लिए। That's why Prabhupada says, if you want to know who is authorized, find out from previous acharya who he ordered and instructed. That's how we got on this conversation. और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बताया था कैसे आपको पता चलेगा किनको अधिकार मिला है कि पूर्व आचार्य के पास जाइए और उनसे पता लगाइए उन्होंने किनको आदेश दिया, अधिकार दिया है प्रमाणिक गुरु। So if we want to make it so cheap that it's like everyone's already received the order and instruction to become guru, तो अगर हम इसको इतने सस्ते तरीके से लेना चाहते हैं, सबको आदेश अधिकार मिल चुका है गुरु बनने के then लिए, where are all these qualified personalities explaining all of these tattvas? तो कहाँ वो सारे योग्यवान व्यक्ति हैं जो ये सारे तत्वों को समझा रहे हैं। So the results don't match up with the speculation that everyone is already ordered and instructed to be guru. तो वो फल मेल नहीं खा रहा इस मनोधर्म से कि सबको पहले ही आदेश मिल चुका है, अधिकार मिल चुका है गुरु बनने का। So it disqualifies the argument. तो उनका बहस खारिज कर दिया। Because if everyone is empowered once they're ordered and authorized, then they would be empowered with purified mind and intelligence and senses to understand the absolute truth. They would be explaining it with realization to us. Where are they? तो अगर उनको अधिकार सशक्तिकरण मिला होगा तो उस अधिकार और सशक्तिकरण के माध्यम से उनको कृपा मिलेगी और वो सत्य का दर्शन कर पाएंगे और सत्य को हमारे सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। तो ये ऐसे लोग कहाँ मौजूद हैं? So this is not so cheap thing. तो Like, ये इतना सस्ता तरीका नहीं है। any questions or points? कोई प्रश्न या कोई बात? Hare Krishna Maharaj. So if fortunately someone receives mercy from Krishna, Guru and Is this Krishna, on? Is it on? Speak a lot closer. Hare Krishna. So Maharaj, if someone fortunately receives mercy of Guru and Krishna and gets divine senses, so can he But if one gets mercy of Krishna, one gets bona fide guru. If one gets bona fide guru, combined mercy, then one can get Krishna. तो अगर कृष्ण की कृपा मिलती है तो उसे गुरु मिलते हैं और अगर उसको गुरु की कृपा मिलती है तो उसे कृष्ण मिल सकते हैं। तो दो कृपा की जरूरत पड़ती है। And the first service is we have to surrender और सबसे पहली सेवा है हमें शरणागत करना and है do submissive oral reception. और विनीत भाव से श्रवण करना है। So if we are just trusting our own material intelligence, mind and senses, तो हम केवल स्वयं के भौतिक मन बुद्धि इंद्रियों पर and we भरोसा think करते we're हैं smart enough and we can understand everything, और हम सोचते हैं हम बुद्धिमान हैं और हम सारी चीजों को समझ सकते हैं, then Prabhupada says you don't need a तो guru. प्रभुपाद कहते हैं आपको गुरु की कोई जरूरत नहीं। But if you realize that
we are not smart enough to understand everything properly, लेकिन अगर आप ये अनुभव कर पा रहे हैं कि आप इतने बुद्धिमान नहीं है कि आप and सारी you really चीजों को want सही to तरीके से solve समझ your सकते हैं problem, और अपनी समस्याओं का आप समाधान करना then चाहते you हैं, need a guru. तब आपको गुरु की जरूरत है। That's why we're approaching the guru. और इसीलिए हम गुरु के That's पास why आते हैं Arjuna surrendered to Krishna. और इसीलिए अर्जुन ने कृष्ण को शरणागत किया। So if you don't have intelligence and faith by Krishna's arrangement, how you can surrender? तो अगर आपको बुद्धि या श्रद्धा नहीं मिली है कि कृष्ण की व्यवस्था में, तो कैसे आप शरणागत कर पाएंगे? And then how will you trust that if you ask a question that you will receive, the proper, correct answer? और कैसे आप ये भरोसा कर पाएंगे कि जब आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको सही उत्तर मिलेगा? How will you take those answers or instructions as absolute? कैसे आप उन निर्देशों या उत्तरों को परम सत्य के रूप में स्वीकार कर पाएंगे? We need an absolute answer. हमें एक परम सत्य। That's why Arjuna said, I already tried to speculate some answer. इसलिए अर्जुन ने कहा, मैं पहले ही मनोधर्म करके कुछ उत्तर पाने का And प्रयास nothing करूंगा worked. और कुछ भी काम नहीं आया, Nothing materially or ना तो spiritually. कुछ भौतिक ना आध्यात्मिक। So now I'm fully surrendering to you, Krishna, तो मैं आपको पूर्ण शरणागत कर रहा हूँ कृष्ण, and I'm accepting you as my spiritual और master. मैं आपको अपने गुरु के रूप में So स्वीकार कर रहा kindly हूँ। tell me decisively, specifically, what should I do? तो कृपया करके मुझे निश्चित रूप से और विशेष करके बताइए। So he क्या करने की admitted his जरूरत है? defeat, तो पहले उन्होंने अपनी हार स्वीकार की and he was desperate enough to want to solve his problem. और वो इतने गंभीर थे अपनी समस्याओं का समाधान करने Therefore, के he लिए, surrendered to his spiritual master. इसीलिए उन्होंने गुरु को शरणागत किया। Then he was all ears. तो वो सारे कानों के साथ सुन रहे थे। Please tell me decisively, specifically, what should I do? Now that means you're all ears, right? कृपया मुझे बताइए विशेष करके निश्चित रूप से कि मुझे क्या करना चाहिए। इसका मतलब आप सारे कान लगाकर सुन रहे हैं। Then we can do submissive our reception. तब हम विनीत भाव से श्रवण कर सकते If हैं। you're like, okay, let's see what he says, आप कहेंगे चलिए देखते हैं क्या कहना and है, let's see if it's convenient, और चलिए देखते हैं इससे मुझे कुछ सुविधा let's see if होगी, it fits with my life's idea and plans. मेरे जीवन के विचार या योजनाओं के साथ ये मेल खाता है। That's not spiritual submissive our ये reception. आध्यात्मिक रूप से विनीत भाव का श्रवण नहीं हुआ। And because of those gross, subtle material attachments, Krishna will hide himself from you. और इस तरह के स्थूल या सूक्ष्म आसक्तियों की वजह से कृष्ण अपने आप को छुपा कर रखेंगे हमसे। Because we're coming in a selfish way that we want some type of gross or subtle material sense gratification. क्योंकि हम अपने स्वार्थ के साथ आ रहे हैं, ये दिखाते हुए कि हमको स्थूल या सूक्ष्म We're not so serious or sincere to want to fully surrender to हम Krishna. इतने गंभीर एकनिष्ठ नहीं है कृष्ण को पूर्ण शरणागत करने के लिए। So why will Krishna send you a bona fide guru? तो क्यों कृष्ण आपको एक प्रमाणिक गुरु भेजेंगे? So if we really don't want to hear from Krishna, अगर हम असल में कृष्ण से सुनना नहीं चाहते, why will Krishna send you a guru who is a pure via medium of Krishna? क्यों कृष्ण आपको ऐसे व्यक्ति भेजेंगे जो कृष्ण के शुद्ध माध्यम है? Right? So if you really want to hear from Krishna, then Krishna will send you a pure via medium whereby he can speak through that guru. तो अगर आप असल में कृष्ण को सुनना चाहते हैं तो कृष्ण एक शुद्ध माध्यम को आपके पास भेजेंगे जिसके माध्यम से वो आपसे बात कर पाएंगे। But if we are not perfectly anxious to hear from Krishna, why would Krishna send us a pure via medium? लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से व्याकुल नहीं है कृष्ण से सुनने के लिए, तो क्यों कृष्ण अपने शुद्ध माध्यम को हमारे पास भेजेंगे? So who gets a pure via medium spiritual master तो किसको वो शुद्ध माध्यम आध्यात्मिक and realizes that, और कौन उसका साक्षात्कार कर except पाता है? one who sincerely, seriously wants to surrender to Krishna? वही कर सकता है जो गंभीरता से एकनिष्ठता से कृष्ण को शरणागत Then करना you have चाहता the है। greatest opportunity तब आपके पास सबसे बड़ा मौका मिलेगा प्रभुपाद बताते to हैं, hear from Krishna. कृष्ण को श्रवण कर पाने का। So everyone's trying to figure out who's a guru सब ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरु कौन है, without trying to figure out whether we are convinced and convincing to Krishna that we want to fully surrender to him. ये पता लगाए बिना कि हम खुद आश्वस्त हैं और कृष्ण को आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम उनको पूर्ण शरणागत सेवा करना And चाहते if हैं। we're not convinced, if we're not convincing Krishna, then what kind of guru do you have? तो अगर हम खुद आश्वस्त नहीं है और कृष्ण को हम आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कैसे गुरु मिले हैं? That's a pure via medium of Krishna, क्या ये कृष्ण का शुद्ध माध्यम है who's going to tell you exactly what Krishna wants you to do? जो आपको बताएगा निश्चित रूप से कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं? Then it just becomes more तो bewildering. फिर आप और ज्यादा भ्रमित हो जाएंगे। Otherwise, what happens is then we go, okay, I heard from this Maharaj, and then I heard from this other Maharaj, and then I heard from this Mataji, and then I heard from this Prabhu, and then I asked my father, then I asked my mother, I asked my wife, right?
And then we're just getting everyone's opinion. वरना हम क्या करते हैं, हम पहले जाते हैं हम इस महाराज के पास, फिर उस महाराज के पास, फिर उस माता जी, उस प्रभु के पास, पिताजी के पास, माता के पास, दोस्त के पास, और सबके हम विचारों को एक साथ जमा करते हैं. So everyone's speculating. सभी मनोधर्म You're कर रहे हैं. speculating. आप खुद मनोधर्म कर You रहे हैं. gather all the speculation, और सारा मनोधर्म your आपके साथ जमा attitude, किया. your और speculation, खुद का मनोधर्म make उसमें a जोड़ा. big speculation soup. और एक बड़ा मनोधर्म का subject, आपने सूप बनाया. right? And then how you're going to get an absolute answer? तो कैसे आपको एक सही उत्तर मिलेगा? I remember one time I was talking to one devotee. He said, I have 5 shiksha gurus. याद है, मैं मेरे भक्त से बात कर रहा था, उसने कहा मेरे पास 5 शिक्षा गुरु हैं. I was like, 5? मैंने कहा 5? He's like, yeah. मैंने कहा हाँ. Prabhupada said you can have 1 diksha guru, unlimited shiksha guru. So I get 5 shiksha gurus. कि आपके पास एक दीक्षा गुरु और राशि में शिक्षा गुरु हो सकते हैं, तो मेरे पास 5 शिक्षा गुरु हैं. So I asked him one question. तो मैंने उनको एक सवाल I पूछा. said, what if one guru says you should be a teacher? क्या होगा अगर आपको एक गुरु कहे आपको शिक्षा And the देना next है? one says you should be a और businessman. दूसरा गुरु आपको कहे आपको व्यापार करना And the चाहिए. next one says you should be a brahmachari. और तीसरा गुरु आपको कहे आपको ब्रह्मचारी बनना And the चाहिए. next one says you should live in India. और अगला गुरु कहे आपको And the भारत next करना one says you चाहिए. should preach in America. और उसके बाद वाला गुरु कहे आपको अमेरिका में So प्रचार how करना will you चाहिए. know absolutely what Krishna wants you to do? आपको कैसे पता चलेगा कि कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं? In his mind, like literally I could see his brain like blowing up. Pieces of his brain. तो मैंने ऐसा देखा कि उसका जो है सर फट गया है और उसके सर के टुकड़े हो रहे हैं. स्लो मोशन. Like an explosion. जैसे कोई धमाका हो गया उसके सर में. Metal coming apart. जैसे कुछ टुकड़े जो है अलग हो रहे हैं. Like a visual. ऐसे लग रहा है कुछ मुझे ऐसे दृष्टि दिखाई दे रही है. Because it sounds good, yes, I have 5 shiksha gurus. ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास 5 शिक्षा गुरु हैं. Many gurus are helping me and giving me advice and giving me some knowledge and giving me their opinions. Right? That's not guru. बहुत सारे गुरु मुझे सलाह दे रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मेरी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं. ये असल गुरु नहीं है. Guru means what does Krishna want? गुरु का मतलब है कि कृष्णा क्या चाहते हैं. And if you are not convincing Krishna that you absolutely need to know what he wants for you, you don't need a guru. Krishna will not send you a guru. अगर आप पूर्ण रूप से कृष्णा को आश्वस्त करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि आप बिल्कुल व्याकुलता से जानना चाहते हैं कि कृष्णा आपसे क्या चाहते हैं, तो कृष्णा आपको गुरु की जरूरत नहीं है. कृष्णा ना तो आपको गुरु भेजने वाला है. And then the pure body reading of Krishna comes and gives his, Krishna wants you to do like this. She's like, well, thank you, Maharaj, for your, thanks for your opinion. वरना कृष्णा अपने शुद्ध माध्यम को भेजेंगे और वो आपको बताएंगे कि I'll कृष्णा आपसे mark क्या that चाहते down, हैं. I'll write that down, that's like a nice opinion. और आप कहेंगे महाराज आपका विचार बहुत अच्छा है, मैं इसको लिख लेता हूँ. It's significant. आपने महत्वपूर्ण सलाह दी है मुझे. But I'm still seeking, लेकिन मैं अभी भी खोज रहा I'm हूँ. still searching, मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ. I'm still, guessing, मैं अभी भी अंदाजा लगा रहा हूँ. speculating. मनोधर्म कर रहा हूँ. This is not guru. ये गुरु नहीं है, गुरु तत्व नहीं है. And if you're thinking like that, no guru taught you guru tattva. और अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं, इसका मतलब किसी गुरु ने आपको आज तक गुरु तत्व सिखाया नहीं. Why you're doing all of that? Didn't your guru tell you this is not guru tattva? आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या आपके गुरु ने आपको सिखाया नहीं कि ये गुरु तत्व Why नहीं है? didn't he teach you that? क्यों उन्होंने अभी तक आपको ये बात Why सिखाई? don't you understand that principle? क्यों अभी तक आप सिद्धांत ही समझ नहीं पाए हैं? Why don't you understand what is Diksha Guru, Shiksha Guru? अभी तक आप क्यों नहीं समझ पाए कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का मतलब क्या होता है? It's scientific. ये बहुत वैज्ञानिक It's है. not, you're speculating, you get everyone else's speculation, and then somehow or other you mix it all together, you get an absolute answer. ऐसा नहीं कि आप मनोधर्म कर रहे हैं और बाकी लोगों का मनोधर्म एक साथ जमा कर रहे हैं और उससे कुछ एक परम सत्य आपको मिलने. Even the Ritviks, I asked them, well, how do you know what Krishna wants you to do? So it's in Prabhupada's books. यहाँ पे मैं ऋत्विक से पूछता हूँ कि आपको कैसे पता चलता है कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं? वो कहते हैं मैं प्रभुपाद की किताबों से हम पता लगाते हैं. And I said, well, Prabhupada says thousands of instructions there in his तो books. मैं कहता हूँ प्रभुपाद की किताब में तो हजारों हजार निर्देश हैं. Which one of those is meant for you? उनमें से कौन सा निर्देश आपके लिए बना है? And she was like, well, yeah, that's a good question. और उनको मन में आया कि ये तो बहुत She's like, I अच्छा just प्रश्न है. I just move the pages and then I just stick my finger somewhere. उन्होंने कहा मैं सारे पन्ने पलटाती हूँ और फिर कहीं एक अपना उंगली जो है किसी And एक then पन्ने you're पर taking that as absolute. और उसको हम अपना जीवन में परम सत्य मान लेते हैं. And so I'm open, it's like that. तो कहते हैं मेरा हम अपना मन खुला रखते हैं. So really you don't know absolutely what Krishna wants you to do. मतलब वो असल में नहीं जानते हैं कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं. She's like, not really. मतलब असल में नहीं जानते हैं. And I said, so what do you do? तो फिर हम कहते हैं फिर आप She क्या said, I करते हैं? asked my husband. फिर कहते हैं मैं अपने पति से पूछती हूँ. So I said, so your husband is your मैंने guru? कहा इसका मतलब आपके पति आपके गुरु हैं.
They don't understand Guru Tattva. उनको गुरु तत्व की समझ नहीं है, Because the Guru never taught them. क्योंकि गुरु ने कभी उनको सिखाया नहीं। So how is the Guru a Guru and not teaching what is Guru Tattva? तो कैसे कोई गुरु गुरु है और गुरु तत्व नहीं सिखाता? It says one who knows the absolute truth, he'll explain all of these tattvas. कहते हैं जो इन परम सत्य को जानता है वो Isha आपको सारे तत्व Tattva, knowledge समझाएगा। of absolute truth, Krishna, ईश्वर तत्व, परम सत्य Jiva का ज्ञान, Tattva, कृष्ण का ज्ञान, Maya जीव Tattva, तत्व, माया Guru तत्व, गुरु Tattva, तत्व, Paramatma Tattva. परमात्मा तत्व। And without understanding all of those tattvas, then how will you have a proper understanding and how will you have sufficient faith? तो इन तत्वों को समझे बिना कैसे आप सही समझ पाएंगे और सही श्रद्धा पाएंगे? And how you get free from your mental speculation? और कैसे आप खुद के मनोधर्म से मुक्त हो पाएंगे? That's what Maya is catching you. Mental speculation means mental concoction. और वहाँ माया ने आपको पकड़ कर रखा है। मनोधर्म मतलब मन And then you get some emotion over some mental concoction. You're like, oh, Krishna's telling me in the heart. You're pounding the heart. It's coming from Krishna. और जब आप भावुक हो जाते हैं कि हाँ मुझे कृष्णा हृदय से ये करवाना चाहते हैं और मुझे महसूस हो रहा है भगवान मुझे ये So चाहते now हैं। you have pride and arrogance, आपके अंदर दंभ है, false अहंकार है, ego, under modes of material nature, और प्रकृति के गुणों के we're अधीन है। blind and we don't even know it. और हम इतने अंधे हैं कि We're हमें पता भी addicted to नहीं है कि mental हम उसके पास हैं। speculation. मनोधर्म करने की हमें आदत लगी हुई We're है। groping in the dark. अंधेरे में हम टटोल रहे हैं। We don't know what's real and what's unreal. हमें पता ही नहीं क्या We असली don't है, know क्या what's नकली है, truth, what's क्या untrue. सत्य है, क्या असत्य है। And we're just going to figure it out on our own. हम कह रहे हैं हम खुद से पता लगाएंगे सब कुछ। That's a recipe for disaster. मतलब आपदा की हम There'll be no पकवान बनाते हैं। relief. कोई हमें मुक्ति There'll नहीं be मिलेगी। no freedom for mental speculation. मनोधर्म से कोई आजादी नहीं Maybe मिल पाएगी। this, maybe हो that, सकता है maybe ये हो here, सकता है maybe वो, there, हो सकता है यहाँ, हो maybe सकता this है service, maybe that service, सकता है ये सेवा, हो maybe सकता है वो married, सेवा। maybe not married, हो सकता है शादी maybe करूं, that शादी there, maybe नहीं not करूं। that there, हो सकता है maybe वहाँ have a रहना child, चाहिए, maybe not have a child, हो सकता है maybe अच्छे करने this चाहिए, job, अच्छे नहीं maybe not करने do this चाहिए। job. हो सकता है ये नौकरी करनी चाहिए, ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से असीमित रूप से, Endless. असीमित रूप से How you get free from this mental कैसे speculation? आप इस मनोधर्म से मुक्त हो पाएंगे? Unless you absolutely know you cannot get free from that mental जब तक speculation. आप पूर्ण तरीके से ये नहीं जान जाते कि आप इस मनोधर्म से मुक्त नहीं हो Then पाएंगे, no peace of mind. कोई मन की शांति नहीं, No peace of mind means no कोई मन happiness. की शांति नहीं, इसका मतलब कोई सुख नहीं। But if you think you got it all figured out, लेकिन अगर आप सोचते हैं आप सब and you कुछ don't पता think लगा you लिया, got a problem, और आप सोचते हैं आपके पास कोई then probably समस्या नहीं you है, don't need a guru. बात कहते हैं फिर इसका मतलब गुरु क्या You're कर acting सकते as हैं? your own guru. आप खुद के गुरु बने हैं। Oh Maharaj, can you give me your opinion? तो महाराज क्या आप अपना विचार मुझे बताएंगे? For what? किसके लिए? So you can add to your soup, your sabji of mental speculation? क्या आपने ये मनोधर्म के सब्जी में उसको मिलाने के लिए, You're going to mix it all together इस सबको एक साथ मिलाने and के come लिए, with an absolute और answer? सोचते हैं उससे अब आपको सबसे सही उत्तर मिल जाएगा। This is only for people who absolutely want to know what Krishna wants you to do. If that's not your interest or concern, this means nothing to you. It's not useful to you. ये उन लोगों के लिए है जो पूरे सही तरीके से जानना चाहते हैं कृष्णा उनसे क्या चाहते हैं। अगर किसी को इसमें दिलचस्पी नहीं है तो ये सारा जानकारी उन लोगों के लिए बिल्कुल Then भी go नहीं on है, speculating and trying to figure it out yourself. क्योंकि फिर आप स्वयं से मनोधर्म करके पता लगाने का प्रयास करें और देखिए आप कितना सही तरीके से When you're काम कर रहे हैं। done speculating, और जब आप मनोधर्म करके and थक you're जाएंगे done, groping in the और dark, अंधेरे में भटकते हुए जब आप थक and you're जाएंगे done getting reactions of bad और decisions, सारे गलत फैसलों का फल भुगत के आप थक जाएंगे, then you'll look to surrender to Krishna. तब आप ढूंढेंगे कैसे मैं कृष्णा को शरणागत कर सकता हूँ। Not before that. उससे पहले आप नहीं करेंगे। And if we don't surrender to Krishna, why do you think that Krishna will send you a bona fide guru? अगर आप कृष्णा को शरणागत नहीं करेंगे तो क्यों आप सोच रहे हैं कृष्णा को प्रमाणिक गुरु भेजने वाले हैं? Then where's your answer coming from? यानी कि आपका उत्तर आपको कहाँ से मिलेगा? Is it coming from Krishna? या वो कृष्णा Or से is it आएगा coming from या Maya? वो माया से आएगा? Well, sometimes we get it right and sometimes we don't. कभी कभी हम सही उत्तर देंगे, कभी कभी हम गलत उत्तर देंगे। Okay, if you want that kind of a guru, तो अगर आपको ऐसा गुरु चाहिए go for तो it. जाइए See उसके what पीछे। results you get out of it. देखिए आपको क्या फल मिलता है। See for yourself. स्वयं से अनुभव लीजिए। Sometimes people come and say, I want to go to this Maharaja, that Maharaja. I said, you have faith that he'll help you? They said, yeah, I think so. Okay, go. कभी कभी कुछ लोग कहते हैं मैं उस महाराज के पास जाना, तो उस महाराज के पास मैं कहता हूँ आपको श्रद्धा है वो आपकी मदद कर पाएंगे? वो कहते हैं हाँ, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल चाहिए। See if it works. देखिए वो काम If करेगा। it works and you're happy, God bless you. अगर वो काम करता है आप सुखी होते हैं तो भगवान If आपको it भला करेगा। doesn't work and you're not satisfied, तो अगर आप वो काम नहीं and you करता, don't आप feel संतुष्ट shelter नहीं होते, protection, आपको आश्रय रक्षण and महसूस you're not नहीं free होता, from mental आप मनोधर्म से speculation, मुक्त you're नहीं हो पा still, रहे हैं, you're sick of not knowing what to do and not to do, आप पूरी तरह से थक चुके हैं ये बात को नहीं समझ के कि then आप come कुछ back.
तो फिर आप वापस आ then जाएंगे, we'll talk again. तो हम फिर से आगे बातें करेंगे। Simple. बहुत सरल है ये। Maharaj, if someone fortunately like receives instruction from Krishna by a bona fide spiritual master, and still he faces a lot of challenges to do his service, and a lot of problems comes in the way. So You're is having it- challenges and problems because you don't know what Krishna wants you to do. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि अगर कुछ कृष्ण की कृपा से कृष्ण के निर्देश मिल पाते हैं प्रमाणिक गुरु के माध्यम से, और बहुत सारी चुनौतियां समस्याएं आती हैं, गुरुदेव बता रहे हैं अगर आपको पता नहीं है कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं, जो चुनौतियां परेशानियां आपके सामने आ रही हैं, So you can't just assume, oh yes, what I'm doing that came from Krishna and Guru. तो आप खुद से ये नहीं सोच सकते हैं कि जो मेरे सामने आ रहा है ये असल में कृष्ण से आ रहा है और प्रमाणिक गुरु से आ रहा है। So we're just assuming तो that. हम बस आकलन कर रहे हैं And then उसका। all these problems are coming. और जब सारी समस्याएं आ And रही then we're हैं, saying, why are these problems coming if it came from Guru and Krishna? फिर हम कह रहे हैं ये समस्याएं इतनी क्यों आ रही है, ये Well, who गुरु और said it कृष्ण के came from निर्देश Guru and है। Krishna in the first place? तो पहले आपको बताया किसने कि ये गुरु कृष्ण के निर्देश है? That's the first. ये सबसे पहला सवाल। Why just assuming? आप खुद से क्यों सोच रहे हैं ये गुरु कृष्ण से आ रहा है? You didn't get absolute answer. आपको अभी तक परम सत्य मिला नहीं है, You're not fully surrendered, not trusting आपने Krishna. अभी तक पूरा शरणागत किया So नहीं है। why did he give you an कृष्ण को absolute भरोसा- answer? तो आपको कृष्ण को So भरोसा है whatever नहीं, problems, क्यों आप परम difficulties you're सत्य देंगे? having, that's because you're not knowing what Krishna wants you to do and you don't know how to do it. क्योंकि अगर मुश्किलें समस्याएं आ रही है इसका मतलब आपको पता नहीं है कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं, आप कृष्ण को शरणागत करना नहीं चाहते। So if you like that lifestyle, तो अगर आपको इस तरह का जीवन अपना पसंद है then continue it. तो जारी रखिए उसको करना। If you don't like the results of that lifestyle, तो अगर आपको उस जीवन शैली का फल पसंद नहीं आता, then maybe we think about more seriously surrendering to तो हो Krishna सकता है हम सोचना शुरू करेंगे कैसे मैं और गंभीरता से कृष्ण को and शरणागत get the करूं, real relief. और असल मुक्ति मुझे The राहत real मिल answer. सके, असल उत्तर कैसे मुझे मिल पाएगा। So why are you having troubles and challenges and problems? It's not because you're fully surrendering to Guru and Krishna. तो क्यों आपके सामने मुश्किलें समस्याएं परेशानी आ रही है, इस वजह से नहीं कि आप अपने गुरु कृष्ण को पूर्ण शरणागत किया है, It's because we're not surrendering to Guru and आपने Krishna. गुरु कृष्ण को शरणागत नहीं किया है, इस वजह से आ रहे हैं In most cases. ज्यादातर समय में। Somebody else? कोई अन्य? Yeah. Is this helping you? Does it make sense? मदद हो रही है, इस बारे बातों का कोई मतलब बनता है It making sense? क्या, इसका मतलब कोई मतलब बन पा रहा है? I'm really a bad person, don't listen to me. मैं बहुत ही खराब आदमी हूँ, मुझे मेरी बातें नहीं सुनना, He's not politically correct. राजनीतिक रूप से सही बातें नहीं करता हूँ। So as long as you stay politically correct, then you could be in nice standing in institution. तो जब तक आप राजनीतिक रूप से सही बातें करेंगे तो आप संस्था में सही स्थान में बने रह सकते हैं। As soon as you try to correct if there's some mistake or misunderstanding, they cannot tolerate this too. और जैसे ही आप कुछ सही करने का प्रयास करेंगे, कुछ गलतफहमियां हैं, कुछ गलतियां हुई That's हैं, unacceptable. तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। So you make the decision who you think is giving you the honest answer. तो अब आप फैसले लीजिए कौन आपको ईमानदारी से सही उत्तर दे रहा है। They might be unpalatable. हो सकता है वो सत्य It उत्तर might ना not be हो, politically correct according to the institution. राजनीतिक रूप से सही बातें ना हो संस्था के आधार पे। I remember they made me a zonal secretary, मुझे याद है मुझे एक बार जोनल सेक्रेटरी बनाया गया and I would go to the meetings, और मैं फिर बहुत सारे मीटिंग्स में जाता था and they would be discussing on some topic, और वहाँ कोई विषय के ऊपर चर्चा होती थी and then they would just immediately jump for the vote. और फिर तुरंत वहाँ पे मतदान शुरू होता था And I would raise my hand like, shouldn't we have more information before we vote? और मैं हाथ ये खड़ा उठाता था, पूछता था कि हमें पहले पूरी तरह से चर्चा करनी चाहिए इससे पहले कि Otherwise, उसमें मतदान what शुरू are we करें, actually voting on? वरना हम किस चीज के ऊपर मतदान करें। And then they would get disturbed with me. और फिर वो मेरे साथ परेशान होने लगते And I थे would say, if you're asking for my vote, I have a couple questions. I'm trying to understand what is the reality of the situation. तो अगर आप मुझसे मेरा मतदान मांग रहे हैं तो मैं बस आपसे लोगों से यही पूछ रहा हूँ कि हमें जिस चीज के लिए मतदान करनी है उसकी सच्चाई And क्या I'll है, give you my honest, opinion, और फिर मैं अपनी ईमानदारी से अपना विचार my रखूंगा understanding. And मेरी you can समझ। take it or not. और आप उसको स्वीकार करें या And they नहीं। said, this guy's a troublemaker. तो उनको लगा ये व्यक्ति हमारे लिए परेशानी खड़ा He's है, asking too many ये कुछ questions. ज्यादा सवाल उठाता है। So basically, they were just expecting me that if you want this post as a zonal secretary, तो
मूल रूप से मुझे ये चाहते थे, अगर आप ये जोनल सेक्रेटरी You got to बने understand रहना what these चाहते हैं, people are trying to do here and just agree. You just raise your hand and say yes. आपको कुछ भी समझने का प्रयास नहीं करना है ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको बस अपना हाथ उठाना है और बस हामी मिलानी है। So after a couple of those meetings, I said I don't want to be zonal secretary. तो ऐसे कुछ मीटिंग्स करने के बाद मैंने फैसला लिया मैं जोनल सेक्रेटरी नहीं रहना It's a चाहता, waste of time. समय की बर्बादी There's है, nothing spiritual यहाँ about it. कुछ भी इसमें आध्यात्मिक बातें नहीं हो रही हैं। I'm wasting 95% of my energy and time on things that are not actually spiritual. 99% मैं अपना समय और शक्ति खर्च कर रहा हूँ उन चीजों के प्रति जो असल में आध्यात्मिक Well, नहीं it's a religious institution. What do you mean it's not spiritual? है। और ये धार्मिक संस्था है, कैसे आप बात कर रहे हैं, ये कोई आध्यात्मिक बातें नहीं है। So I'm sorry. Why does Prabhupada say multiple times in his books What did he say? that its spiritual life is actually very easy or something like that? It's very simple. Yeah, we're not easy, right? So because we're not easy, we're not simple, then it's very difficult. प्रभुपाद ने कई बार अपनी किताबों संख्या में कहा है कि आध्यात्मिक जो बहुत सरल है, बहुत आसान है, तो गुरुदेव बता रहे हैं क्योंकि हम सरल और हम आसान नहीं है, इसीलिए हमारे लिए मुश्किल हो रहा है और कठिनाई आ रही है। Because of the stupid mind, क्योंकि हमारा बेवकूफ मन we है, become so complicated, हम इतने जटिल so बने हुए हैं, इतने contaminated, दूषित हैं, so disturbed, इतने परेशान रहते हैं, we cannot easily do it. हम आसानी से Because Maya, sinful reactions, not allowing us to easily understand it or be able to execute it. माया पाप कर्मों का फल हमें अनुमति नहीं दे रहा चीजों को सही तरीके से समझ पाने के लिए या करने के लिए। So the problem is not from Krishna or Guru or the process side, the problem is from our side. तो समस्या कभी कृष्णा गुरु या इस प्रक्रिया पे नहीं है, समस्या हमारे ऊपर है, So there's a हमारे lack साथ of simplicity. क्योंकि हमारे अंदर सरलता की कमी है And because we're not so simple, we cannot hear properly. और क्योंकि हम सरल नहीं है, हम सही तरीके से सुन नहीं Because पाते we're just listening to our own mind. क्योंकि हम केवल अपने मन को सुनते We're रहते हैं distracted. जो भटका हुआ है। So because of that distraction, we don't hear properly, we misunderstand everything. इसके भटकते रहने की वजह से हम सही तरीके से सुन नहीं पाते, हम चीजों को गलत समझ बैठते हैं And therefore, we cannot develop our faith और इसीलिए हम श्रद्धा नहीं पाते हैं because it's all based on misunderstanding, misconception. क्योंकि ये सारी गलत फहमियों पे और गलत समझ पे And then without faith, we cannot have strong determination to practice devotional service. और श्रद्धा के बिना हमारा दृढ़ निश्चय नहीं आएगा भक्ति का अभ्यास करने There's so many doubts, so many demons of doubt are sitting क्योंकि there. बहुत सारे संदेहों के असुर हमारे अंदर बैठे हुए हैं। So if you go to Krishna, Krishna is Madhusudana, he's the killer of the Madhu demon. But then you're listening, then Krishna as a guru defeated the demons of doubt inside of Arjuna. तो कृष्ण उनका नाम मधुसूदन, मधु नाम के असुर को उन्होंने अंत किया। तो अगर आप कृष्ण को सुनेंगे तो हमारे अंदर जो संदेहों के असुर हैं कृष्ण उन सबको मार देंगे। But if we cannot hear, लेकिन अगर हम सुन नहीं पाएंगे, we're not, absolutely anxious and greedy to hear, हम पूरी तरह से व्याकुल और लोभी नहीं है सुनने के लिए, and we're not able to properly understand how to hear without this stupid mind and mental speculation, और हम उस तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं, कैसे हम अपने बेवकूफ मन और मनोधर्म के बजाय then the effects of the hearing will not manifest. तो श्रवण का प्रभाव हमारे अंदर प्रकट नहीं होगा। Just go, in one ear, out the other ear, एक कान से जाएगा दूसरे कान से बाहर निकल जाएगा, or just hit some steel and just bounce down, never enter inside. जैसे स्टील से कुछ बात चीजें टकरा के वापस हार्ड हो जाती हैं। तो ये हमारा सर बहुत भारी हो चुका है। Some devotees were saying to Prabhupada, Prabhupada, you should stay for, 100 years. कुछ भक्तों ने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद आपको 100 सालों तक रहना चाहिए। And Prabhupada was saying, yes, I could stay for 100 years. प्रभुपाद ने कहा हाँ मैं 100 साल तक रह सकता हूँ। But these people are so hard-headed. लेकिन इन लोगों का सर इतना कड़ा है, सख्त है। Then Prabhupada left early. कि प्रभुपाद ने पहले ही And सर same with Bhaktisiddhanta Saraswati. और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ भी ऐसा ही हुआ। Because they just get so exhausted क्योंकि वो इतने थक चुके थे and so fed up और इतने हताश हो चुके थे that they just do the best they can and then Krishna takes them out of there. कि वो जितना श्रेष्ठ कर सकते उन्होंने किया और कृष्णा ने उनको यहाँ से ले गए। So that's what means preaching in Kali Yuga. तो ये है कलयुग में प्रचार To करना, the Varna Sankara. वर्ण संकर लोगों को प्रचार करना,
to the Kalau Shudra Sambhava, कलाव शुद्ध संभव लोगों को प्रचार to the worst and Jagai and Madai, Prabhupada called us. प्रभुपाद कहते हैं जगाई और मधाई से भी घिरे हुए हैं Jagai and Madai, they got mercy and changed their life and consciousness. Why aren't you guys changing your life and consciousness? जगाई मधाई अपने जीवन को परिवर्तित करके अपनी चेतना बदल ली आप लोग अपने जीवन को बदल कर चेतना परिवर्तित क्यों नहीं कर रहे हैं So Prabhupada said, that means you're worse than Jagai and Madai. प्रभुपाद कह रहे हैं इसका मतलब आप जगाई मधाई से भी घिरे हुए हैं आप लोग So we have a Himalayan, Gurudev Srila Bhagavan Maharaj, we have Himalayan mountains of thick layer of sinful reactions. श्री भगवान साहब बताते थे कि हमारे अंदर हिमालय पर्वत जैसी मोटी परतें हैं पाप कर्म के And all of this sinful reaction is causing so much tamagun, so much ये ignorance. सारे पाप कर्म का फल हमारे अंदर बहुत सारा अज्ञान तमोगुण पैदा कर रहा है Then it just makes all this thick layer, makes the heart like a stone. और ये सारी मोटी परतों ने हृदय को एक कठोर पत्थर की तरह बना दिया है This is the problem. ये है समस्या So without Mahaprabhu's mercy, he can melt the stone. तो महाप्रभु की कृपा से वो पत्थर जैसे हृदय को पिघला That's the only chance or hope we have. यही एकमात्र मौका But हमारे somehow पास one of these personalities decide to shower causeless mercy on us किसी तरह से ऐसे व्यक्ति फैसला लेते हैं हमारे ऊपर अहेतु की कृपा करने के लिए हमें शुद्ध करने के लिए and melt the stone-like heart. और ये पत्थर जैसे हृदय को पिघलाना चाहते हैं What is our sadhana? What kind of sadhana can we do? हम किस तरह की साधना कर पाएंगे So mercy required. कृपा की जरूरत है Now, how do we act in such a way, in a pleasing way, in order to get mercy? That's the whole secret of success. तो अब हम किस तरह से व्यवहार करें जो उनको आनंद दे पाए यही अब सफलता का रहस्य है We're trying to figure it out. We're trying to do it ourselves. हम खुद से पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं खुद से करने का प्रयास कर रहे हैं Trying to work it out. काम कर I रहे हैं just पूरा। need some space. कुछ हमें थोड़ी समय दो जगह जाए For what? I gotta figure this out. ताकि मैं खुद पता लगा सकूं All right, go on a deserted island in the middle of the Pacific. तो एक खाली Trying to figure it out. एक खाली द्वीप में प्रशांत महासागर में जाके वहां पर बैठ के पता लगाने का प्रयास कीजिए So it's simple for the simple-hearted. तो सरल हृदय वालों के लिए बहुत सरल है And unfortunately, we've shown up with a lot of baggage. और दुर्भाग्य से हम बहुत सारा बोझ लेकर आए हैं Thick layers, Himalayan mountains. मोटी परतें हिमालय पर्वत के जैसी So without special mercy, तो बिना विशेष कृपा के causeless mercy of Krishna's devotees, कृष्ण के it भक्तों will को not be possible. ये संभव नहीं है That's the only last hope we have. यही हमारी एकमात्र आखिरी But if we don't realize that's our situation, लेकिन अगर हम अनुभव नहीं कर पा रहे हमारी and we स्थिति think का we're fine, और हम सोचते हैं and हम we बहुत get it all अच्छे figured ठीक है और out, हमने and सारी we're सब पता working लगा ली out, और सब भी कुछ अच्छे से चल रहा है we didn't even come to the reality of even our own position of foundation. हम स्वयं की भी सच्चाई को या स्थिति को अभी तक समझ नहीं पाए What to speak of acting in a way to deserve mercy? तो इसका क्या कहना कि हम ऐसा व्यवहार करें कि हम कृपा के लायक बन सकें Is it true? क्या ये सत्य है I think so. मुझे ऐसा लगता है And I'm speaking from realization, और मैं अपने साक्षात्कार से बता रहा हूँ not theoretical. ये कोई मौखिक बातें नहीं है You look tired. आप लोग थके हुए लग रहे हैं Anybody else? कोई अन्य We're all good? Everyone's good? ठीक है सब ठीक है Anything? कुछ No? कुछ नहीं All right? ठीक है Yeah. And then you got Deva as your husband, और फिर आपको देवा पति के रूप में मिले हैं right? So you got another simple person, आपको और एक सरल व्यक्ति मिला है right? No baggage, no luggage, बस कोई बैग कोई right? बोझ So नहीं you're basically living your life just traveling like around with like, you know, these bag ladies and bag men, like you're just driving around, you know, with all this luggage, you know? वो जब उठाने वाले जो स्त्री पुरुष जो होते हैं घूम रहे होते हैं उनके तरह ये दोनों घूम रहे हैं Sometimes you see in New York, you know, कभी कभी आपको they're pushing the carriages, right? They get some books and they get some pots and pans and वो कुछ जो है सामान पर धक्का दे रहे होते हैं कुछ किताबें होती है कुछ बर्तन रखे होते हैं कुछ उसमें टेंट होते हैं कुछ अखबार रखे होते हैं उन्होंने they're all set.
So you guys are just going as like a team. टीम की तरफ बढ़ रहे हैं. They're just going up the sidewalk. They're taking both sides of the sidewalk, pushing the रास्ते के दो carriages. तरफ है, अपने जो है बोझ को ठेलते हुए लेकर जा रहे हैं. Simple living, high thinking. सरल जीवन, ऊंचा विचार. I don't know why it's not simple. पता नहीं इतना सरल क्यों नहीं है. I'm so mean, aren't I? मैं बहुत Please excuse me. मुझे क्षमा But कीजिए. that's just what I see, you know. लेकिन यही मैं देख पा रहा हूँ. I remember one time one devotee was coming, he was a PhD scholar. मुझे याद है एक बार एक व्यक्ति आता था, वो उसने PhD की डिग्री He was पाई. so puffed up guy. वो you इतना know. अहंकारी व्यक्ति था. And every time he would talk, I would just see like this bag of manure, like on his head, you know. जब भी वो बात करता था, ऐसा लगता था उसके सर में कोई गोबर का It थैला was है. unbelievable. It was just like a bag of. ये बात अविश्वसनीय बात है. ऐसा लगता था कि पूरे And then गोबर का बैग ही है. one day I couldn't help myself. I said, you know, please excuse me, but every time I look at you, I just see this bag of manure. Like, और मैंने उनको कहा, मैं एक दिन अपने आप को रोक नहीं पाया. मैंने कहा, जब भी मैं आपकी तरफ देखता हूँ, ऐसा लगता है आपके कंधे के ऊपर एक गोबर का थैला है. it was like too much. You know? उसको कुछ ज्यादा ही लगा ये. And then I said, I'm just joking. with मैंने कहा, मैं you. बस मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ. Not really. असल में मजाक नहीं कर Because रहा. you're just carrying just a useless, you know, useless stuff. क्योंकि वो फालतू चीजें हैं, You लेकर gotta घूम रहा get है. rid of it. उससे मुक्ति पानी चाहिए उनको. What should like to? पीछे ध्यान रखिएगा. So, that's stuff to speak now after that, right? Everyone just sees you going up the street in New York City, you know, न्यूयॉर्क के शहर pushing के a carriage, some रास्ते lady just अपना like सामान ठेलते हुए लेके जा रहे हैं. dragging behind, you know, एक महिला जो with पीछे her own carriage, पीछे खींचते हुए आ रही है अपना बोझ लेकर. and a little dog in the carriage, you know, और एक छोटा सा कुत्ता भी with रखा a है. mask on. और उस तरह का मास्क भी लगा रखा है. I just see this family going up the street, you know. मुझे ऐसा परिवार लगता है कि देखते हैं. What are you gonna call your dog? Raghu? कुत्ते का क्या नाम रखेंगे आप? रघु. That's not nice, you know. ये अच्छी बात नहीं है ना. How about Bob? कैसा रहेगा बॉब? Back to Bob. बॉब. Is that what you want for your future? क्या आप अपने भविष्य के लिए ये चाहते हैं? You ready for that one? आप उसके लिए तैयार हैं? No? नहीं. Are you sure? कि आप लोग Be careful. सावधान हो Be जाइए. careful. सावधान हो जाइए. So what happened? क्या हुआ? Hare Krishna should have been He's trying to purify the atmosphere, you know? ये परिवेश को थोड़ा शुद्ध करने का प्रयास कर Just रहे get rid of all of this stuff, you know? Let's हैं. get बातों back, को थोड़ा हटाते हैं. चलिए let's get वापस हम back to आते the हैं. basics here, you चलिए know? वापस हम मूल चीजों पे आते हैं. So, all right, Hare Krishna. So what happens now? तो अब क्या? So when you say that Krishna will dictate to you, or What? when you say that Krishna will order and dictate to you that this is your guru, Prabhupada said. Why are you saying I'm saying? तो प्रभु कह रहे हैं कि आपने कहा कि कृष्ण आपको बताएंगे, लेकिन गुरुदेव बता रहे हैं प्रभुपाद ने ऐसा कहा है और कृष्ण ने ऐसा कहा है. Repeatedly, he said, if you're sincere and serious and you want to surrender to Krishna, Krishna will know it. प्रभुपाद ने कहा है अगर आप कृष्ण को शरणागत करने के लिए गंभीर He'll हैं, make कृष्ण arrangements. इस बात को जानेंगे, वो ऐसी व्यवस्था करेंगे You आपके to लिए meet his own man, जहाँ आप उनके खुद के व्यक्ति and से मिल he'll पाएंगे dictate to you और फिर वो आपको that बताएंगे you should accept this person as your guru. कि आपको इन व्यक्ति को गुरु के रूप That's में what स्वीकार Prabhupada करना चाहिए. says. ये कृष्ण प्रभुपाद ने कहा है बार बार. So is that how you got your guru? क्या इस तरीके से आपको आपके गुरु मिले हैं? Did Super Soul Paramama Chetu Guru dictate to you? कि परमात्मा You should approach and accept this person as your guru. Was that from Krishna? क्या Paramatma Chetu Guru? आपको बताया है कि आपको इस व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, चैत्य गुरु ने. Is that what happened? क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? well, Not like that. when ऐसा नहीं हुआ. Srila Prabhupada saying dictate, does that mean directly speaking, or What? just through like intelligence, giving intelligence of faith, or is that the directly speaking, like directly, you know, and It's like actually directly? actually dictating, Like practically directly? not like just Like intelligence. really, really, really directly?
Yes. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि क्या Otherwise, if Krishna doesn't directly tell you how you put unflinching faith in that instruction, तो प्रभु पूछ रहे हैं कि कृष्णा सीधे सीधे प्रभु बताते हैं कृष्णा आपको सीधे सीधे बताएंगे असल में तो गुरुदेव ने बताया हाँ जब असल में सीधे सीधे कृष्णा आपको बताएंगे तत्व में असल see, because Krishna has not told us anything, we don't really understand that. क्योंकि कृष्ण ने हमें ये चीजें बताई नहीं हम इस सारी चीजों को समझते नहीं So just some different spiritual thoughts coming. So I think Krishna is telling me like this. तो कुछ आध्यात्मिक विचार हमारे मन में आते हैं तो हम सोचते हैं अवश्य कृष्णा ये मन में मेरे But विचार आ if रहे it हैं really came from Krishna, then why are we accepting and rejecting it? लेकिन अगर ये असल में कृष्णा से आ रहा है क्यों हम कभी इसको स्वीकार कर रहे हैं और कभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं That means mental plus. इसका मतलब हम मानसिक स्तर पे हैं So if you're accepting and rejecting, that could not have come from Krishna. तो अगर आप स्वीकार कर रहे हैं और कभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब अवश्य वो कृष्णा से नहीं आ रहा है And because Maya is putting so many thoughts and ideas in our mind through this mental speculation, even it looks spiritual. और माया हमारे मन में बहुत सारे विचार बहुत सारे योजनाएं डाल रही है जो हमारे मनोधर्म है जो हो सकता है देखने में आध्यात्मिक भी लगे Right? 1 minute it's like absolutely that came from Krishna. एक मिनट ऐसा लग सकता है अवश्य ये विचार कृष्ण से आ रहे हैं And then the next minute it's like, I don't know if that came from Krishna. लेकिन दूसरे मिनट हम ये सोचेंगे कि अवश्य So मुझे लगता है immediately कि कृष्ण से accepting, नहीं आ back रहा। on rejecting, rejecting platform. तुरंत ही हम कभी स्वीकार करेंगे कभी अस्वीकार करने का स्तर That's the sign तो ये संकेत है that Krishna has not convinced you. कृष्ण ने अभी तक आपको आश्वस्त नहीं किया When Krishna convinced you, means there's no more mental speculation about the point. जब कृष्ण ने एक बार आपको आश्वस्त कर दिया तो दोबारा आप मनोधर्म नहीं करेंगे उस बात के ऊपर But because Krishna's never convinced us, we don't understand what that means. लेकिन कृष्ण ने कभी हमें आश्वस्त नहीं किया तो हमें इसका मतलब ही नहीं समझ में आता So we're thinking that it's similar to things that we thought are spiritual, but then we're accepting and rejecting. We think that's all we know, that's our only experience. क्योंकि हमारे जीवन में केवल ऐसा ही अनुभव रहा है कि हमारे कुछ विचार आए हमारे कुछ मन में कुछ योजनाएं आई और वही ऐसे ही होता है आध्यात्मिक परिवेश में So we're thinking it must come something like that. तो हम सोचते हैं कि अवश्य ये ऐसा ही किसी तरह का चीज होगा But if you say, Krishna, I just need to be decisively, specifically, exactly instructed from you, which is beyond accepting and rejecting. तो अगर आप कृष्ण से प्रार्थना करेंगे मुझे कोई ऐसा उत्तर चाहिए विशेष रूप से निश्चित रूप से और जिसको मैं कभी भी अस्वीकार नहीं कर पाऊँ Let me ask you a question. चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ If Krishna wants to convince you on something, कृष्ण आपको किसी बात को लेकर आश्वस्त करना can चाहते he हैं not absolutely convince you क्या वो आपको निश्चित रूप से that आश्वस्त is नहीं कर पाएंगे beyond any type of accepting or rejecting platform? जो बिना किसी स्वीकार या कभी स्वीकार ना करने के स्तर से ऊपर होगा So why has he not convinced you? क्यों कृष्ण ने आपको आश्वस्त नहीं किया है Because we're not asking. क्योंकि हम पूछ नहीं रहे हैं कृष्ण से Many times people, they tell me the whole plan, what they're trying to figure out, and this and that. After an hour, I say, can I ask one question? Yeah. Did you ask Krishna? तो कई बार वो घंटों घंटों प्रयास कर रहे होते हैं जानने के लिए समझने के लिए कृष्ण से क्या चाहते हैं लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ क्या आप कृष्ण को पूछ रहे हैं Did कि you कृष्ण beg क्या and चाहते cry, हैं? Krishna, tell me decisively, specifically, what do you want me to do? तो क्या कृष्ण से आपने भीख मांगी आप मुझे निश्चित रूप से विशेष करके बताइए कि कृष्ण आप मुझसे क्या चाहते हैं And they always say, well, not really. फिर वो कहते हैं मैंने Well, आपको that's why पसंद you नहीं don't किया। absolutely know. तो इसीलिए आप असल That's में why जानते हैं। Krishna's not absolutely convinced you. इसीलिए कृष्ण ने आपको असल में That's why आश्वस्त you're नहीं not किया है। free from mental इसलिए आप speculation. मनोधर्म से अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं That's why you're on accepting, rejecting platform. इसलिए आप कभी स्वीकार कर रहे हैं कभी अस्वीकार कर That's रहे why there's no peace. हैं इसलिए कोई शांति नहीं है Because you're accepting, you feel peaceful, and the next minute you're rejecting and you're disturbed. क्योंकि जब आप स्वीकार कर रहे हैं तो आप शांत महसूस कर रहे हैं और जब आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आप परेशान हो रहे हैं शांत So महसूस when नहीं कर रहे हैं। Krishna convinces तो you, जब कृष्ण आपको आश्वस्त करेंगे there's no longer any mental तो speculation. कोई और मनोधर्म करना बाकी नहीं रह जाएगा There's no accepting or rejecting. You know absolutely that's what Krishna wants you to do. ऐसा नहीं हो कभी स्वीकार करेंगे कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे आप जान जाएंगे कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं असल How में many times I ask devotees, what you think you're doing, is it crystal clear? Is it 108% Krishna wants you to do like that? कई बार मैं भक्तों से सवाल पूछता हूँ जो आप करने की योजना बना रहे हैं क्या आप शीशे की तरह साफ है आपके लिए 108% आप सुनिश्चित हैं कि And they're कृष्ण like, आपसे चाहते finally हैं they're like, I don't know. और अंत में कहते हैं असल में मुझे पता नहीं है So if you don't know, that means Krishna has not told you. अगर आप आश्वस्त नहीं है इसका आप And नहीं why जानते hasn't he कृष्ण ने आपको told बताया है कृष्ण ने you? आपको Because क्यों you're नहीं too बताया busy trying to figure it out yourself. क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं खुद से And बताने you're में not trusting Him. और आप उन पे And विश्वास you're नहीं not कर रहे asking हैं। आप उनसे Him. पूछ And नहीं you रहे don't know how to hear from और Him. आपको पता नहीं उनसे सुनना कैसे है Therefore you're going on in your own materialistic way, under modes of nature, imperfect senses, mind and intelligence. तो इसलिए आप अपने भौतिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अपूर्ण मन बुद्धि इंद्रियों के साथ
You need tattvadarshi. आपको तत्वदर्शी की जरूरत है, You need pure via medium of Krishna. आपको कृष्ण के शुद्ध माध्यम की जरूरत है। If you don't want to know 100% what Krishna wants you to do, why does Krishna have to send you a pure via medium? To tell you what? अगर आप 100% ये नहीं जानना चाहते कि कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं, क्यों कृष्ण आपको एक शुद्ध माध्यम भेजेंगे, क्या बताने के लिए आपको भेजेंगे? You know, Krishna is telling me to tell you this, and you're like, so what? कहेंगे कृष्ण I'm not चाहते हैं कि asking मैं आपको ये you बात to बताऊं, do it. कहेंगे I have my own idea, my own plan. मैं तो ना पूछ रहा हूँ ना मैं करना चाहता हूँ, मेरे पास खुद So की you योजना don't है, need खुद का a विचार guru. है। इसका मतलब वो गुरु की So जरूरत why नहीं है। Krishna will send you a pure via medium? तो क्यों कृष्ण आपको एक शुद्ध माध्यम भेजेंगे? Then who dictated to you to accept that person as your guru? और कौन आपको दिशा दिखाएगा, बताएगा उस व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए? You're 100% sure that was Krishna dictating to tell you to accept that person as your guru? क्या आप 100% सुनिश्चित हैं कृष्ण ने आपको सीधे सीधे बताया कि उस व्यक्ति को आपको गुरु के रूप में Because स्वीकार that's how करना Prabhupada चाहिए? says that one will know. क्योंकि प्रभुपाद ने बताया यही तरीका है जिससे आपको जान So सकते you're हैं। saying you're a follower of Srila तो Prabhupada. आप कह रहे हैं आप श्री प्रभुपाद के अनुयायी हैं। So did your guru give you that faith and intelligence of what is the process? तो क्या आपके गुरु ने आपको ये बुद्धि और श्रद्धा दी कि ये And प्रक्रिया how है? you will know? और कैसे आपको ये बात समझ आएगी? Why didn't he tell you? क्यों उन्होंने आपको तो बताया नहीं अभी तक? Because he doesn't know. क्योंकि उनको पता नहीं। Why doesn't he know? और उनको पता Because he क्यों नहीं? never heard it. क्योंकि उन्होंने खुद कभी सुना नहीं। Why didn't he not hear it? और क्यों उन्होंने कभी सुना Because नहीं? Krishna didn't send him a pure via medium. क्योंकि कृष्ण ने इनको शुद्ध माध्यम भेजा That नहीं। means he's disconnected from Krishna and Krishna's parampara. इसका मतलब कृष्ण परंपरा से उनका So all he's संपर्क टूटा doing हुआ है। is giving you a more sophisticated mental speculation based on his experience and position. तो वो अपने अनुभव, अपने स्थान पद के आधार पे खुद का मनोधर्म आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। So you just upped your game by mental speculation. तो आप इस खेल रहे हैं मनोधर्म से। Well, I found a really good mental speculator. I trust his mental speculation more than my own. मुझे एक बहुत अच्छा मनोधर्म मिला है। मुझे उनका मनोधर्म मेरे मनोधर्म से ज्यादा अच्छा लगता है। Okay, see how well that works out for you. ठीक है, करके देखिए कितना अच्छा काम It's करेगा। still mental speculation. है फिर It's भी वो still coming मनोधर्म from है। Maya. अभी भी It's माया still से not है। absolute. अभी भी वो It's परम still सत्य है। guaranteed to fail. अभी भी निश्चित है Now वो it's सफल a होगा। matter of how soon do you realize that. अब यही बात यही है कि कितना सुना And when you're done with all of समझ that, पाएंगे, और जब आप ये पूरी तरह समझ जाएंगे then you'll surrender to Krishna. तब आप कृष्ण को शरणागत करेंगे। Then you'll be convinced. तब आप Then you'll आश्वस्त हो convince जाएंगे। Krishna. तब आप कृष्ण को आश्वस्त कर देंगे, I can't do it anymore. मैं और ये नहीं कर पाऊंगा। Then Krishna will send you a bona fide guru. तब कृष्ण आपको प्रमाणिक गुरु भेजेंगे। That's the process. ये है प्रक्रिया। So all this other thing is also necessary. तो ये और भी बाकी चीजें ये भी जरूरी है, Because we have to learn all of these hard, difficult lessons. क्योंकि हमें ये सारे कठिन और And we have to शिक्षा pass लेनी all है, of those tests. और हमें ये सारे परीक्षाओं को पास करना था। And that's the test of how serious we are about wanting to understand the absolute truth and what are we willing to do to execute the will and the desire of the Lord. और ये हमारी परीक्षा है, हम कितने गंभीर हैं कृष्ण के बारे में समझने के लिए और उनके निर्देशों को पूरा करने के लिए हम कितने एकनिष्ठ और गंभीर हैं, हमारी ये परीक्षा है। That's your test. और ये Everyone has a परीक्षा है। test. सभी की अपनी एक परीक्षा है। No one can pass the test for you. कोई और आपके लिए आपकी परीक्षा पास नहीं करेगा। You have to go through it. All you can do is give good support, good information, good faith, understand what's happening, how to deal with it, but it's still up to you. सब आप चीज जमा कर सकते हैं, अच्छी जानकारी, अच्छा समर्थन और ये प्रक्रिया को समझने के लिए कैसे आप इसे Everyone गुजर still पाएंगे। has to apply it themselves. लेकिन आपको गुजरना स्वयं होगा, स्वयं आपको इसमें लगाना होगा खुद। Makes sense? इसका मतलब बनता है मेरी बातों का। All right, I think that's enough. I don't want to kill the patient, पर्याप्त हो if you गया, know what I मैं mean. मरीजों को मारना नहीं चाहता। I hope that's helpful for you. मुझे उम्मीद है आप लोगों की कुछ मदद I करेगी। made all the mistakes, मैंने बहुत सारी गलतियां की all right, and I suffered because of it. और मैंने उन गलतियों का बहुत दुख भोगा। So I had to also learn the hard way तो मैंने भी बहुत ही कठिनाई से सीखा of what works and what does not work. क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता। And I'm just trying to share some, of my experience, my faith, my understanding that if to make your life a little bit easier, that's मैं all. अपना अनुभव, अपना साक्षात्कार
अपनी ये जानकारी आपको देना चाहता हूँ जो आपको ताकि आप लोगों की मदद हो I'm सके। not forcing anybody to do anything. मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा कुछ भी Spiritual करने के life लिए। is voluntary आध्यात्मिक जीवन स्वेच्छा से किया जाता and है spontaneous. और अपने And आप it's ही। based on Krishna giving you intelligence and faith, how and where to accept good advice and good association. और ये कृष्णा बुद्धि और श्रद्धा देते हैं हमें कहाँ से और किससे हमें सही सलाह लेनी है। Now we have to just be smart enough and fortunate enough to recognize that and take advantage of the opportunity. तो हमें अब इतना भाग्यवान होना होगा और इतना बुद्धिमान होना होगा कि हम उस व्यवस्था को समझ पाएं और उसका लाभ उठा पाएं। That's our responsibility. अब ये हमारी That's our जिम्मेदारी test है also. और यही हमारी परीक्षा भी है Whether we want Krishna to help us or not. कि हम चाहते हैं कृष्ण हमारी मदद करे या नहीं। So thank you very much, everybody. धन्यवाद सभी का। Shri Shri Gaura Nitai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gaura Govinda Swami, Srila Gurudev ki, Samaveda Bhaktivinda ki, Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Thank you. Hari-katha Swami Shri Gurudev ki Jai. jai. Little better? What are you looking for? Cookie? Whatever inspires you. कि हम लोगों को प्रेरित करे। Krishna comes in all different forms. कृष्ण अलग-अलग रूपों में आता है। That's why it's called mercy, right? इसलिए इसको कृपा कहा जाता है। Prasad. प्रसाद।